so it is centralized. Additionally, it is unlimited. That is, the government can print as much as it wants to. Then, in 2009, Satoshi Nakamoto printed a document online titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. This white paper or concept note proposed a decentralized currency called Bitcoin. As we had discussed during our previous sessions, Bitcoin is a transparent, decentralized ledger. Anybody can look at the ledger and see all the transactions that are there on the blockchain. But the names of the transacting parties are not available. Only their public key is viewable. That makes this ledger pseudonymous. Further, there is no third-party interference, as it is not issued or controlled by any central bank or government. Cryptocurrencies are not issued by any one central bank, but are mined on a blockchain network. So, cryptocurrencies are global or borderless in nature. They can be used and held as digital asset across the globe. The only way Bitcoin can be generated is through mining. When a miner solves a mathematical problem, he gets rewarded with new Bitcoins. Blockchain is the underlying technology on which cryptocurrencies are built. Blockchain facilitates the creation and transfer of cryptocurrencies. It is not synonymous with cryptocurrencies. So, Bitcoin was released as the first cryptocurrency, and then came the other coins, altcoins or alternative coins, that is, all the coins other than Bitcoin. The word altcoin is a combination of alternative and coin to form altcoin. It actually refers to a group of cryptocurrencies, ultimately all the cryptocurrencies other than Bitcoin. In other words, an altcoin is an alternative digital currency to Bitcoin. There are over 16,000 cryptocurrencies as of January 2022. Some of the biggest names and most popular altcoins are Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Polkadot, Stellar, Dogecoin, Chainlink, and Binance Coin. Let us discuss the differences between cryptocurrency coins and digital tokens. Cryptocurrency coins are based on their own native blockchain and derive their value based on the inherent demand and supply from market participants. The value of crypto coins is primarily dependent on the structure of the blockchain technology, including the consensus algorithm protocol and mechanism for mining cryptocurrency coins. The blockchain protocol is based on the software architecture, and this largely determines the crypto coin prices. Coins are standardized in terms of their characteristics that are based on their host native blockchain technology. On the other hand, digital tokens are representation of an asset or a service. Tokens can be contrasted to coins in that they are created on an already established blockchain, such as Ethereum, to represent ownership of physical or digital assets, such as fractional ownership of a company, infrastructure, real estate, utility, or even a photograph or an image. The ownership of tokens is recorded in the blockchain, and such tokens can be traded on cryptocurrency exchanges. Tokens can be customized based on smart contracts and can be further developed for application across a variety of business requirements based on dApps, DeFi, DAO, and potentially using Web3 and Metaverse. The key benefits of tokenization of assets include creating liquidity for illiquid physical assets, tracking the ownership of assets using reliable blockchain technology that is data immutable, and allowing for smaller units of the assets for participation by a larger investor base. Stablecoins. Stablecoins are cryptocurrencies that are pegged to the price of another asset in order to minimize volatility while maintaining the benefits of a cryptocurrency. Stablecoins are digital currencies that are backed by assets such as fiat currency, other cryptocurrencies, or gold. Certain stablecoins also use a computer algorithm to keep
their value comparatively stable. They refer to a class of cryptocurrencies whose purpose is to maintain a certain value, and they are typically pegged to the US dollar. These digital currencies have much lower volatility than other types of cryptocurrencies. Trading in stablecoins may not be like trading in other crypto coins. They are created to stay put in terms of value, which means that while they will not fall in value, they will not rise either. The most well-known stablecoin is Tether, whose price is tied to the US dollar. With Tether, users can transact or hold their assets in a cryptocurrency that has its value tied to the stable asset, that is, the US dollar. This stablecoin is used to park funds temporarily instead of converting the cryptocurrency investments back into fiat currency. By now, we have already understood that cryptocurrencies have different purposes. Utility tokens are based on expectations of obtaining some service or promotional offer. They offer a right to a service or product. A prime example of a utility token is a gift card or a public transportation ticket. Another example is a Uber token that is issued through an initial coin offering or ICO. Consider a hypothetical scenario. For example, a user buys Uber tokens using Bitcoins or Ether and subsequently uses them for ride sharing. He or she can even sell them at a later date based on the prevailing market price on crypto exchanges. Utility tokens are constructed using the smart contracts to represent the value assigned to them based on specific conditions. Some of the most popular utility tokens include Ether, which pays for computational power on the Ethereum blockchain; Ripple, that facilitates the transfer of any digital asset on the Ripple blockchain; EOS, similar to Ether, EOS is used to perform tasks on a decentralized network. Please complete this module by viewing the other sessions. Now let's find out what makes cryptocurrencies attractive. Cryptocurrencies have very low transaction cost. While transferring funds from your bank, you always pay the bank some transaction fee. Then again, there is the trust element. We trust banks to conduct our business in full confidence. Yet, there are numerous instances of banks going kaput and long lines of aggrieved customers standing on the gates desperate to withdraw their own money. We also trust them with our sensitive data, although we know they use it internally for cross-selling. Cryptocurrencies are accessible 24/7 on all 365 calendar days. Banks have bank holidays that they follow, and you have to play by their rules and wait for them to open to carry out your transaction. In crypto, there is no limit to withdrawals, and also it is open to all. Another important issue to factor in is the speed of cross-border transactions. Banks take days, when in the crypto universe, it is in an instant. When you send money to someone, it goes directly to them, eliminating a middleman like a bank or a credit card company. Moreover, this transaction is broadcast to the entire network, keeping the names of the party anonymous and recorded in the distributed public ledger permanently. Now let's find out, how does a crypto transaction work? The core concept of cryptocurrencies is same as traditional finance. To give you a context, every bank keeps a ledger of the transactions made by their customers. In crypto, it is just one universal ledger or spreadsheet recording all transactions. Since everybody who is part of the network has a copy of this ledger or spreadsheet, it is decentralized and not held by one bank or entity.
To give an example of how this works, when you buy something for say 1 Bitcoin, the shopkeeper will check if you have 1 Bitcoin on multiple ledgers, on multiple computers, and not just one bank. Only when a majority of computers or nodes in the blockchain network gives the go-ahead, your transaction will get recorded and updated on every ledger. So, tampering with a record or a block of data is not possible, as you have to do it on all the nodes on the network. Blockchain just organizes the ledger in a specific way using cryptography-based consensus algorithms. This is why people are excited about this new technology. People have FUD, which is fear, uncertainty, and doubt. And this is because of the volatility associated with cryptocurrency. Because they are a new asset class, they are volatile. So, the returns are good when the coin is mooning, or they could plunge as much as 80% in a day. They are digital currency, and so nobody knows its true worth. Cryptocurrencies are not yet widely accepted as payment in most places. People are raising environmental concerns that they use a lot of electricity. The whole reason that this system is so secure is that it needs miners to complete mathematical problems, and transactions have been verified by many computers before being accepted. All this computing power and requirement eats up a lot of electricity. But at the same time, when you add up all the electricity and paper the banking system needs, it really is much more. Another misconception related to cryptocurrency is that it is a hub for criminal transactions. But according to market reports, only 0.34% of the transactions are criminal, while 5% traditional finance transactions are criminal. So, figures speak for themselves. Stay tuned for the next session to continue your learning. Now, to end the session, let's have a look and run through some of the most notable milestones of the journey of cryptocurrencies and how they evolved over the years. In 2008, Satoshi Nakamoto, the mysterious designer of Bitcoin, published a white paper titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, based on the concept developed by Chinese author and computer engineer Wei Dai. In 1998, the paper outlined the fundamentals of blockchain and Bitcoin. In 2009, first Bitcoin transaction took place on the 12th of January when Nakamoto sent 10 Bitcoins to computer programmer Hal Finney. In 2010, Bitcoin is hacked for the first time on 15th of August, exposing vulnerabilities in the system. The same year, Bitcoin is attached to a monetary value for the first time when a user trades 10,000 coins for 2 pizzas. In 2011, rival cryptocurrencies Litecoin, Namecoin, and Swiftcoin emerge. In 2012, cryptocurrency exchange Coinbase launches services after being founded by former Airbnb engineer Brian Armstrong and former Goldman Sachs trader Fred Ehrsam. In 2013, various countries attempt to work out ways to deal with cryptocurrencies. Germany did not accept cryptos as official currency, but gave it a status of unit of account. Thailand banned Bitcoin, while China stopped financial institutions from using Bitcoins. Meanwhile, the first Bitcoin ATM was launched in Canada. In 2014, Japan-based cryptocurrency trading exchange Mt. Gox filed for bankruptcy. In the US, Microsoft permitted customers to buy games with digital currency.
In 2015, Ethereum, the second largest currency by market capitalization in the crypto industry, emerged. European Bitcoin exchange Bitstamp gets hacked but resumed trading a few days later. By the end of 2016, 900 Bitcoin ATMs emerge. Uber started accepting payments in Bitcoin in Argentina. Swiss National Railway also starts accepting the currency. Smart contracts, a collection of code and data stored on the Ethereum blockchain, was developed. In 2017, Japan legalized Bitcoin, while Norway's Skandiabanken integrated Bitcoin accounts and recognized Bitcoin as an investment asset. In 2018, European government worked on cryptocurrency regulation. In 2021, El Salvador became the first country to accept Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Well, that was all about cryptocurrencies in details. We from Crypto University are extremely excited to present to you this curriculum. For more, keep watching all our content. Thank you very much. Hello everyone, today we are going to discuss cryptocurrency coins and digital tokens. Cryptocurrency has been around since 2008, but has only recently boomed. This new world of digital money is of intrigue to many people. Cryptocurrencies have been revolutionizing international payment systems and the global banking industry. However, most participants are scared to enter the rabbit hole of endless complexities. If you wish to be active in the crypto market, or probably are starting to think of trading in this segment, then you should know the basics of cryptocurrencies. You need to learn before earn. The more you learn about cryptocurrencies and its elements, the more informed decisions you can make. At the end of this session, you will have better understanding about the concepts and the foundation of cryptocurrency. So what are cryptocurrencies? Cryptocurrencies are digital or virtual currency that run on a software technology called blockchain. They do not require a central authority like a central bank or government and are immune to counterfeit, as all transactions are recorded on the blockchain ledger that many people have a copy of. Bitcoin reigns supreme and dominates the crypto market. Although it is only one of the many cryptocurrencies in the market, it currently accounts for a little over 40% of the market capitalization. But as late as 2 years ago, it accounted for over 50%. Now, together with Ethereum, the second biggest coin in terms of market capitalization, they account for over 60% of the market cap. So, if you know about these two coins alone, you have covered more than half of the market. Now let's start from the beginning. Money, gold, property are important assets only because they have value and you can trade them. First, it was gold that was valued. Then we moved to paper money, which is backed by the government's promise to stand
as an assurer. It works because people trust the government. The government says that the Indian rupee has value, so it does become a fiat currency or a legal tender. The government or the central bank issues this currency, and it is therefore centered around that institution, so it is centralized. Additionally, it is unlimited. That is, the government can print as much as it wants to. Then, in 2009, Satoshi Nakamoto printed a document online titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. This white paper or concept note proposed a decentralized currency called Bitcoin. As we had discussed during our previous sessions, Bitcoin is a transparent, decentralized ledger. Anybody can look at the ledger and see all the transactions that are there on the blockchain. But the names of the transacting parties are not available. Only their public key is viewable. That makes this ledger pseudonymous. Further, there is no third-party interference, as it is not issued or controlled by any central bank or government. Cryptocurrencies are not issued by any one central bank, but are mined on a blockchain network. So, cryptocurrencies are global or borderless in nature. They can be used and held as digital asset across the globe. The only way Bitcoin can be generated is through mining. When a miner solves a mathematical problem, he gets rewarded with new Bitcoins. Blockchain is the underlying technology on which cryptocurrencies are built. Blockchain facilitates the creation and transfer of cryptocurrencies. It is not synonymous with cryptocurrencies. So, Bitcoin was released as the first cryptocurrency, and then came the other coins, altcoins or alternative coins, that is, all the coins other than Bitcoin. The word altcoin is a combination of alternative and coin to form altcoin. It actually refers to a group of cryptocurrencies, ultimately all the cryptocurrencies other than Bitcoin. In other words, an altcoin is an alternative digital currency to Bitcoin. There are over 16,000 cryptocurrencies as of January 2022. Some of the biggest names and most popular altcoins are Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Polkadot, Stellar, Dogecoin, Chainlink, and Binance Coin. Let us discuss the differences between cryptocurrency coins and digital tokens. Cryptocurrency coins are based on their own native blockchain and derive their value based on the inherent demand and supply from market participants. The value of crypto coins is primarily dependent on the structure of the blockchain technology, including the consensus algorithm protocol and mechanism for mining cryptocurrency coins. The blockchain protocol is based on the software architecture, and this largely determines the crypto coin prices. Coins are standardized in terms of their characteristics that are based on their host native blockchain technology. On the other hand, digital tokens are representation of an asset or a service. Tokens can be contrasted to coins in that they are created on an already established blockchain, such as Ethereum, to represent ownership of physical or digital assets, such as fractional ownership of a company, infrastructure, real estate, utility, or even a photograph or an image. The ownership of tokens is recorded in the blockchain, and such tokens can be traded on cryptocurrency exchanges. Tokens can be customized based on smart contracts and can be further developed for application across a variety of business requirements based on dApps, DeFi, DAO, and potentially using Web3 and Metaverse. The key benefits of tokenization of assets include creating liquidity for illiquid physical assets, tracking the ownership of assets using reliable blockchain technology that is data immutable, and allowing for smaller units of the assets for participation by a larger investor base. Stablecoins. Stablecoins are cryptocurrencies that are pegged to the price of another asset,
in order to minimize volatility while maintaining the benefits of a cryptocurrency. Stablecoins are digital currencies that are backed by assets such as fiat currency, other cryptocurrencies, or gold. Certain stablecoins also use a computer algorithm to keep their value comparatively stable. They refer to a class of cryptocurrencies whose purpose is to maintain a certain value, and they are typically pegged to the US dollar. These digital currencies have much lower volatility than other types of cryptocurrencies. Trading in stablecoins may not be like trading in other crypto coins. They are created to stay put in terms of value, which means that while they will not fall in value, they will not rise either. The most well-known stablecoin is Tether, whose price is tied to the US dollar. With Tether, users can transact or hold their assets in a cryptocurrency that has its value tied to the stable asset, that is, the US dollar. This stablecoin is used to park funds temporarily instead of converting the cryptocurrency investments back into fiat currency. By now, we have already understood that cryptocurrencies have different purposes. Utility tokens are based on expectations of obtaining some service or promotional offer. They offer a right to a service or product. A prime example of a utility token is a gift card or a public transportation ticket. Another example is a Uber token that is issued through an initial coin offering or ICO. Consider a hypothetical scenario. For example, a user buys Uber tokens using Bitcoins or Ether and subsequently uses them for ride sharing. He or she can even sell them at a later date based on the prevailing market price on crypto exchanges. Utility tokens are constructed using the smart contracts to represent the value assigned to them based on specific conditions. Some of the most popular utility tokens include Ether, which pays for computational power on the Ethereum blockchain; Ripple, that facilitates the transfer of any digital asset on the Ripple blockchain; EOS, similar to Ether, EOS is used to perform tasks on a decentralized network. Please complete this module by viewing the other sessions. NFT के क्रेज को एक नए लेवल पर ले जाने वाले सेलेब्स टिम्बालैंड, जस्टिन बीबर, रीस विदरस्पून, हेडी क्लम और लिटिल बेबी के अलावा और भी सेलेब्स हैं जो NFT का फीवर चढ़ा रहे हैं। हेलो, मैं हूँ रुचि शर्मा और हाजिर हूँ आपके लिए पॉपुलर सेलेब्स ओन NFT से जुड़ी मजेदार खबरें लेकर। तो चलिए बताते हैं आपको कौन से सितारे फ्लॉन्ट कर रहे हैं कौन से NFT, किस NFT के ट्रेंड को हवा दे रहे हैं कौन से स्टार्स और NFT स्पेस के कौन से हैं बड़े बड़े प्लेयर्स। साइलेंस, वुल्व्स, फ्रेंड्स, हैप्पियर और अलोन जैसे सुपरहिट सॉन्ग से सभी पॉप म्यूजिक फैंस को क्रेजी करने वाले पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड डीजे मार्शमेलो एक और मोस्ट नोटेड सेलिब्रिटी NFT होल्डर के रूप में सामने आए हैं। 2015 से लेकर अब तक कई हिट सॉन्ग्स देने वाले मार्शमेलो ने YouTube पर बिलियन से ज्यादा व्यूज अपने नाम किए हैं। ऐसे में जब बात NFTs की आती है तो कुछ समय तक सीक्रेट NFT व्हेल बने रहे मार्शमेलो ने हाल ही में अपनी ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर के जरिए दुनिया को बता दिया कि वो मोस्ट डिजायरेबल क्रिप्टो पंक NFT ओन करते हैं। इसके चलते उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। मार्शमेलो का NFT पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है। उनकी किटी में काइजू किंग NFT है जो उन्होंने अक्टूबर 2021 में खरीदी थी, जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा लगाई जाती है। मार्शमेलो की ये काइजू किंग NFT रिलीज की गई 3,333 NFTs की कलेक्शन में से एक है, जिसे 5.88 ETH में उन्होंने परचेज किया था। काइजू किंग के अलावा मार्शमेलो के पास बोर्ड एप NFT, क्रिप्टोड्स, विकेड क्रेनियम्स के साथ दूसरे क्रिप्टो पंक्स भी हैं। NFT स्पेस में रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की बात हो रही हो और स्टीव आयोकी का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आयोकी की पॉपुलैरिटी के बारे में सभी जानते हैं।
रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोग्रामर होने के साथ साथ वो डीजे भी हैं। आयोकी अपने एक्सपीरियंशियल लाइव परफॉर्मेंसेस और स्ट्रीमिंग स्पेस स्पॉटिफाई पर 15 मिलियन से ज्यादा मंथली स्ट्रीम्स के लिए जाने जाते हैं। स्टीव ने सबसे पहले 14 दिसंबर 2021 को अपना पहला क्लोन एक्स NFT 13.9 ETH यानी कि $42,500 में हासिल किया था। ये NFT 20,000 क्लोन एक्स NFTs में से एक है और फनी अवतार में है। और इसके साथ ही बाकी सेलेब्स की तरह ही आयोकी अपने कलेक्शन में बोर्ड एप यॉट क्लब, वी फ्रेंड्स और डूडल्स में से मल्टीपल NFTs को होल्ड करते हैं। इस तरह उनके पास टोटल कलेक्शन के रूप में 200 NFTs मौजूद हैं। सेलिब्रिटी NFT ओनर्स और NFT वेल्स की लिस्ट में अनोनिमस NFT वेल प्रांक्सी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रांक्सी की आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि वो हिज हैं या हर, ये तक कोई नहीं जानता। लेकिन बावजूद इसके वो किसी सेलेब से कम नहीं, और उसकी वजह है उनके नाम पर बहुत सी NFT परचेसेस। NFT कम्युनिटीज की माने तो प्रांक्सी के पास पूरे प्लेनेट पर लार्जेस्ट NFT कलेक्शन है। और इस तरह से इस गुमनाम सेलिब्रिटी NFT कलेक्टर के OpenSea वॉलेट में करीब 35,000 NFTs हैं। इस साल की शुरुआत में प्रांक्सी ने अपने NFT कलेक्शन के लिए 296.69 ETH के रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट पर डूडल हासिल किया था। ऐसे में करंटली प्रांक्सी की टोटल NFT कलेक्शन में से 71 डूडल्स NFT हैं। इसके अलावा प्रांक्सी के पास दूसरे पॉपुलर कलेक्शन में डिसेंट्रलैंड, क्रिप्टो किटीज, सुपर रेयर और वुमेन राइज भी शामिल है। NFT स्पेस ने इस साल बहुत से न्यूकमर्स का स्वागत किया और उन्हीं में से एक इंडियन एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और टेलीविजन प्रेजेंटर लक्ष्मी मांचू, जो देश के अलावा अमेरिकन टेलीविजन में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। इस साल जनवरी में लक्ष्मी ने अजुकी NFT कलेक्शन के साथ ज्यादा से ज्यादा NFT कलेक्ट करने की रेस में अपनी दावेदारी पेश की है। मांचू ने 3.3 ETH यानी $10,000 में अपनी पहली अजुकी #4272 NFT परचेज की। जहां सभी फिल्मी सेलेब्स अपनी क्रिप्टो परचेसेस की घोषणा के साथ लाइमलाइट बटोर रहे हैं, वहीं यूट्यूबर्स यानी आज के जमाने के डिजिटल इंटरनेट सेलिब्रिटीज भी इस स्पेस में अपना नाम करने में पीछे नहीं है। इन्हीं में से एक बड़ा नाम है लोगन पॉल, जिसके YouTube पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड $3 मिलियन वर्थ NFTs इनके नाम हैं। अपने इस न्यू फाउंड पैशन को फॉलो करते हुए लोगन जल्द ही अपनी खुद की सेलिब्रिटी NFT लाइन रिलीज करने की तैयारी में है। पॉल पोलरॉइड कैमरा से ली गई 99 पिक्चर्स को टोकनाइज करवाएंगे। इतना ही नहीं, पॉल ने लेटेस्ट सेलिब्रिटी NFT परचेज की अनाउंसमेंट करते हुए 90 ETH में वी फ्रेंड्स NFT हासिल की है, जो 3 हॉर्न हार्पिक डूडल है। ऐसे में पॉल, जो OpenSea में कई पॉपुलर NFTs के साथ टोटल 4.8 के NFTs कलेक्शन को होल्ड करते हैं, उनके पास फेमस प्रोजेक्ट्स जैसे CryptoPunks, BAYC, वाओ, मूनकैट्स और 0n14 से जुड़ी NFTs हैं, जो इन्हें इस स्पेस में मौजूद बड़े प्लेयर्स में से एक बनाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी NFTs और क्रिप्टो से जुड़ी खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लाती रहूंगी। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी।
और समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। तो भैया बच्चन साहब की तरह समंदर नहीं तो पुल ही सही। हाय। लेकिन आज जिस पुल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पानी से नहीं बल्कि पैसों से भरा हुआ पुल है, और उस पुल को कहते हैं लिक्विडिटी पुल। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमीर हो या फिर गरीब, सभी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि बिना फाइनेंस के किसी की भी नैया पार नहीं लग सकती। यानी सीधी सी बात यह है कि फाइनेंस की दुनिया लिक्विडिटी पर चलती है, और बिना फंड्स के फाइनेंशियल सिस्टम्स तो ठप पड़ जाएगा। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर ब्लॉकचेन से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंसेस शामिल होते हैं। यानी कि डिफाई भी बिना लिक्विडिटी पूल के नहीं चलता है। डिफाई एक्टिविटी जैसे लेंडिंग, बोरोइंग और टोकन स्वैपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पीसेस ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड्स पर निर्भर करता है। इस तरह से डिफाई प्रोटोकॉल के यूजर्स क्रिप्टो एसेट्स को इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक कर देते हैं, जिन्हें लिक्विडिटी पूल कहा जाता है, ताकि दूसरे यूजर्स उनका इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं लिक्विडिटी पूल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, डिफाई में होने वाली किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्रिप्टो का होना बहुत जरूरी होता है। डिफाई प्रोटोकॉल्स में क्रिप्टो की अनइंटरप्टेड सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट किया जाता है। लिक्विडिटी पूल्स वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें प्लेटफॉर्म के यूजर्स द्वारा सप्लाई किए गए टोकन्स को लॉक किया गया है। लिक्विडिटी पूल्स सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी पूल्स को ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यानी AMMs जैसे दूसरे पीसेस ऑफ कोड के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं लो लिक्विडिटी की वजह से प्रॉब्लम क्यों होती है। सिंपल सा फंडा है ये, तो हम सब जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा तो किसी भी एसेट्स की प्राइस बढ़ेगी। इसी प्रकार से लो लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड में हाई स्लिपेज होता है। लो लिक्विडिटी की वजह से अगर सभी प्रोटोकॉल पर दिए गए किसी भी ट्रेडिंग पेयर जैसे ETS से COMP के लिए रिक्वायर्ड लिक्विडिटी नहीं है, तो यूजर्स उन टोकन्स के साथ फंस जाएंगे जिन्हें वे बेच नहीं सकते। बहुत मायने में ये रग पूल की तरह होते हैं, लेकिन उस समय यूज भी हो सकता है जब मार्केट काफी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आइए जानते हैं डिफाई में कितनी लिक्विडिटी होती है। डिफाई में लिक्विडिटी को आमतौर पर टोटल वैल्यू लॉक के रूप में टर्म किया जाता है, जो ये मेजर करता है कि कितने क्रिप्टो को प्रोटोकॉल में इंट्रस्ट किया गया है। ऐसे में मैट्रिक्स साइट डिफाई लैमा के अनुसार अप्रैल 2022 तक सभी डिफाई में TVL $222 बिलियन थी। अब देखते हैं पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोविजन आकर्षक हो सकता है। वही प्रोटोकॉल्स टोकन रिवॉर्ड्स के जरिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इनकरेज करते हैं। इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बढ़ावा दिया है, जिन्हें यील्ड फार्मिंग कहते हैं, जहां यूजर्स अपने एसेट्स को अलग अलग प्रोटोकॉल्स में मूव करके लिक्विडिटी खत्म होने से पहले यील्ड बेनिफिट गेन करते हैं। ज्यादातर लिक्विडिटी पूल्स LP टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे बाद में पूल से रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक पर लगा सकते हैं। हालांकि जोखिम से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल्स में इम्परमानेंट लॉस का खतरा भी बना रहता है। इनपरमानेंट लॉस यानी कि जब सिग्निफिकेंट प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण लिक्विडिटी पूल में टोकन का रेशो अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ सारा फंड खो सकते हैं। सो इस लिक्विडिटी पूल से निपटने के दौरान इनपरमानेंट लॉस के बारे में जरूर सावधान रहें। चलिए मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स को यूज करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म्स के 3 एग्जांपल्स बताता हूं। इनमें से पहले एक है 1inch। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर है जो मल्टीपल चेन्स में काम करता है। दूसरा है आवे, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। और तीसरा है यूनिस्वैप। ये इथेरियम बेस्ड टोकन्स की स्वैपिंग करने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। लिक्विडिटी पूल्स क्या है, कौन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लो लिक्विडिटी से क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी बातों को एक्सप्लोर करने के बाद आइए चलते हैं अब एक नजर लिक्विडिटी पूल्स के फ्यूचर पे भी डालते हैं।
तो लिक्विडिटी पूल्स एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे में लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करना एक मुश्किल गेम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार कहीं और हाई यील्ड्स का पीछा करते हुए लिक्विडिटी हासिल करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसेन के मुताबिक 42% यील्ड फार्मर्स जो लॉन्च के दिन पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके पूल से एग्जिट ले लेते हैं और कई केसेस में तीसरे दिन तक अप टू 70% ऑफ लिक्विडिटी खत्म हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मर्सिनरी कैपिटल के रूप में जाने जाने वाले ओलंपस डाउ ने प्रोटोकॉल ओन लिक्विडिटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंतर्गत लिक्विडिटी पूल को सेट करने के बजाय प्रोटोकॉल यूजर्स को अपने डिस्काउंटेड प्रोटोकॉल टोकन OHM के बदले में अपने क्रिप्टो को इसकी ट्रेजरी में बेचने देता है। अब यूजर्स हाई यील्ड्स के लिए OHM को स्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस मॉडल में भी सेम प्रॉब्लम्स आई और यूजर्स अपने टोकन्स को तुरंत इनकैश करके बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागे, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल की सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फिडेंस डिमिनिश हो गया। डिफा इकोसिस्टम में लिक्विडिटी पूल के इंपॉर्टेंस को टेरा इकोसिस्टम में हाल के डेवलपमेंट के जरिए समझाया जा सकता है, जहां एंकर प्रोटोकॉल टेरा के हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स ने UST स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करने के लिए होल्डर्स को दी जाने वाली इंटरेस्ट को लगातार कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने प्रोटोकॉल से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट टेरा ब्लॉकचेन बंद होने के रूप में सामने आया। इस तरह से टेरा इकोसिस्टम का क्रैश होना हाल के समय में क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए जब तक डिफाई लिक्विडिटी के ट्रांजैक्शनल नेचर को सॉल्व नहीं करती है, तब तक लिक्विडिटी पूल्स के हॉरिजॉन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त संदीप कसालकर जल्दी मिलूंगा डिफाई और अन्य से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Now let's find out what makes cryptocurrencies attractive. Cryptocurrencies have very low transaction cost. While transferring funds from your bank, you always pay the bank some transaction fee. Then again, there is the trust element. We trust banks to conduct our business in full confidence. Yet, there are numerous instances of banks going kaput and long lines of aggrieved customers standing on the gates desperate to withdraw their own money. We also trust them with our sensitive data, although we know they use it internally for cross-selling. Cryptocurrencies are accessible 24/7 on all 365 calendar days. Banks have bank holidays that they follow, and you have to play by their rules and wait for them to open to carry out your transaction. In crypto, there is no limit to withdrawals, and also it is open to all. Another important issue to factor in is the speed of cross-border transactions. Banks take days, when in the crypto universe, it is in an instant. When you send money to someone, it goes directly to them, eliminating a middleman like a bank or a credit card company. Moreover, this transaction is broadcast to the entire network, keeping the names of the party anonymous and recorded in the distributed public ledger permanently. Now let's find out, how does a crypto transaction work? The core concept of cryptocurrencies is same as traditional finance. To give you a context, every bank keeps a ledger of the transactions made by their customers. In crypto, it is just one universal ledger or spreadsheet recording all transactions. Since everybody who is part of the network has a copy of this ledger or spreadsheet, it is decentralized and not held by one bank or entity. To give an example of how this works, when you buy something for say 1 Bitcoin, the shopkeeper will check
If you have one Bitcoin on multiple ledgers, on multiple computers, and not just one bank. Only when a majority of computers or nodes in the blockchain network gives the go-ahead, your transaction will get recorded and updated on every ledger. So, tampering with a record or a block of data is not possible, as you have to do it on all the nodes on the network. Blockchain just organizes the ledger in a specific way using cryptography-based consensus algorithms. This is why people are excited about this new technology. People have FUD, which is fear, uncertainty, and doubt. And this is because of the volatility associated with cryptocurrency. Because they are a new asset class, they are volatile. So, the returns are good when the coin is mooning, or they could plunge as much as 80% in a day. They are digital currency, and so nobody knows its true worth. Cryptocurrencies are not yet widely accepted as payment in most places. People are raising environmental concerns that they use a lot of electricity. The whole reason that this system is so secure is that it needs miners to complete mathematical problems, and transactions have been verified by many computers before being accepted. All this computing power and requirement eats up a lot of electricity. But at the same time, when you add up all the electricity and paper the banking system needs, it really is much more. Another misconception related to cryptocurrency is that it is a hub for criminal transactions. But according to market reports, only 0.34% of the transactions are criminal, while 5% traditional finance transactions are criminal. So, figures speak for themselves. Stay tuned for the next session to continue your learning. Now, to end the session, let's have a look and run through some of the most notable milestones of the journey of cryptocurrencies and how they evolved over the years. In 2008, Satoshi Nakamoto, the mysterious designer of Bitcoin, published a white paper titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, based on the concept developed by Chinese author and computer engineer Wei Dai. In 1998, the paper outlined the fundamentals of blockchain and Bitcoin. In 2009, first Bitcoin transaction took place on the 12th of January when Nakamoto sent 10 Bitcoins to computer programmer Hal Finney. In 2010, Bitcoin is hacked for the first time on 15th of August, exposing vulnerabilities in the system. The same year, Bitcoin is attached to a monetary value for the first time when a user trades 10,000 coins for 2 pizzas. In 2011, rival cryptocurrencies Litecoin, Namecoin, and Swiftcoin emerge. In 2012, cryptocurrency exchange Coinbase launches services after being founded by former Airbnb engineer Brian Armstrong and former Goldman Sachs trader Fred Ehrsam. In 2013, various countries attempt to work out ways to deal with cryptocurrencies. Germany did not accept cryptos as official currency, but gave it a status of unit of account. Thailand banned Bitcoin, while China stopped financial institutions from using Bitcoins. Meanwhile, the first Bitcoin ATM was launched in Canada. In 2014, Japan-based cryptocurrency trading exchange Mt. Gox filed for bankruptcy. In the US, Microsoft permitted customers to buy games with digital currency. In 2015, Ethereum, the second largest currency by market capitalization in the crypto industry, emerged. European Bitcoin exchange Bitstamp
gets hacked but resumed trading a few days later. By the end of 2016, 900 Bitcoin ATMs emerge. Uber started accepting payments in Bitcoin in Argentina. Swiss National Railway also starts accepting the currency. Smart contracts, a collection of code and data stored on the Ethereum blockchain, was developed. In 2017, Japan legalized Bitcoin, while Norway's Skandiabanken integrated Bitcoin accounts and recognized Bitcoin as an investment asset. In 2018, European government worked on cryptocurrency regulation. In 2021, El Salvador became the first country to accept Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Well, that was all about cryptocurrencies in details. We from Crypto University are extremely excited to present to you this curriculum. For more, keep watching all our content. Thank you very much. एयर ड्रॉप, ये शब्द आपने क्रिप्टो की दुनिया में कई बार सुना होगा। रिसेंटली बोर्ड एप यार्ड क्लब ने अपने NFT होल्डर्स के लिए एप इकोसिस्टम का नेटिव ERC20 टोकन एप कॉइन एयर ड्रॉप किया था। वहीं दूसरी तरफ 2022 में क्रिप्टो मार्केट में खलबली मचाने वाले टेरा लूना के $40 बिलियन के कोलैप्स के बाद डो क्वॉन ने हार्ड फोर्क के थ्रू टेरा लूना 2.0 टोकन को एयर ड्रॉप कर सुर्खियां बटोरी थी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है एयर ड्रॉप, कैसे काम करता है और इसका यूज कैसे और कौन करता है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो एयर ड्रॉप क्या है? तो क्रिप्टो एयर ड्रॉप तब होता है जब कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेवलपर फ्री में कॉइन्स और टोकन्स देता है। अरे वाह, क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला टोकन फ्री में देने के पीछे की वजह क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इन शॉर्ट, डेवलपर्स चाहते हैं लोग खुश हो ये देखकर कि फ्री में उनके अकाउंट में कॉइन ऐड हो गए हैं। क्रिप्टो एयर ड्रॉप 2017 के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स बूम के दौरान पॉपुलर हुए थे, लेकिन आज भी कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स द्वारा इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लूना 2.0 टोकन को रिसेंटली उनकी ओल्ड ब्लॉकचेन पर मौजूद होल्डर्स के लिए एयर ड्रॉप किया गया था, जिसके पीछे का मकसद था हाल ही में हुए टेरा लूना क्रैश से नुकसान को इस एयर ड्रॉप के जरिए कुछ हद तक कवर करना। टेरा द्वारा अपने पुराने होल्डर्स को लूना 2.0 टोकन देने के प्रोसेस को रेट्रोएक्टिव ड्रॉप भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेरा ने अपने प्रीवियस वॉलेट होल्डर्स की लिस्ट पर काम करते हुए किसी पर्पस के साथ ये एयर ड्रॉप किया। अगला सवाल, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स कैसे काम करते हैं? अलग अलग टाइप के क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन यूजुअली क्रिप्टो करेंसी का एक स्मॉल अमाउंट कई वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ज्यादातर इस काम को अंजाम देने के लिए इथीरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स ने कॉइन और टोकन की जगह NFTs एयर ड्रॉप की हैं। वैसे कई प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स कलेक्टर्स से बिना कुछ मांगे कॉइन्स और टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में कलेक्टर्स को एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए कुछ टास्क करने पड़ते हैं। तो क्या होते हैं ये टास्क? इसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना और कई बार कॉइन्स के मिनिमम अमाउंट को वॉलेट में होल्ड करना शामिल होता है।
हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर किसी को एयर ड्रॉप के रूप में टोकन्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं बहुत कम यूज की जाने वाली NFT एयर ड्रॉप की। इस तरह का एयर ड्रॉप टोकन की कीमत को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को पब्लिसिटी मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर अरोरा कॉइन फर्स्ट एवर फ्री NFT एयर ड्रॉप था। इस तरह से एयर ड्रॉप के समय साइन अप करने वाले सभी लोगों को 31.80 AUR फ्री मिले थे। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट वन ऑफ इट्स काइंड होने के कारण अनसक्सेसफुल रहा था, तो नेचुरली अरोरा टोकन के प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये मत समझिए कि सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि सभी एयर ड्रॉप अनसक्सेसफुल नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे एंथोलॉजी एयर ड्रॉप ने रजिस्टर करने वालों को 1000 ONT दिए थे, जिसके ठीक 2 महीने बाद यानी मार्च में टोकन्स की वैल्यू में अचानक उछाल देखने को मिला और देखते ही देखते हर एक टोकन की वैल्यू $11 हो गई। यानी हर रजिस्टर्ड मेंबर को टोकन की सेल के जरिए $11,000 का फायदा हुआ। और अब बात टाइप्स ऑफ एयर ड्रॉप्स की। किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक उसी तरह से क्रिप्टो एयर ड्रॉप में भी कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसे में स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप को छोड़ दे तो सिंपली कई वॉलेट्स में क्रिप्टो ट्रांसफर किए जाने के लिए बाउंटी, एक्सक्लूसिव, होल्डर एयर ड्रॉप्स, रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स, गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन्स के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स एक्सप्लोर ऑल काइंड्स ऑफ एयर ड्रॉप्स और पता करते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले बात बाउंटी एयर ड्रॉप की। बाउंटी एयर ड्रॉप के लिए यूजर्स को कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्विटर पर प्रोजेक्ट के बारे में पोस्ट शेयर करना, प्रोजेक्ट के ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्रिएट करके कुछ दोस्तों को टैग करना शामिल होता है। अगर आप दिए गए टास्क को पूरा कर चुके हैं और अपने बाउंटी एयर ड्रॉप को क्लेम करना चाहते हैं तो आपसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें वॉलेट एड्रेस और टास्क कंप्लीट करने का प्रूफ देना होगा। और अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप की। एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप बाउंटी एयर ड्रॉप से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो को सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड वॉलेट में ही भेजते हैं। इसमें आमतौर पर रेसिपिएंट का प्रोजेक्ट के साथ एक्टिव कम्युनिटी मेंबर या प्रोजेक्ट का अर्लियर सपोर्टर होने की एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सितंबर 2020 में देखा गया, जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप ने 400 UNI को एयर ड्रॉप किया था, वो भी सिर्फ उन वॉलेट्स में जिन्होंने कभी ना कभी उनके प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट किया था। और अब बात होल्डर एयर ड्रॉप की। होल्डर एयर ड्रॉप्स अपने नाम की तरह ही वॉलेट में कुछ अमाउंट की डिजिटल करेंसी होल्ड करने वालों को फ्री टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोजेक्ट टीम आमतौर पर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर यूजर्स की क्रिप्टो होल्डिंग का एक स्नैपशॉट लेती है। इस तरह से जब वॉलेट मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तब रेसिपिएंट स्नैपशॉट के समय की होल्डिंग के अकॉर्डिंग फ्री टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में कई नई प्रोजेक्ट बिटकॉइन, ईथर और BSC वॉलेट होल्डर को टोकन्स एयर ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह है कि उनके पास क्रिप्टो स्पेस में लार्जेस्ट कम्युनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में एक्सक्लूसिव तौर से स्टेलर ल्यूमन्स द्वारा BTC होल्डर्स को 3 बिलियन XLM एयर ड्रॉप किए गए थे। एयर ड्रॉप की कहानी बहुत लंबी है, इसके लिए एक और मुलाकात जरूरी है। जल्द मिलेंगे क्रिप्टो एयर ड्रॉप पार्ट 2 के साथ। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3 3.0 TV covers the latest crypto crimes. keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं रुचि शर्मा और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। एयर ड्रॉप्स की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एयर ड्रॉप सेगमेंट 2 लेकर।
एयर ड्रॉप्स के 3 टाइप से रूबरू होने के बाद अब इसके सेकंड पार्ट में चलिए बाकी टाइप्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स की। रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स, यूनिस्वैप ने अपने नए गवर्नेंस टोकन UNI को अर्ली यूनिस्वैप यूजर्स को रेट्रोएक्टिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके एयर ड्रॉप का एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, जो ट्रेडिंग या लिक्विडिटी प्रोविजन के माध्यम से प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट कर चुके हैं। स्नैपशॉट से पहले प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट करने वाला हर एक वॉलेट कम से कम 400 UPI को क्लेम कर पाया। इस तरह से कुछ यूजर्स ने यूनिस्वैप एयर ड्रॉप से लाखों मुफ्त कमाए। इस तरह रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप ने ट्रैक्शन गेन किया और जल्द ही कई DeFi प्रोटोकॉल ने भी इसे फॉलो किया। DYDX, यूनिस्वैप, InstaDApp, फ्यूरो कॉम्बो, ये सब रेट्रोएक्टिव DeFi एयर ड्रॉप्स के कुछ पॉपुलर नाम हैं। इन सब के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं 2 बेहद जरूरी एयर ड्रॉप्स की, जिसमें गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन्स एयर ड्रॉप का नाम शामिल है। गवर्नेंस टोकन एयर ड्रॉप। गवर्नेंस टोकन वो टोकन है जिसके जरिए डेवलपर्स टोकन होल्डर्स को प्रोटोकॉल के फ्यूचर को शेप करने में मदद करने के लिए बनाते हैं। गवर्नेंस टोकन होल्डर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि प्रपोजिंग या न्यू फीचर प्रपोजल को डिसाइड करना और यहाँ तक कि गवर्नेंस सिस्टम को खुद चेंज करना। हाल ही की बात करें तो इथेरियम स्केलिंग प्रोजेक्ट ऑप्टिमिज्म का न्यू OP टोकन अपने कम्युनिटी एयर ड्रॉप के बाद 70% नीचे देखा गया। ऐसे में OP टोकन के डंपिंग के जवाब में ऑप्टिमिज्म कम्युनिटी मेंबर OX जॉन ने एक गवर्नेंस प्रपोजल सबमिट किया है, जो इनिशियल एयर ड्रॉप के सेलर्स को फ्यूचर ऑप्टिमिज्म एयर ड्रॉप्स रिसीव करने से बैन करेगा। पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी टोकन्स एयर ड्रॉप्स। यूटिलिटी टोकन्स स्पेसिफिक पर्पस के यूज के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि DApps या फिर गेम में। ये होल्डर्स को कई तरह के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, अक्सर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, Axie Infinity का स्मॉल लव पोशन, मैटिक और फाइल कॉइन। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिप्टो प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप क्यों करते हैं? ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स वाइडर अडॉप्शन गेन करने और अपने नेटवर्क को ग्रो करने के अटेम्प्ट में फ्री टोकन्स देते हैं। जाहिर है, होल्डर्स की बढ़ती गिनती को पॉजिटिव मेट्रिक के रूप में देखा जाता है, जो टोकन ओनरशिप के मामले में प्रोजेक्ट को ज्यादा डिसेंट्रलाइज बनाते हैं। साथ ही किए जाने वाले क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स रेसिपिएंट को प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। पर कई बार क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए फॉल्स इंप्रेशन भी दे सकते हैं। इस वजह से अडॉप्शन के समय दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एड्रेसेस किसी एक टोकन को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो समझ जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट या तो स्कैम है या फिर कम्युनिटी को कैप्टिवेट करने में फेल रहा है। एयर ड्रॉप स्कैम की बात करें तो रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एप थीम्ड एयर ड्रॉप फिशिंग स्कैम्स को लेकर सभी होल्डर्स को वार्न किया था। Malwarebytes Labs द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट में एयर ड्रॉप फिशिंग में खतरनाक तरीके से बढ़ते अटेम्प्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि स्कैमर्स किसी भी तरह से युगा लैब्स के BAYC एप रिलेटेड NFT कलेक्शन के अराउंड हाइप को ठगी के जरिए कैश कराना चाहते हैं। अपनी रिपोर्ट में Malwarebytes ने सबसे कॉमन एयर ड्रॉप फिशिंग टैक्टिक के बारे में बात की है, जिसमें स्कैमर्स फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स को लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करते हैं। ये तो हुई एयर ड्रॉप फिशिंग स्कैम्स की बात। अब रुक करते हैं असल में होने वाले एयर ड्रॉप्स के टाइप्स की तरफ। एयर ड्रॉप एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। दुनिया भर में टैक्स लॉ अलग अलग है। ऐसे में नई इंडियन क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी के मुताबिक क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसीलिए लूना 2.0 के रेसिपिएंट्स को अब एयर ड्रॉप के जरिए मिले टोकन पर भी 30% टैक्स चुकाना होगा। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इंडियन क्रिप्टो टैक्स लॉ एक क्रिप्टो पेयर से होने वाले मुनाफे को दूसरे पेयर में नुकसान के अगेंस्ट ऑफसेट करने की इजाजत नहीं देता है। यानी आपका फायदा मेरा फायदा, लेकिन आपका नुकसान सिर्फ आपका। समझे ना? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को हजारों की भीड़ में निकाल कर लाइमलाइट में लाने का जरिया है। दूसरी तरफ ये क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए अप एंड कमिंग टोकन्स के साथ उनके पोर्टफोलियो को ग्रो करने का अच्छा तरीका है। हालांकि लेजिटिमेट से ज्यादा स्कैम एयर ड्रॉप्स मौजूद हैं, इसीलिए किसी भी एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए पार्टिसिपेट करने से पहले केयरफुली रिसर्च करना जरूरी है। क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स की इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। होप यू लाइक द स्टोरी। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ।
and a very warm welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Diwali, the festival of lights, is around the corner. What if I tell you that we will soon be able to celebrate Diwali in the metaverse? Interesting, right? Well, let me tell you more about it. But before moving forward, please like, share and subscribe to our channel, and to get instant updates, press the bell icon. With so many festivals being celebrated in Metaverse, it's time to celebrate Diwali in the Metaverse. Yes, celebrating Diwali on Metaverse could soon be a reality in Dubai. To enhance the experience this Diwali, they are bringing ideas to transform social celebrations with the help of Metaverse. Every year, Dubai celebrates Diwali with full enthusiasm. This year, in the 10-day celebration in the Emirate, there will be live cultural acts on stage. Festival City will also host a spectacular fireworks show. Diwali markets will also be dotted around the city, where visitors can shop for unique handicrafts, silverware, Diwali-specific decorative items and colorful Indian outfits. They can also sample several delicious Indian snacks and beverages and may even win grand prizes during raffle draws. So Diwali is really a true celebration for all your senses. The best of food, the best lighting, the best shopping experiences and the best sounds. Isn't it great that technology can connect so many people, especially during festivals like Diwali? Now let me tell you about another best thing that will happen with Diwali coming to Metaverse. We all love shopping, especially during the festival season, isn't it? I have a very interesting update to share with you all that Flipkart is soon launching Flipverse, an interactive Metaverse-themed virtual shopping destination in India. Yes, the e-commerce player has teamed up with social media platform Meta and Polygon for the project. Flipkart is expected to make an official announcement of its Flipverse during Flipkart's Big Billion Day sale. The Flipverse shopping experience is expected to transform e-commerce from 2D static product catalogs into real-time experiences that enable users to walk around the store enjoying 3D rendered store displays. So Flipverse will host games, contests, drops, NFTs, brand activations, product launches, and mystery boxes. It will also reportedly be accessible through any phone device or browser. Well, Diwali is all about the best lights, food, and shopping experiences. So bringing all these on the Metaverse will enhance people's experiences across the globe. So are you excited to experience Diwali in a completely new way? Comment and let us know. This is Vishakha signing off and wishing you all a very happy Diwali. We will keep you connected to the evolving world of NFTs. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions.
और समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। तो भैया बच्चन साहब की तरह समंदर नहीं तो पुलिस ही हाय। लेकिन आज जिस पुल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो पानी से नहीं बल्कि पैसों से भरा हुआ पुल है, और उस पुल को कहते हैं लिक्विडिटी पुल। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के इस खास शो में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमीर हो या फिर गरीब, सभी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि बिना फाइनेंस के किसी की भी नैया पार नहीं लग सकती। यानी सीधी सी बात यह है कि फाइनेंस की दुनिया लिक्विडिटी पर चलती है और बिना फंड्स के फाइनेंशियल सिस्टम्स तो ठप पड़ जाएगा। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर ब्लॉकचेन से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंसेस शामिल होते हैं। यानी कि डिफाई भी बिना लिक्विडिटी पूल के नहीं चलता है। डिफाई एक्टिविटी जैसे लेंडिंग, बोरोइंग और टोकन स्वैपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पीसेस ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड्स पर निर्भर करता है। इस तरह से डिफाई प्रोटोकॉल के यूजर्स क्रिप्टो एसेट्स को इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉक कर देते हैं जिन्हें लिक्विडिटी पूल कहा जाता है, ताकि दूसरे यूजर्स उनका इस्तेमाल कर सके। अब देखते हैं लिक्विडिटी पूल कैसे काम करता है। तो दोस्तों, डिफाई में होने वाली किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्रिप्टो का होना बहुत जरूरी होता है। डिफाई प्रोटोकॉल्स में क्रिप्टो की अनइंटरप्टेड सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट किया जाता है। लिक्विडिटी पूल्स वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें प्लेटफॉर्म के यूजर्स द्वारा सप्लाई किए गए टोकन्स को लॉक किया गया है। लिक्विडिटी पूल्स सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए किसी मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, लिक्विडिटी पूल्स को ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स यानी AMMs जैसे दूसरे पीसेस ऑफ कोड के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं लो लिक्विडिटी की वजह से प्रॉब्लम क्यों होती है। सिंपल सा फंडा है, ये तो हम सब जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर होगा तो किसी भी एसेट्स की प्राइस बढ़ेगी। इसी प्रकार से लो लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड में हाई स्लिपेज होता है। लो लिक्विडिटी की वजह से अगर सभी प्रोटोकॉल पर दिए गए किसी भी ट्रेडिंग पेयर जैसे ETS से COMP के लिए रिक्वायर्ड लिक्विडिटी नहीं है तो यूजर्स उन टोकन्स के साथ फंस जाएंगे जिन्हें वे बेच नहीं सकते। बहुत मायने में ये रग पूल की तरह होते हैं, लेकिन उस समय यूज भी हो सकता है जब मार्केट काफी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आइए जानते हैं डिफाई में कितनी लिक्विडिटी होती है। डिफाई में लिक्विडिटी को आमतौर पर टोटल वैल्यू लॉक के रूप में टर्म किया जाता है, जो ये मेजर करता है कि कितने क्रिप्टो को प्रोटोकॉल में इंट्रस्ट किया गया है। ऐसे में मैट्रिक्स साइट डिफाई लैमा के अनुसार अप्रैल 2022 तक सभी डिफाई में TVL $222 बिलियन थी। अब देखते हैं पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोविजन आकर्षक हो सकता है। वही प्रोटोकॉल्स टोकन रिवॉर्ड्स के जरिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को इंकरेज करते हैं। इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बढ़ावा दिया है, जिन्हें यील्ड फार्मिंग कहते हैं, जहां यूजर्स अपने एसेट्स को अलग अलग प्रोटोकॉल्स में मूव करके लिक्विडिटी खत्म होने से पहले यील्ड बेनिफिट गेन करते हैं। ज्यादातर लिक्विडिटी पूल्स LP टोकन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे बाद में पूल से रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक कर सकते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स कभी कभी ज्यादा यील्ड्स जनरेट करने के लिए LP टोकन्स को दूसरे प्रोटोकॉल पर स्टेक पर लगा सकते हैं। हालांकि जोखिम से सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि लिक्विडिटी पूल्स में इम्परमानेंट लॉस का खतरा भी बना रहता है। इम्परमानेंट लॉस यानी कि जब सिग्निफिकेंट प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण लिक्विडिटी पूल में टोकन का रेशो अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ सारा फंड खो सकते हैं। सो इस लिक्विडिटी पूल से निपटने के दौरान इम्परमानेंट लॉस के बारे में जरूर सावधान रहें। चलिए मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स को यूज करने वाले डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म्स के 3 एग्जांपल्स बताता हूं। इनमें से पहले एक है 1inch। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एग्रीगेटर है जो मल्टीपल चेन्स में काम करता है। दूसरा है आवे, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। और तीसरा है यूनिस्वैप, ये इथेरियम बेस्ड टोकन्स की स्वैपिंग करने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। लिक्विडिटी पूल्स क्या है, कौन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लो लिक्विडिटी से क्या प्रॉब्लम आती है, इन सभी बातों को एक्सप्लोर करने के बाद आइए चलते हैं अब एक नजर लिक्विडिटी पूल्स के फ्यूचर पे भी डालते हैं।
तो लिक्विडिटी पूल्स एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे में लिक्विडिटी को अट्रैक्ट करना एक मुश्किल गेम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लगातार कहीं और हाई यील्ड्स का पीछा करते हुए लिक्विडिटी हासिल करते हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसेन के मुताबिक 42% यील्ड फार्मर्स जो लॉन्च के दिन पूल को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, वो 24 आवर्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके पूल से एग्जिट ले लेते हैं और कई केसेस में तीसरे दिन तक अप टू 70% ऑफ लिक्विडिटी खत्म हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मर्सिनरी कैपिटल के रूप में जाने जाने वाले ओलंपस डाउ ने प्रोटोकॉल ओन लिक्विडिटी के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके अंतर्गत लिक्विडिटी पूल को सेट करने के बजाय प्रोटोकॉल यूजर्स को अपने डिस्काउंटेड प्रोटोकॉल टोकन OHM के बदले में अपने क्रिप्टो को इसकी ट्रेजरी में बेचने देता है। अब यूजर्स हाई यील्ड्स के लिए OHM को स्टेक कर सकते हैं, लेकिन इस मॉडल में भी सेम प्रॉब्लम्स आई और यूजर्स अपने टोकन्स को तुरंत इन कैश करके बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागे, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल की सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फिडेंस डिमिनिश हो गया। डिफाई इकोसिस्टम में लिक्विडिटी पूल के इंपॉर्टेंस को टेरा इकोसिस्टम में हाल के डेवलपमेंट के जरिए समझाया जा सकता है, जहां एंकर प्रोटोकॉल टेरा के हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स ने UST स्टेबल कॉइन डिपॉजिट करने के लिए होल्डर्स को दी जाने वाली इंटरेस्ट को लगातार कम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने प्रोटोकॉल से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट टेरा ब्लॉकचेन बंद होने के रूप में सामने आया। इस तरह से टेरा इकोसिस्टम का क्रैश होना हाल के समय में क्रिप्टो मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए जब तक डिफाई लिक्विडिटी के ट्रांजैक्शनल नेचर को सॉल्व नहीं करती है, तब तक लिक्विडिटी पूल्स के हॉरिजॉन में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त संदीप कसालकर जल्दी मिलूंगा डिफाई और अन्य से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome to 3.0 TV. This is Manoj Dara. So, the US Department of Treasury had recently banned the use of Tornado Cash Mixer, stating that it has been used to launder more than $7 billion worth of cryptocurrency since its creation in 2019. So, to explain the technology behind these mixers and how these mixers are used for money laundering purpose, we have invited two special guests. Let me introduce you to Mr. Preetham Rao. He is the CEO of Coil Audits. Preetham, welcome on 3.0 TV. Hey, hi. Thanks for having me. And our second guest is Mr. Vivek Singh. Vivek, welcome on the show. Thanks, Manoj. So, Preetham, I will begin with you. Is what is first of all Tornado Cash Mixer, and why are hackers utilizing this tool? And on top of that, Tornado Cash has been recently highlighted in the Web3 hack story, where hackers utilize it to route the looted money. That's what the clear indications which we have got. So if you can just begin with. Okay. So before going into Tornado Cash, we have to first of all see like what are the crypto mixers, right? So currently we are having multiple kind of crypto mixers. Like on Ethereum, we are having this popular, crypto mixer we can call Tornado Cash. On Bitcoin, we are having Blender or like some crypto mixers also, right? So there are multiple kind of crypto mixers. Like first is, you can say kind of custodial crypto mixers, right? Where you can send your money to an kind of a cryptocurrency exchange on behalf of you. They will send the money to the second guy. And the second type is coin join crypto mixers. So what they do is a kind of a kind of a custodial kind of wallet, where they will mix your, all the pool money and they will send the money, right? But they are not a kind of smart contracts like we can take the example of Blender, right? So it is on the Bitcoin blockchain. The third is very interesting, and they are using the smart contracts, right? That is the Tornado Cash, right? Exactly. So how they are working, like using the smart contracts and zero knowledge proof, they are hiding the transactions and they are all mixing the transactions, right? So in case of, you can say the latest Tronik network attacks, right? So these guys use this Tornado Cash, and around like $300-400 million
money. They use the Tornado Cash and they take them to their country like North Korea, right? So these hackers are moving to from Web 2 to Web 3, so that they can break the code and they can using these tools they can hide the transactions. Fantastic. Yeah. So Vivek, what's your opening remarks? Because Preetham has right now highlighted that it's a smart contract used instrument. And what is your opinion? Basically, हमने एक बहुत extensively एक story भी cover किया था Beanstalk protocol का. Correct. तो वहाँ पर भी ये Tornado Cash Mixer का use हुआ था जहाँ पे $180 million worth of cryptocurrency was stolen. So what is your opening remarks about the Tornado Cash Mixer? See, Tornado Cash Mixer is basically, I think I agree with Preetham what he said. It's a smart contract, that's true. What it does is that it delinks the transaction. From the past transaction, the new transaction, it just delinks. So the new transaction is not identifiable or linked to the past transaction. Fantastic. So whatever happens in new transaction is like it's a fresh new transaction. All right. So उसमें कोई figure out नहीं कर सकता कि ये पैसा कहाँ से आया. So that's the key important point. And second point is that you can split into multiple wallets. Suppose I am a hacker, I want to split in 10 wallets. आपको शायद याद होगा Beanstalk में 10 वॉलेट में split हुआ था पूरा. Exactly. वो Ethereum ही था वो. Correct. वो आगे I will ask you why they used Ethereum, but this is something which we have been observing. Yeah. So you can split this money in different wallets, and किसी को पता नहीं चलेगा from where this money is coming from. Right. So that is a key advantage of Tornado Cash Mixer. So few key words which I have picked from what Vivek Singh has also said, Preetham, is किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये transaction कहाँ से हुआ. तो अगर ये सब features हैं तो is it not a threat? That's what we will try to understand. So my second question to you is, how does this Tornado Cash Mixer functions? And according to reports, hacks and the associated data are linked to the attackers using Tornado Cash for untraceable funds. That's what Vivek has just highlighted. So, I mean, are the funds completely untraceable in this segment? What is your opinion? Okay. So like we can go back to like 2016-17. So starting में क्या होता था, like in the dark web, they were using Tornado Cash with these kind of mixers just to buy some cocaine or these kind of stuff they were using, right? Now these Web 2 hackers know like there is so much money involved in the Web 3 now, right? So they moved into Web 3, right? And now they know how they can attack or break the code. But the issue here is we think the blockchain is anonymous, that we can track the transactions, like the address is anonymous, but like there is so many good companies like Chain Analysis, TRM Labs and everything. They know like who is the owner of this address. Like just assume I am a celebrity, or maybe I am a guy in Ukraine running some kind of funding, right? So these guys know like this address belongs to this celebrity or this kind of stuff, right? Now just assume this celebrity now wants to donate some money to Ukraine, but that celebrity is in Russia, right? Now Chain Analysis can say this guy is from Russia. Now then the Russian fan will see like what's going on, why this guy is supporting the Ukraine. But maybe that guy can understand the situation is in Ukraine and he wants to support Ukraine by sending NFT or Bitcoin or anything, right? So in that case, like around 10 or 12 billion dollars currently using Tornado Cash, right? So around $2 billion are the legal transactions. You can say they are using for good purposes, but around $9 billion are around these hacks and vulnerabilities, right? So how these guys are using it, right? Like just take an example of Ronin network attack, or right, this XI Infinity, right? So these guys attacked that RPC node. That node was public due to this private keys and everything. They attacked that and they gone with around $600 million, right? $625 million roughly, yeah. Yeah, $625 million. Now they use the Tornado Cash to to transfer that money to some other addresses or any kind of stuff, right? Now using like just using the transfer address Ethereum from one address to another address using Tornado Cash. Now again they want to convert that money into Bitcoin or any kind of stuff. Now they converted that Ethereum into wrapped BTC, and now using another crypto mixer like Blender, they transferred into Bitcoin. So they use multiple kind of mixers to just hide the transaction. Super. And how they are,
So बहुत ही interesting examples दिए हुए प्रीतम ने, and few things which I have picked up is Tornado, I mean the Ronin thing which had happened $625 million में वहाँ पे जो hack हुआ था वहाँ पर भी इसका use हुआ था, and Beanstalk protocol में he mentioned about, Pritam mentioned about the Ukraine aspect जहाँ पर hacker ने कुछ money वहाँ पर भी donation दिया था. So what is your opinion, ये कैसा operate होता है विवेक, and why it is a threat to the economy, if you can just highlight that. Okay. See, what is happening right now is that, even the blockchain, we say it anonymous है, pseudonymous है, but it's not actually. I just had a meeting before this discussion. मेरी आज दोपहर में मीटिंग हुई चेन एनालिसिस की टीम से, and they could actually give me the wallet. They could actually give me the people who are holding this wallet. So they have so much of information about people like who are holding this wallet, and they can actually track like who is holding this wallet, and they can actually block these people. जो भी hackers है, they can block the hackers as well. तो ये Pritam is saying there is a report. I mean there are also reports that are suggesting roughly around $10 billion worth of funds have been stolen. तो ये तभी उनको समझ में नहीं आया because इतने बड़े-बड़े projects लेके बैठे हुए हैं. Why are they waiting for chain analysis to come and highlight कि भाई एक कोई चोर है आपके घर पे चोरी कर रहा है, हमको ये दिख रहा है यहाँ पे. So what is happening actually? Okay. So Abhi, like what's going on? Like in I think May or June. US government sanctioned this one crypto mixer, right? I think Blender they sanctioned it, right? But they were doing some, around some $1 million of hacks or vulnerability was going, right? But that was not a threat to US government or maybe, right? But after Ronin network hack, right? So these guys realize these are the North Korea, hackers, right? Indirectly they are taking the money, and or North Korea can use the money to make missiles or any kind of attacks they can do, All right? Okay. Now they are feeling the threat to their country or threat to their organization. That's why they are taking the more serious steps. All right. So this is actually a logic statement, which we can think of developing going forward as well. But Vivek, can you just explain that about the logic behind the Tornado Cash functioning, as it uses the ERC20 token standard and runs on the Ethereum chain? That's what the official statement is coming out. So according to Financial Stats, Tornado Cash transactions totaled roughly around $10 billion. And additionally, an increasing number of hackers use the network to send illicit funds, making it a paradise for hackers. That's what we are not saying. That's what reports are suggesting. So if you can just explain this situation. And if you look at the tool, the Tornado Cash Mixer, it's so simple tool. It's very easy to use. You have to just deposit the fund, and you'll get one hash, and basically उसमें सब कुछ automatically होता है. At the background, it's all taken care of. But one thing you have to take care, if you are like if you want to really keep it anonymous, you have to do it from some VPN. You have to use some VPN address, VPN IP address, so it is actually anonymous. But actually, if you see how it is identified, it's identified by hash. The hash code is the identity in that smart contract. All right. So I just analyzed the smart contract. The hash code is it identifies your contract. The balance of who is the owner of the contract money. So all right, this is what Pritam, this is a hash. It can be identified. That's what Vivek is also saying. That's what you have also opined. So Pritam, you mentioned about a threat to the US economy. I want to develop on this area. So the recent restrictions on the Tornado Cash by the US Treasury was intended to limit hacking, but has it come too late? And was the decision made correctly given the many regular law-abiding investors use this tool to safeguard their privacy? So as you correctly mentioned that roughly around $1 billion worth of legal transactions have been taking place. So what is your opinion, Pritam? क्या यहाँ पर bad actors की वजह से कुछ जो law-abiding investors हैं उनको कुछ तकलीफ हो रही है इससे? Okay, so होता क्या है कि what I can see and like we seeing in this industry, whenever there is interesting tool or interesting technology, right? We can see in case of India also, when cryptocurrency came, the blockchain came, the first guy, or you can say the first movers होते हैं, they are the kind of bad guys who see how they can make MLM schemes in India and they can do some kind of scams, right? In the same way, these guys are identifying how they can, hack the money and without any, without any tracebacks, they can take money to their countries, right? But the thing is, I feel I feel in future there are going to more tools also like Tornado Cash, because it's just a smart contracts and the smart contract is running on multiple nodes and like there is so many buildings, right? But I feel it is a right choice by the government, right?
just assume we should be developing a like maybe some second kind of tools where the users can do some kind of KYC and they kind of some kind of zero knowledge proof where if government wants to identify who sent the transactions and anything, they can identify it, right? But if these hackers are taking so much money, right, so there should be a way to trace those transactions. I feel it's the right way. All right, so Vivek, that's what Pritam is saying. It's a right strategy to ban this thing because there is a big concern which is floating in the market. So what is, according to you, कहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस है जो ऑल जेन्युइन इन्वेस्टर्स और जिनको अपना जो एक प्राइवेसी चाहते हैं और दे आर एक्चुअली मतलब आई मीन दे वर यूजिंग दिस एंड उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा इससे. Okay, so first of all, I would like to summarize few things here. जो कि जो फाउंडर है, I mean earlier it was all one person owned. Now it is community owned actually. So, I mean they have done some voting and this entire protocol is run by community now. It's not run by the founder or owner. So this happened in back in 2020. So now actually if you see, the founder is not responsible for the product. People are managing, the community is managing it. All right. So you can't put the entire community behind the bars, right? So I mean it's not many more people are involved who are managing this project Tornado Cash Mixer, and of course there is a currency involved for managing this entire platform. So ये अभी मतलब सिर्फ इट्स नॉट जस्ट वन कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन एंड आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग की वजह से लेजिटिमेट और लेजिटिमेट जो जेन्युइन यूजर्स है, जो जेन्युइन यूजर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हाउ दे विल बी इम्पैक्टेड, राइट? So of course if you look at this tool, this is very important tool if I want to hide my funds, because as you know Bitcoin, Ethereum में सब कुछ publicly available है. It's all visible to public. If I own $1 million, everybody knows like this address owns $1 million. And exactly. Suppose if I'm doing some contract, I don't want my vendors to know like how much funds I'm holding, right? So this is quite important tool. I'm 100% sure some better tools will come in the future. We'll have better more organized tools in the coming days. So since we are talking about to privacy and personal identity protection को लेकर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, बट प्रीतम कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी कि वाई ओनली इथेरियम? अगर कुछ भी अगर इसमें से फॉर एग्जांपल बीन स्टॉक प्रोटोकॉल का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें से जो आवे से फ्लैश लोन दिया, बीन स्टॉक में प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया एंड बीन स्टॉक के सारे टोकन्स अपने वॉलेट में हैकर ने इंट्रोड्यूस मतलब he had actually transferred those tokens and then he converted into Ethereum. And why only Ethereum? और इसका ये connection क्या है? You mentioned about something is going on in North Korea and Ethereum converting all the stolen coins into Ethereum and then sending it to ये क्या connection है? थोड़ा सा आप इसको बताएं. So the connection is very simple. Like you can say that around 80-90% जो assets and now they are converting into EVM chains, right? But why? Why Ethereum is used for this? Okay, so Ethereum is one of the popular blockchain, right? It supports smart contract, decentralizations, and every kind of stuff, right? Now similar to Ethereum, we are having BSC and Polygon, right? So all the EVM chains are very popular. Like you can easily write the smart contracts, you can build multiple kind of DApps, DeFi, NFT products and these kind of stuff, right? In Bitcoin, we cannot write the smart contracts and these kind of protocols we cannot build on, Bitcoin or other some blockchains, right? So that's why the main development है वो EVM chains के ऊपर है, like you can say Ethereum, Polygon, Avalanche, all kind of stuff. So now the protocol is on these blockchains, right? Now definitely, so these guys are going to break your code और जो भी Tornado कैसे सब कुछ use करने वाले, right? तो वो इस पे क्यों कर रहे हैं, वो कैसे process कर रहे हैं? The process is like that. Like on Ethereum, like if you are having any DeFi product, anything, like they will, maybe there's any vulnerabilities or any bugs in your code, right? So after they will get the money from that Ethereum chain, like if the money is in Ethereum, they will transfer to Ethereum address, right? So they will transfer from Tornado to any Ethereum address, right? Now, like on Ethereum, we are having the wrap BTC, right? So wrap BTC is a kind of a wrap of Bitcoin. If you are having one wrap BTC on Ethereum, you can get wrap, Bitcoin on the Bitcoin chain, like we are having multiple bridges and one kind of stuff, right? True. So after Tornado Cash, they will convert into wrap BTC. Now using these bridge network, everything they will transfer to Bitcoin chain, and on Bitcoin they will use all these mixers to hide the transactions again, right? So that they can transfer to any other anonymous address. So all kind of these steps these guys are following. So Vivek, what's your opinion if you want to add to what Pritam has said?
Yeah, I think I quite agree with Peter what he said. Because WBTC, if you see that BTC is very important. If you see, this is just a token, by the way, that BTC. But when you convert this into Bitcoin, it's quite easier for you to converting one currency to another currency. So yeah, it is very important and it's good actually that BTC is good. Yeah. So your closing remarks on this, Pritam, since we have spoken in detail about what this mixer is all about. What are the options available and why hackers are using this and what is the technology behind this? Your closing remarks on this is what is the way forward for Tornado and if someone wants a privacy and to secure their transactions, what are the other tools he can use? Okay. So जैसे ही news आई US government is banning Tornado Cash, so all other countries like Europe and everything, the website go down, right? And all the USDC, the Circle and other big organizations. एक ripple effect देखने को मिला उसमें. Yeah, the ripple effect देखने को मिला. Stable coins. In future मुझे लगता है कि अगर ऐसा same privacy tool आता है और जिसमें hackers are doing such kind of stuff, US government or any other government is going to take the actions. But the next tool should be more better, where we can having some kind of KYC. Maybe in the end, where user is withdrawing the funds or anything, but in the between they can do some kind of anonymous transactions. But I feel there should be some better tools for privacy and anonymity. So Vivek, better tools for anonymity. That's what the last word coming in from Peter. What's your opinion on this? See, I think because this founder was not anonymous. Everybody knew it, so that's why they could ban it. But just imagine, अगर ये future में 1-2 महीने बाद, if somebody anonymous founder, he builds a similar product, can you ban him? You cannot ban him, right? So what is the fees? उसको fee structure क्या था उसमें से? फीस उसमें था एक्चुअली $50. आई रिमेंबर माई लास्ट ट्रांजेक्शन मैंने किया था $50 पे कुछ 5% इज समथिंग वो चार्ज होता है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट नाउ बट देयर इज सम स्मॉल परसेंटेज फीस इज देयर. बट आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस. टुमारो कल कोई सेम कोड कॉपी करके कोई फॉर्क करके एक एनोनिमस फाउंडर का बना दे ये सेम प्रोजेक्ट, you cannot ban it. It will be there in decentralized world में it's always there supported by community. तो fees नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता and that's all there is because money is all about it's about making money for the protocol. So thank you so much Pritam for giving your time and talking about Tornado event, what happened in the market and the way forward. Thank you so much Vivek for participating in this discussion and speaking about what is the Tornado Cash Mixer and its way forward and कितना important है वो retail investors के लिए and important for the economy as well. Thank you both the gentlemen for being part of this interaction. Thank you. Thank you. All right, that's all there is in today's special edition of Digitally Unplugged. This is Manoj Dara signing off. But keep watching 3.0 TV for more such interesting interviews. Until then, thank you. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी. मैं संदीप कसालकर. दोस्तों, दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़ी है, जिसकी वजह यह है कि क्रिप्टो के आने से उनकी पकड़ कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है. इस तरह से सरकार ने अपने आंखों में खटकने वाली क्रिप्टो पर नकेल कसने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं,
जिसमें सबसे बड़ा क्रिप्टो को मिंट करने के तरीके को टारगेट करना है। ऐसे में पहले बिटकॉइन और ETH क्रिप्टो को मिंट करने के लिए POW का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब ETH ने जहां POS का दामन थामा है, वही BTC ने अभी भी POW पर काम करना जारी रखा है, जिसे लेकर आए दिन हर तरफ से इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से लेकर इन्वॉल्वमेंट तक से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ऐसे में इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाइट हाउस ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए क्रिप्टो माइनिंग स्टैंडर्ड्स की किस तरह की मांग की है। व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने हाल ही में पब्लिश एक नई रिपोर्ट में इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने के लिए यूएस को क्रिप्टो माइनिंग के एनर्जी इंपैक्ट पर और रिसर्च कंडक्ट करने की बात कही है। रिपोर्ट में क्रिप्टो करेंसीज पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कार्यकारी आदेश के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहली प्रतिक्रियाओं में से ऑफिस द्वारा इस सवाल पर अपना नजरिया साफ किया है कि क्रिप्टो माइनिंग का एनवायरमेंट पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, जिसमें प्रभाव का पैमाना क्या है और कैसे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी उनकी ऊर्जा जरूरतों में अलग है। रिपोर्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ फेडरल एजेंसी को स्टेट्स और लोकल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एनवायरमेंट पर इंडस्ट्री द्वारा होने वाले इंपैक्ट के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का आदेश दिया गया है। एनर्जी की इंटेंसिटी और सोर्स जो इसमें लगती है, उसमें नॉइज पोल्यूशन, वाटर यूसेज और साथ ही क्रिप्टो माइनिंग की कंजम्पशन को बैलेंस करने के लिए कार्बन फ्री एनर्जी को कैसे बिल्ड करें, ये शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो माइनिंग खास करके बिटकॉइन यानी BTC माइनिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, जो यूएस सस्टेनेबिलिटी गोल्स को कमजोर कर रहा है। तो किस तरह का है बैंक्स का कड़ा रुख। हाल ही में टॉप यूएस बैंक्स के हेड्स ने कहा है कि उनके पास क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को फाइनेंस करने की कोई प्लानिंग नहीं है। दरअसल क्रिप्टो माइनिंग क्रिटिक रिप्रेजेंटेटिव ब्रैड शर्मन ने 3 मेजर बैंक्स के हेड, सिटी ग्रुप के CEO जेन फ्रेजर, बैंक ऑफ अमेरिका के ब्रायन मोइनहान और वेल्स फार्गो के CEO चार्ल्स स्काफ से उनके इरादे के बारे में हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की कांग्रेस की सुनवाई के दौरान क्रिप्टो माइनिंग को फाइनेंस करने पर सवाल किया, जिस पर सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसके पीछे की वजह कम होती बिटकॉइन की कीमत और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट मानी जा सकती है। इसके अलावा अप्रैल के महीने में रिप्रेजेंटेटिव जेड हफमन, जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी के अंदर एक सब कमेटी को लीड करते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 डजन डेमोक्रेटिक कलीग्स को रिक्रूट किया ताकि फेडरल एनवायरमेंटल ऑफिशियल से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के कॉन्सिक्वेंसेस और जांच करने के अर्ज किया जा सके। किस तरह से माइनर्स को हो रही है कैपिटल जुटाने में दिक्कत। इस साल माइनर्स के लिए कैपिटल जुटाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिटकॉइन यानी BTC की कीमत बेहद नीचे गिर गई है और एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रही है। ऐसे में माइनर्स को क्रिएटिव होना पड़ रहा है, जबकि अलग अलग कंपनियां माइनर्स की खाली जगह को भरने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi फर्म मैपल फाइनेंस नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिड साइज बिटकॉइन माइनर्स के लिए $300 मिलियन का लेंडिंग पूल शुरू कर रही है। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ मर्जर्स और एक्विजिशंस की उम्मीद है, क्योंकि माइनर्स क्रिप्टो की कम कीमतों की वजह से जूझ रहे हैं। बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन वर्सेस एवरेज यूएस हाउसहोल्ड एनर्जी कंजम्पशन। तो डिजी इकोनॉमिक्स के बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स का अनुमान है कि एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को पूरा होने में 1449 किलोवाट लगता है, यानी एवरेज यूएस हाउस होल्ड के लिए अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज के पावर के बराबर है। बिटकॉइन एनर्जी कंजम्पशन इंडेक्स के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग में अर्जेंटीना जितनी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से 131.26 टेरावाट आवर्स के एनुअलाइज लेवल पर क्रिप्टो माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन के मामले में टॉप 30 देशों में होने की उम्मीद है। हालांकि बिटकॉइन माइनिंग के लिए एनर्जी कंजम्पशन 2021 के अंत और 2022 के शुरुआती महीनों में अपने हाईएस्ट लेवल पर थी, जिसमें 200 टेरावाट आवर्स से ज्यादा की कंजम्पशन होते हुए दिखने मिली थी। आइए देखते हैं ग्लोबल माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबल माइनिंग एनर्जी कंजम्पशन की जब बात आती है तब 0.4 और 0.9% के बीच एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। बता दूं कि यह आंकड़ा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी की मात्रा के बराबर है, जिसे जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है बिटकॉइन माइनिंग से जुड़ी एनर्जी कंजम्पशन की हकीकत?
कैम्ब्रिज सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव फाइनेंस यानी CCAF की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि बिटकॉइन माइनिंग ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस इमिशन का लगभग 0.10% है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा सालाना 48.35 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक बढ़कर हो जाता है। रिसेंटली पब्लिश एक डेटा के अनुसार इंस्टीट्यूट ने यह भी अनुमान लगाया कि इंडस्ट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी का 37.6% सस्टेनेबल सोर्सेस से आता है। CCAF ने अपने सबसे हालिया डेटा से लिया है और इसे पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ते हुए जानकारी हासिल की है कि अलग अलग रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा रही है। सस्टेनेबल एनर्जी के इस्तेमाल के परसेंटेज पर CCAF का अनुमान 59.5% के कॉन्ट्रास्ट है, जिसे बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल ने माइनिंग कंपनीज के सर्वे के बाद 2022 की सेकंड क्वार्टर के रेफरेंस में पेश किया था। रिपोर्ट ने उन लोगों के बीच डिस्क्रिपेंसी को संबोधित किया जो मानते हैं कि बिटकॉइन इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस को अंडू कर देगा, जो इसके उलट सोचते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद कर सकता है। किस तरह से एमिशन में आई है कमी, आइए देखते हैं। CCAF के फाइंडिंग्स के अनुसार बिटकॉइन माइनिंग 21 सितंबर तक से ग्रीन हाउस गैस इमिशन के करंट एनुअल एस्टिमेट 2021 की तुलना में 14.1% कम है। रिपोर्ट्स में साफ लफ्जों में कहा गया है कि माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट कमी के कारण हैश रेट में सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई है, जिसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में गिरावट आई है। एक तरह से माइनिंग हार्डवेयर की एफिशिएंसी में संभावित बढ़त की ओर इशारा करता है, क्योंकि रेवेन्यू में गिरावट माइनर्स को पुराने और लेस एफिशिएंट हार्डवेयर को रिटायर करने के लिए एनकरेज करती है। तो दोस्तों, किसी ने सही कहा कि हर सिक्के के देखने के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह से बिटकॉइन द्वारा POW के इस्तेमाल को लेकर सभी की अपनी सोच और अपना नजरिया है। जहां कुछ देशों का कहना है कि बिटकॉइन को POW की जगह दूसरे विकल्प की तलाश करनी चाहिए, जबकि कुछ ने प्रतिबंध लगाने की तरफ अपना इशारा किया है। लेकिन सिक्के के दूसरे यानी पॉजिटिव साइड की तरफ देखा जाए तो ये बात भी सच है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में पहले की तुलना में बड़ी कमी आई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं करते कि POW के बाद POS आने वाला भविष्य है। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं Web3 से जुड़े नए अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV। Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara. The festive occasion of Diwali is upon us. Diwali means 5-day celebration that includes good food, fireworks, colored sand and special candles and lamps. Diwali is also the festival that celebrates the victory of good over evil. On this day, Lord Rama returned to its kingdom in Ayodhya after staying in exile for 14 years. Incidentally, the crypto industry also went through a roller coaster ride this year. When 2022 began, the price of Bitcoin, the top most popular cryptocurrency, was revolving around $47,000. By October 2022, it was at $19,000. The total market capitalization, which was over $2 trillion at the start of the year, is now below $1 trillion. So Ruchi, this Diwali, let's take a look at the top 10 events that crushed the cryptocurrency industry. Russia-Ukraine war is the topmost event. The Russia-Ukraine war has massively impacted the global cryptocurrency market. The global crypto market cap slid to as low as $1.57 trillion, losing almost 9.66% in the last 24 hours on Feb 24, 2022, when Russia launched a full-scale attack on Ukraine. So actually this is something, ये यहाँ से अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न था। बिल्कुल। रशिया और यूक्रेन को लेकर एक जो वॉर है वो तो हमने वो टाइम पर एक्सटेंसिवली कवर किया ही है, और इनफैक्ट वहाँ से लेकर मार्केट्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ। और रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के टाइम पर एक और खबर आई थी सामने कि ये क्रिप्टो अडॉप्शन बिकॉज वहाँ पर रशिया का जो लोकल करेंसी है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया, बिकॉज इट हैपेंस ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ द वॉर पे होता है कि आपका करेंसी डेप्रिशिएट हो जाता है, एंड देन वी सॉ अ क्रिप्टो अडॉप्शन, एंड देन लेटर ऑन हमने देखा कि बहुत सारी डोनेशंस भी आई थी एंड क्रिप्टो करेंसी में। सो एक ऐसा दौर था जहां पर हम ये
फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्रिप्टो एक्चुअली मार्केट नीचे जा रहा है बट क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ रहा है। हाँ, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वॉर होगा कि ना गोल्ड काम आएगा, ना करेंसी काम आएगी, ना हार्ड कैश काम आएगा, कुछ काम आएगा तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज। So moving on, taxation on virtual digital asset was another big event of the year. Gains arising from transactions in cryptocurrency became taxable from April 1st, 2022 following the budget announcement to the effect by Union Minister of Finance Nirmala Sitharaman in February of this year. She announced a 30% taxation on virtual digital asset apart from tax deduction at source implication which came into effect from July 2022. तो टैक्स की बहुत ज़्यादा मार जो है वो पड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, क्रिप्टो करेंसी जो भी कंपनीज थी, क्योंकि 30% टैक्स पहले लगा, फिर 1 जुलाई से TDS लग गया 1% और अभी GST की बात भी हो रही है, उसमें भी आई थिंक बात चल रही है कि 12% होना चाहिए या 28% होना चाहिए, उसके बीच में कहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन और प्रेशर आ गया उसने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो एंथुजियास्ट को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी किया और बहुत सारी जो कंपनीज थी इंडिया की और बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थी, दे वर फोर्स्ड टू और से demotivated to move out of the country and go to maybe Dubai or other crypto friendly countries. So actually 3 चीजें हुई थी रुचि, जैसे हमने हमारे व्यूअर्स को बताया भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था क्रिप्टो करेंसी जो ओवरऑल सेक्टर वो टाइम पर इनफैक्ट अब अप्रैल में देखें तो वहां पर क्रैश होना शुरू नहीं हुआ था। 30% का जो कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट आया था वहां पर लेकर क्रिप्टो अडॉप्शन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया वहां पर कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है क्रिप्टो अडॉप्शन को कि नहीं, क्योंकि दे वर आस्किंग फॉर मोर रेगुलेशंस एट अ टाइम व्हेन दे वर कंसर्न्ड अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये तो पैरेलल चल रहा था और इनफैक्ट 30% आने से हुआ क्या कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्रॉप हो गए, एक्सचेंजेस पर 80% से भी ज्यादा हमने देखा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए और वहां पे जितने भी पूरा इंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम जो इंडिया में was actually was ready to fire and take advantage of that big boom, कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस हो गया इक्वेशन एंड दे मूव टू मे बी सिंगापुर और दुबई फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। वहां पे कंपनी लिस्ट हुई एंड वी हैव सीन दैट कि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्टूबर है, रिसेंटली CBDCs का एक अडॉप्शन एक कॉन्सेप्ट पेपर नोट अनाउंस किया हुआ है, पायलट प्रोजेक्ट आया है, बट इनफैक्ट ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और इस पर थिंग्स हाउ इट्स मूविंग। बिल्कुल। Moving forward, payments difficulties on April 7, 2022, a circular by the National Payment Corporation of India stated that they are not aware of any crypto payments happening through the Unified Payment Interface, which is UPI. This led to UPI platform providers withdrawing their facility from all crypto exchanges, thus denying crypto investors to further use UPI payments for the crypto investments. After this, several crypto exchanges blocked their payment system and users were unable to use in these exchanges using traditional banking. तो एक NPCI का एक बहुत बड़ा हमने स्टेप देखा था, इनफैक्ट ये अप्रैल की खबर है और अप्रैल 7 के करीब या फर्स्ट या सेकंड वीक के करीब आया है कि वहां पर जैसे ही ये इम्प्लाई हुआ 30% टैक्सेस और ये सारी खबरें दैट वाज एक्चुअली नॉट एनकरेजिंग कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक रुख शैडो बैंकिंग का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, इफ यू रिमेंबर हमने बहुत एक्सटेंसिवली भी कवर किया। बैंगलोर में आई थिंक कॉइनबेस जब आया था बैंगलोर में और बहुत ज्यादा वो हायरिंग के लिए आए थे और तब कहीं ना कहीं किसी खबर में छपा था कि दे विल बी यूजिंग UPI पेमेंट्स, तब जाके NPCI ने ये फैसला किया था और शैडो बैन लगाया था। उसके ऊपर फिर ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो CEO है कॉइनबेस के, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया था कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आप वायलेट कर रहे हैं ये नया रूल आके। तो और उसके बाद में बहुत सारे जो स्टेप्स थे हमने देखने मिले थे और यहाँ पर लेट्स सी हाउ दिस इवेंट्स अनफोल्ड्स गोइंग फॉरवर्ड। Moving on, Terra Luna crisis. In May 2022, more than $200 billion was lost in the cryptocurrency market due to the shocking collapse of the Terra stablecoin. The price of Terra Luna fell by nearly 80%, thus devaluing the coins. It should be noted that stablecoins follow the economics of demand and supply. To keep the price consistent, any stable currency that is created must be backed by some form of collateral. तो टेरा लूना के बाद तो आई थिंक उसके बाद तो कभी उठ नहीं पाई वापस क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये एक ऐसा बड़ा इवेंट है जिसने पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पूरा झोंक के रख दिया इनफैक्ट। और यहाँ पर इनफैक्ट हुआ क्या कि ये $40 बिलियन का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम था टेरा लूना का, साथ ही साथ बहुत ज्यादा
जिनका वो टेरा लूना जो स्टेबल कॉइन है उसमें एक्सपोजर था, वो धीरे 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 कोलैप्स होते गए और पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया जी। और इनफैक्ट यहाँ पर रफली अराउंड हमने जब भी देखा कि वो टाइम पर टेरा और लूना जो स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय खुद का जो उनका जो नेटिव टोकन था लूना था, वो भी क्रैश हो गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया स्टेबल कॉइन के एग्जिस्टेंस पे। राइट। Moving on, next on the list is the US interest rates hike. So in July 2022, the Federal Reserve raised the interest rates by 75 basis points, which was the highest consecutive rate hike since 1980s. Then the Federal Reserve announced another big rate increase in September 2022. So एक टाइम पर हमने देखा कि यहाँ पर इंडिया में टैक्सेशन को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है और रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत बड़ा फेयर था, वो भी दैट वाज आल्सो लूमिंग। टेरा लूना क्रैश हुआ और इसके साथ ये जो पैरेलल इवेंट हुए, एक्चुअली मई में 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया था, फिर उसके बाद में कंसेक्यूटिव 4 हाइक्स हुई है और एज वी स्पीक नवंबर में तो देयर इज वन मोर, नवंबर 2 को एक वन मोर FOMC मीट है जहां पर दे आर एक्सपेक्टिंग कि 75 बेसिस पॉइंट्स तो इंक्रीज होगा ही और इसके आगे अभी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि दिसंबर में कितना बड़ा रेट हाइक हो सकता है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही यूएस में और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि पूरे के पूरे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी हो रहा है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट का काफी कोरिलेशन है जी। और जैसे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मार्केट थोड़ा हल्का स्लिड होते जा रहा है। कॉन्फिडेंस जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं आ रहा बिकॉज दे आर रिस्कियर एसेट्स और इनफैक्ट स्टॉक्स भी वहां पर यूएस के स्टॉक्स भी है, नैस्डैक कंपोजिट हम देख रहे हैं वो भी गिरे हैं और ओनली टाइम विल टेल कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैसे वापस आता है या फिर एक बहुत बड़ा कंसर्न रिसेशन को लेकर भी लूम हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इतनी सारी जो इंटरेस्ट रेट हाइक जो उन्होंने की है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सिस्टम में, ओवरऑल इकोसिस्टम में कैसा होता है। Moving on, ED crackdown is another big event. In July 2022, according to several media reports, the Enforcement Directorate asked crypto exchanges such as CoinDCX and CoinSwitch for more information and records as part of its investigation into alleged cases of foreign exchange violations. In August 2022, the Economic Times reported that the ED was looking into at least 10 crypto exchanges for allegedly assisting foreign companies to use cryptocurrency to launder money. तो यहाँ पर 1000 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस था उसे सुलझाते जो ईडी है वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस तक पहुंच गया। शुरुआत हुई थी इनकी इन्वेस्टिगेशन जो हमने हमारे व्यूअर्स को बताया भी था, चाइनीज लोन एप्स थी जी। तो कुछ केसेस आए थे कि कुछ लोग जो हैं वो पुलिस स्टेशन तक पहुंचे कि उन्हें बहुत ज्यादा थ्रेटन किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लिया जा रहा है उनसे, कुछ सुसाइड केसेस भी थे। तो जाके जब छानबीन हुई तो पता चला कि ये कुछ इंस्टेंट लोन एप्स हैं और इनके लिंक्स चाइना से हैं, क्योंकि चाइना हमेशा से आके इंडिया की मार्केट में आके ये लोन्स का जो काम है, जो फाइनेंस का काम है, और उनको इनफैक्ट ऐसे भी ऑपरेट कर रहे थे जहां पर उनको आरबीआई का अप्रूवल नहीं था। हाँ, आरबीआई का अप्रूवल नहीं था, तो वो जो इंडियन एक्सचेंजेस थी छोटी-छोटी उनको मोहरा बना के, मतलब उनका फेस रख के खुद ये ऑपरेट कर रहे थे। और उसमें वो क्या कर रहे थे कि जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मनी लॉन्डर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब पूरी जांच हुई तो ईडी के लिस्ट में ये 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी, जिसमें से वजीर एक्स पर कार्रवाई हुई, कॉइनस्विच कुबेर पे कार्रवाई हुई और फिर वजीर एक्स के बहुत सारे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश हो नहीं पाया। इनफैक्ट उनका जो इन्वेस्टिगेशन जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वहां पे उनको ट्रेस मिले कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपना मनी यहाँ से इंडिया से राउट करके बाहर लेके जा रहे हैं चाइना में। सो दिस वाज एक्चुअली नॉट प्रूवन ऑल्दो, बट ओनली टाइम विल टेल कि इन्वेस्टिगेशन का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर कैसे, हमारे एक्सचेंजेस पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक तो वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं और तो वैसे भी कंसर्न में है और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन। मूविंग ऑन, द बैंकरप्ट 3 Arrow Capital, which is actually yet another big event. According to the court record, 3 Arrow Capital owes a staggering $3.5 billion to 27 different businesses, including Blockchain.com, Voyager Digital, and the lender Genesis Global Trading. The information is derived from affidavits that describe the insolvency and liquidation of the cryptocurrency hedge fund in detail. The company hired to supervise 3 Arrow Capital's liquidations, which is Teno, made them public to Monday after filing them on the July 7th, which was actually 3-4 months
In fact, 2 months after, they have actually gone bankrupt. You are talking about the Terra Luna crisis. According to the document, Three Arrow Capital did not repay loans and also repeatedly missed margin calls with lenders, which caused this investment accounts to drop below necessary levels and not be topped up. So, टेरा लूना के बाद में तो फिर रुके ही नहीं. इनफैक्ट सेल्सियस एक बहुत बड़ा एक कंसर्न था. सेल्सियस के बाद में हेज फंड्स, इनफैक्ट $4 बिलियन से भी ज्यादा का एक बड़ा इकोसिस्टम था, वो क्रैश हो गया. एक रिपल इफेक्ट होता है आपका, अगर किसी चीज में अगर एक्सपोजर है एंड यू आर अनएबल टू विड्रॉ बिकॉज उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 70-80% तो इरोड हो गया है. एज वी स्पीक, ऑल्दो जो हमारे जो डूकॉन है टेरा लूना के, उन्होंने एक और इनिशिएटिव लेकर जो इकोसिस्टम अभी खड़ा किया है, उसका वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो बैंकरप्ट हो गए हैं उनको अपने पैसे मिल जाएंगे. सेल्सियस हुआ, थ्री आरो कैपिटल हुआ, जो डिजिटल भी उसमें एक था, बहुत ज्यादा कोलैप्स, रिपल इफेक्ट होते गया एंड यू नो दिस इज समथिंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर वहां से उभर नहीं पाया. बिल्कुल. मूविंग ऑन, crypto hacks is another big event, or I should say events. DeFi protocols were used in some of the greatest cryptocurrency thefts of 2022, such as the $625 million Ronin network hack of the video game Axie Infinity in March. Since then, some of these thefts, notably the Axie incident, have been linked to North Korean hackers. According to research published in August 2022 by blockchain analysis company Chainalysis, a stunning $1.9 billion worth of Bitcoin was stolen in hacks of various services in the first 7 months of this year, a 60% rise from the same period in the previous year. Exactly. तो बहुत सारे हैक्स हुए. हमें ये एक्सी इन्फिनिटी का तो पता ही है हैक. उसके अलावा एक वर्म होल ब्रिज अटैक हुआ था, बीनस्टॉक प्रोटोकॉल का हुआ था. एक नोमैड ब्रिज का भी हैक हुआ था. सो रुचि, एक कॉमन फैक्टर भी है, जैसे हम टोर्नेडो कैश मिक्सर की भी हम बात कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा स्टेप भी यूएस गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि यूएस के जितने भी सिटीजन्स हैं वो यूज नहीं करेंगे. इनफैक्ट एक ऐसी कॉमन कड़ी जो देखी गई थी कि अगर आप वो मिक्सर यूज करते हैं तो आप यू विल नॉट बी ट्रेस्ड, एंड दैट इज समथिंग विच थोड़ा जो रेगुलेशंस की तरफ जो जैसे पूरा द एंटायर ग्लोब इज इवॉल्विंग, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक नजर था. Moving on, following the broader bankruptcy in the cryptocurrency market, CEOs back out from the crypto markets. The crypto winter saw several crypto founders and co-founders diverting their focus and energy from the crypto to the Web3 related projects. Recently, Alex Mishinsky, the CEO of the now bankrupt crypto lender Celsius, Zep-Pay's CEO Avinash Shekhar, and co-founders Nishal Shetty and Siddharth Menon resigned from their respective companies. So, this is something which we have observed. Although ये market का impact है, और हमने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा concern क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, बिकॉज उनकी जो कमिटमेंट्स है, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कमिटमेंट पर वो खड़े नहीं उतरे और कहीं ना कहीं टारगेट्स मिस हुए हैं बिकॉज वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है. देयर आर सेवरल रीजंस. टैक्सेशन का इम्पैक्ट है, यहाँ से मूव ऑन करने का इम्पैक्ट है. टेरा लूना का एक बहुत बड़ा एक झटका लगा था, यहाँ पर वॉल्यूम्स ड्रॉप हुए हैं. यू हैव टू मूव आउट टू सम अदर कंट्री. न्यू एंगेजमेंट, वजीरेक्स फाइनेंस का एक बहुत बड़ा स्पैट था. तो ये सारा जो इवेंट्स हैं, that is actually it didn't help them, and who will stop you if you have different option. और अगर आप भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं रिजाइन करना पड़ता है पोजीशन से. लेकिन अभी इनमें से ज्यादातर सीईओ ने अपने अलग प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए. लेट्स सी हाउ दे टर्न आउट. सो मूविंग ऑन, a volatile nature of cryptos is another event that really shook the crypto industry. According to research released by Citibank on October 3rd, 2022, cryptocurrency prices are significantly down from their all-time high, and growing skepticism in stablecoin as a result of the collapse of Terra USDs has caused withdrawals from the largest stablecoin Tether. The Wall Street giant said that volatility has damaged user adoption, pointing out that although trade volumes and active addresses peaked around the time of the Luna collapse, indicating user adoption, they have subsequently returned to previous levels or even dropped. Tentative evidence suggests a reduction in trading volumes and future positions, but not wholesale decline in investor interest in the space, Citibank said in its research. आई थिंक मनोज इस बारे में इसको पूरी तरह से आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे. सो इनफैक्ट हमने बहुत बड़ा एक काफ़ी 10 लिस्ट है जो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया. सो एक रिकैप कर लेते हैं. इनफैक्ट सबसे बड़ा तो रशिया यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसकी वजह से ये पता चला कि यहाँ पर देयर आर टू कंट्रीज हु आर फाइटिंग.
और वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को हेल्प नहीं किया था, या फिर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को भी हेल्प नहीं किया, बिकॉज दे वर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग, एंड वहाँ से जो प्रोडक्शन जो ग्लोबली जा रहा था उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वॉज कंट्रोल, और इन्फ्लेशन स्पाइक होने का रीजन ये भी हो सकता है। और इनफैक्ट हमने देखा कि टैक्सेशन को लेकर इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हमने वो भी फेस देख लिया, हमने टेरा लूना का कोलैप्स देख लिया। टेरा लूना के बाद में वी हैव सीन रिपल इफेक्ट, ईडी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया अगर हम सेंट्रिक देखें, हमने ये भी देखा कि यहाँ पर थ्री एरो कैपिटल, सेल्सियस और सब बैंक्रप्सी हो गई, और यहाँ से लेकर वी हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हैव moved out of India and they have set up their shop और रजिस्ट्रेशन हुई है वहाँ पे दुबई में। और इनफैक्ट ये सारा जो इंसिडेंट है वो ऐसे टाइम पर आ रहा था। हमने मियामी में एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस था, वो भी अटेंड किया था अप्रैल में। लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म वाज देयर, बट ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को उसने हिला कर रख दिया। एंड वो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वहाँ से उभर नहीं पाए हैं। अगर यूएस इकोनॉमी ऐसा इफ इट शोज साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो दैट इज द ओनली वे जहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आएगी। ऑल्दो नीचे की स्तर में हमने देखा हुआ है कि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इथेरियम का एक बहुत बड़ा मर्ज का जो था इवेंट वो भी हुआ, कार्डानो का वासल हार्ट फोक हुआ, और इनफैक्ट देयर आर अदर लेयर 2 सॉल्यूशंस आल्सो दे आर पिकिंग अप। इथेरियम हैज मूव्ड टू POS, बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, और ये सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है, व्हाट इज दैट टर्निंग पॉइंट जहाँ से क्रिप्टो करेंसी मार्केट विल अगेन मूव northwards. That only time will tell. That's all there is in today's Diwali special bulletin from the entire team of 3.0 TV. We wish you and your loved ones a happy and a prosperous Diwali. We will meet again. I am Manoj Dara. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Wishing you a very happy Diwali. Stay happy, stay safe. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर फिर एक बार लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है टिप ऑफ द क्रिप्टो बग। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेटावर्स में हर कोई अपना नसीब आजमा रहा है। हर कोई मेटावर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे और बेहतर बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य से अब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अब मेटावर्स में एंट्री कर रही है और अपने एम्प्लॉयज को मेटावर्स के बारे में ट्रेन भी कर रही है। ऐसे एक कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में से एक KPMG ने अब अपना पहला मेटावर्स कोलैबोरेशन हब खोलने की अनाउंसमेंट की है। इसकी मदद से वो अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को डिजिटल युग में हो रहे विकास की अपॉर्चुनिटीज को पाने में मदद करेंगे। साथ ही इस कोलैबोरेशन हब यानी सहयोग केंद्र के साथ कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य लोगों को Web3 से भी जोड़ेगा। आपको बता दें कि कंपनी इस Web3 एक्सपीरियंस में सामूहिक रूप से $30 मिलियन का निवेश करने जा रही है, जिसमें मेटावर्स हब एक सिग्नेचर पीस के रूप में ही है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वेब 3.0 ये है क्या? तो सरल भाषा में अगर बात करें तो वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजीज के इवोल्यूशन की 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी है, जहां वेब 2 आपको कई अन्य चीजों के अलावा ऑनलाइन आइटम्स खरीदने और वेब पर अन्य लोगों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है, जिसमें पेपाल, फेसबुक और स्पॉटिफाई भी शामिल है। वही अगर बात करें वेब 3 की, तो वेब 3 जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, जिसमें वेब ब्राउजर्स बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब आप इसेंशियली सोफिस्टिकेटेड 3D ग्राफिक्स और वेब एप्लीकेशन बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो फिर से लौटते हैं KPMG की ओर। फॉर्च्यून ने जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह हब जो है वो एजुकेशन यानी शिक्षा, कोलैबोरेशन यानी सहयोग,
ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण और इवेंट्स एंड वर्कशॉप यानी आयोजनों और कार्यशालाओं पर केंद्रित होगा। हेल्थ केयर, कंज्यूमर, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अन्य संभावित मेटावर्स यूज केसेस की जांच करना ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। वही यूएस के केपीएमजी में डिप्टी चेयर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लॉरा न्यूस्की ने कहा कि मेटावर्स एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट को फिर से जोड़ने का एक तरीका है और एक नए कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस यानी सहयोगी अनुभव के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का एक मार्ग है। कंपनीज अब क्रिप्टो और वेब3 स्पेस में और ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रही है। क्रिटिकल इंसाइट्स को प्रोवाइड करने के लिए इसमें नए टूल्स और सॉल्यूशंस भी तैयार किए जाएंगे। समय समय पर इमर्सिव लर्निंग और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। ऐसे भी टैलेंट्स को भर्ती की जाएगी जो अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट करे और साथ ही फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के बदलते संगम को नेविगेट करने में मदद करेंगे। सो आई होप भविष्य में वेब3 की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी को हर कोई जरूर इस्तेमाल करना चाहेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Vishakha and today we are going to talk about wrapped tokens. How they work, are they safe or not, and much more. There will be two parts available on wrapped tokens. In this part 1, I am going to tell you what are wrapped tokens, are they safe, and types of wrapped tokens. And in the next video, we are going to talk about the pros and cons of wrapped tokens, which wrapped token has the biggest market share, and what is the future of wrapped tokens. But before we begin, do not forget to subscribe, like and share to our channel, and to get instant updates, press the bell icon. In simple terms, wrapped tokens are a way to use cryptocurrencies such as Bitcoin or Dogecoin on blockchains other than the blockchain they were originally built on. Wrapped tokens are the solution to the problem of blockchain interoperability. For example, if you are traveling from India to USA, you can't use Indian rupees in America. You have to convert INR into American dollars. Similarly, you can't use your Bitcoin directly on the Ethereum blockchain because only the Bitcoin blockchain knows that you hold Bitcoin. Wrapped tokens were created as a solution to this problem. With wrapped tokens, you can effectively move assets between blockchains and use them across the crypto ecosystem. Now, what are wrapped tokens exactly? Wrapped tokens are assets that allow the value of a native asset from one blockchain to transfer to another blockchain. One of the best known wrapped tokens is wrapped Bitcoin. WBTC is pegged 1:1 to the price of Bitcoin, so that 1 WBTC should always be equal to 1 Bitcoin. But unlike Bitcoin, wrapped Bitcoin is available as ERC20 or TRC20 tokens, which means it can be used and traded on the Ethereum and Tron blockchains. In a way, wrapped tokens are similar to stable coins such as USDT, which follow the price of the US dollar. Just as 1 WBTC is pegged to the price of 1 Bitcoin, 1 USDT is pegged to the price of $1. So now that you know about wrapped tokens, let me tell you its types. They are of two types: cash settled and redeemable. Cash settled tokens cannot be redeemed for the underlying asset. On the other hand, redeemable tokens allow investors to exchange the wrapped token with the underlying asset. Apart from Bitcoin and Ethereum, other blockchains like Cardano, Polkadot and Solana have started to experiment with wrapped tokens to facilitate access to DeFi applications. But how do wrapped tokens work? Wrapped tokens are created and destroyed by a process called minting and burning.
To mint a wrapped token such as WBTC, the underlying asset, in this case Bitcoin, is sent to a custodian who stores the Bitcoin in a digital vault. Once the underlying Bitcoin has been locked away, an equivalent amount of WBTC can be minted. This process can also be understood as wrapping. The underlying asset is wrapped up in a digital vault using a smart contract, and a newly wrapped asset is minted for use on another blockchain. To burn WBTC, the same process is followed, but in reverse. The WBTC is removed from circulation and the equivalent amount of Bitcoin is released from the digital vault and allowed back into circulation. Just as minting wrapped tokens can be thought of as wrapping the underlying asset to create a token of equivalent value for use on another blockchain, burning wrapped tokens can be thought of as unwrapping the underlying asset. This process of minting and burning, or wrapping and unwrapping, means that all wrapped tokens from WBTC to Rendoge are backed by an equivalent amount of their underlying currency. For every 100 Rendoge there has been minted, 100 Doge are being held to back the value of the wrapped token. But are wrapped tokens safe? From a technical perspective, a wrapped token is safe. If we take an example of wrapped Bitcoin token, it will likely be in custody in safe platforms like Ethereum or Binance Smart Chain, and once converted into an ERC20 or BEP20 token, it will hold the security of the related network. One of the significant flaws in wrapped Bitcoin tokens is the need to trust the custodian that holds the underlying asset. If the custodian unlocks and releases the real Bitcoin to someone else, token holders of ERC20 compatible wrapped Bitcoin would be left with a worthless asset. The way Bitcoin is held determines the level of security provided. A centralized custodial bridge that holds Bitcoin is an organization that promises to mint ERC20 tokens on Ethereum, for example. The centralized entity must be trusted that they will hold the Bitcoin and not run away with it. Users must ensure these organizations are at least backed up by guarantees and insurances in case something goes wrong. A decentralized smart contract managed bridge would be the best choice in the decentralized world of crypto. No need to trust any third party, only trust the code of immutable time-stamped smart contracts. And with this, it's a wrap in today's episode. We will meet again in the next episode, that is part 2 of this video, in which I will tell you which wrapped token has the biggest market share, what are its advantages and disadvantages, what is the future of wrapped tokens. Till then, keep watching 3.0 TV, do subscribe, like and share our YouTube channel, and for instant updates, do not forget to press the bell icon. We will keep you connected to the evolving world of NFTs. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. Non-fungible tokens or NFTs are unquestionably the most well-known areas of the blockchain industry. NFTs have grown in popularity over the last few years, and they can represent everything from physical to virtual assets. Despite sporadic market conditions, NFT collectors sent $37 billion to marketplaces in the first half of 2022. Nearly equaling $40 billion NFT sales figures of 2021. These NFTs enable artists all over the world to get their work out there and gain financial support like never before. However, due to the issues with congested blockchain networks,
the gas fees for minting NFTs have become uncertain and high, resulting in market entry barriers. But what if there is a way to have your cake and eat it too? What if you can mint your NFTs for free without paying any upfront gas fees? Wouldn't that be just great? This is how the concept of lazy minting was introduced to address this issue. Now artists can list NFTs excluding the part where you have to pay any gas fees. Hello and welcome to Crypto TV. I am Ruchi Sharma, and today we will look at what is lazy minting and how to lazy mint NFTs for free. When was lazy minting launched? Lazy minting was launched near the end of 2020 and was quickly adopted by top-tier marketplaces such as OpenSea and Rarible. Minting means just in time, and lazy minting refers to minting at the point of purchase. This concept quickly gained popularity among the creators because it enabled them to sell their NFTs without the need for an initial investment in gas fees. In this lazy minting concept, a creator or artist can mint their artwork for free. This does not absolve you of the obligation to pay the gas surcharges. You will pay the gas fees once your artwork is purchased, and the fees will be deducted from that amount. The risk factor was reduced to zero as a result of this concept. Artists and creators can now freely mint their artwork or resell their NFTs without fear of loss. So what is lazy minting? When gas prices are high, minting NFTs with Ethereum can be expensive. As a result, creators must spend increasing amount of money just to get their work out there as NFTs. Sometimes an item will sell, but you will lose money due to the gas fees required to mint your NFT. Introducing lazy minting. In simple terms, lazy minting takes place when an NFT is available off-chain or outside of the blockchain and is minted only when the NFT is sold. This means the artist does not have to pay any upfront gas cost in order to mint their NFTs. Gas fees are only paid after the NFTs have been purchased and transferred on-chain or on the blockchain. Another way to look at lazy minting is as a way to postpone paying gas fees until the NFT is sold. So why choose lazy minting? Minting tokens can be expensive. Many artists choose to mint their NFTs through lazy minting, depending on how high the gas fees are. Lazy minting offers an alternative and a reason to queue up out a period of high gas fees until they fall. Difference between minting and lazy minting. So minting requires a smart contract such as Rarible or OpenSea. Lazy minting requires a smarter contract such as Rarible. Minting, you pay the gas fees before minting. Lazy minting, initially, you don't have to pay the gas fees. Minting, after this someone can buy your NFT. Lazy minting, whenever anyone purchases, your fees is deducted from the purchase price. How does lazy minting work? The traditional way to create an NFT requires users to mint it to the Ethereum blockchain. Doing so requires a gas fees to be paid right away, which is costly. However, the new lazy minting features lets users postpone the minting process when creating NFTs, which is then done while making a purchase. This means buyers will pay the fees instead of the seller. So unless an NFT is purchased, it is listed on the marketplace and the data remains stored on a decentralized storage called Interplanetary File System or on OpenSea like NFT Marketplace database. While creating an NFT, you will sign the minting authorizations with your wallet, which is free and guarantees your ownership rights so that your creation remains in your control. A step-by-step guide to lazy mint an NFT. There are many NFT marketplaces like OpenSea, Rarible, Binance NFT, Nifty Gateway, Async Art, and many more, where you can mint your NFTs for free. But today, as an example, I am going to show you how to create NFTs on Rarible for free
and that too in less than 5 minutes. So let's get started. Step number 1. Go to the Redible.com website. Step number 2. Click on Create. Step number 3. Choose the wallet of your choice. Step number 4. Choose the type of listing for your NFT. Step number 5. Enter the required information. Step number 6. Select the free minting option. And lastly, tap on the Create Item button and sign free authorizations with your wallet. When a buyer purchases your NFT, it will be automatically minted and transferred to the new owner. Isn't that simple? So what are the benefits of lazy minting? There are several benefits to lazy minting, including number 1, muting the impact of gas fees. By shifting the gas fee payment to mint NFTs post-sale, sellers can incorporate the fee into their pricing models, making the high fees less of a deterrent to budding artists. Point number 2, lowering the barrier for entry. As mentioned earlier, one of the main benefits of lazy minting is that it lowers the barrier for entry imposed by the high gas fees needed to mint an NFT, making the process more affordable for artists and developers. Point number 3, encouraging liquidity. Lazy minting encourages liquidity, since NFTs can only be transferred after being sold. This helps prevent sellers from being left with a collection of minted, unsold NFTs, and buyers aren't left waiting indefinitely for the NFTs to be transferred to them. Now let's have a look at the disadvantages of lazy minting. What are the disadvantages of lazy minting? Point number 1, loss of control. Lazy minting removes upfront gas costs but relinquishes a certain amount of control from the artist or developer. By choosing to lazy mint, the seller no longer has the final say on who purchases their work and when it is transferred. Point number 2, potential for fraud. If a minted NFT is not sold, it remains in possession of the artist or developer, who is incentivized to sell in order to cover the gas fees. However, by offering lazy minting, there could be potential for fraud if someone were to sell an NFT but never mint or transfer it to the buyer. Conclusion: lazy minting is an impactful technique that allows creators to create new NFTs at no cost, but use it precisely. Have fun building something creative in the NFT space, and don't forget to like, share and subscribe to Crypto TV. This is Ruchi Sharma signing off. Keep watching Crypto TV. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and today we are going to talk about wrapped tokens. In part 1 of this video, I told you about how wrapped tokens work, what are their types and are they safe? If you haven't seen that video yet, then you can directly go to the description box where you will find a link of that video. Do watch it. So today, I am going to tell you which wrapped token has the biggest market share, the advantages and disadvantages of wrapped tokens and what is the future of wrapped tokens. But before we begin, don't forget to subscribe, like and share our channel and press the bell icon to get instant updates. So, do you know which wrapped token holds the biggest market share? Well, according to the latest data, the total wrapped tokens market capitalization is $5.78 billion. Out of dozens of wrapped tokens, wrapped Bitcoin has the biggest market capitalization of over $5.5 billion. Wrapped or bridged tokens are subject to the same tax regulations as the cryptocurrencies. Now, let's examine the pros and the cons of using wrapped tokens. As with every other token, wrapped tokens have many benefits, but also some disadvantages. So the first benefit is interoperability.
The biggest benefit that wrap tokens offer is interoperability. Unlike in the past, you can now use your bitcoins on the Ethereum network by wrapping them. Not only can you still conduct transactions through wrap tokens, but you can also use them for different services such as running and launching the apps or running DeFi services. Liquidity. Another huge benefit that comes with the utilization of wrap tokens is the increase in liquidity. Capital efficiency can be increased together with the liquidity of an asset, whether it is centralized or decentralized. Transaction speed. Another big advantage that wrap tokens offer their owners is faster transaction services. For instance, buying or selling Bitcoin in its blockchain can take up a considerable amount of time. However, using wrapped Bitcoin in the Ethereum network is much quicker. Keep in mind, however, that the time is a valuable asset in the crypto market due to the high volatility of cryptocurrencies. Enhanced security. Wrapping your tokens can actually increase the security of your funds because you have more control over private keys. Additionally, custodians focus on secure exchanges. Transaction fees. Last but not the least, lower transaction fees are another way that you can benefit from using wrap tokens. And now let's examine the cons of using wrap tokens. Custodian reliance. Wrap tokens are continually improving. They still rely on a custodian to be able to be minted or burned. If the custodian is somehow flawed, the wrapping or unwrapping process will be flawed as well. Centralization. The whole purpose of cryptocurrencies is to operate in a decentralized system. However, since wrap tokens are issued by a custodian, they are prone to centralization. Mint costs. Another minor disadvantage that comes with wrap tokens is the minting costs. Wrapping and unwrapping tokens require gas fees, which can then result in slippage. Nevertheless, the benefits of wrap tokens outweigh the negative features. Moreover, in the future, it is expected that these minor disadvantages will be removed. Perhaps a custodian smart contracts or multi-sig may not be needed in the future to wrap or unwrap tokens. So these were the pros and cons of wrap tokens. And now, let me tell you the future of wrap tokens. Achieving interoperability between different blockchains is a challenge for the industry. One problem is that as more blockchains are created, the number of bridges needed to ensure that assets on a blockchain can easily transfer to every other blockchain increases exponentially. Solutions are being developed to try to make bridging assets between blockchains easier and more efficient. One way to do this is with a bridge hub, which refers to a central bridge that all other blockchains bridge to. Now let me give you an example of it. An example of this is Dawinia, a cross-chain bridge hub being built on Substrate. For the foreseeable future at least, bridges and wrap tokens are set to continue to be a central part of the solution for interoperability. Well, this concludes our wrap tokens episode. This is Vishakha signing off. We will meet again. Till then, keep watching 3.0 TV and do subscribe, like and share to our channel. And to get instant updates, do not forget to press the bell icon. Many of us know that blockchain technology is a topic that is really hot at the moment. It is a topic that is surely very disruptive. Yes, everyone is talking about it. But in reality, how many really understand it? Yes, people in general know very little about this whole concept. Of course, this whole concept is relatively very new, and thus there is a lot of confusion and myths about the understanding of the whole subject. Many people really struggle to understand the concept of blockchain. Well, it's a quite techy topic after all.
That's why visualization is involved to break down the abstract explanation. We will explain the complexity of blockchain technology in a very simple and viewer-friendly way. Our explainer course segment will not only help the layman to understand the concepts behind the product and technology, but will also attempt to simplify complicated industry-related jargons and make them easier to comprehend by streamlining the complex part of blockchain technology to an easily understandable format. At the end of this segment, you will certainly know a lot more about fundamentals of blockchain technology, how this new age technology works, why businesses should use blockchain technology, its decentralized function, and lots more. So let us begin. What is a blockchain? Is Bitcoin the same as blockchain? Or is it just another kind of a cryptocurrency? Blockchain is far more than cryptocurrency. And even though the terms are often used interchangeably, they aren't the same thing. A blockchain is best known as a general ledger, where cryptocurrency transactions are recorded. A blockchain is a software, a data structure that makes it possible to create a digital ledger or a spreadsheet in layman terms of transactions and share it among a distributed network of computers. A blockchain is a way of digitally documenting data on a distributed ledger. To explain this in simple English, we rewind a little and break the term blockchain. We first understand what a block is. A block is nothing but a collection of data that can be anything. In Bitcoin currency terms, it is a collection of transaction records bundled together. That is transaction records like Vinita pays Sunita 100 rupees. Amrita pays Suprabhat 120 rupees. Aratna pays Sheetal rupees 80. All these transaction records are bundled together and stored in a block. This payment information is called a ledger transaction that you store in an accounting ledger entry or spreadsheet. So basically, the transactions are getting recorded in a ledger. Now, like any book, a block too can store only so much. So new blocks have to be introduced or added to store more information and record more transactions. For your information, a Bitcoin block can store up to 1500 transactions in a single block. To add new blocks, you need to mine them. We will get to mining in a bit and how that works, but for now, you need to know that new blocks need to be mined and added to the network to continue recording new transactions. So now that we know what the block is in a blockchain, we need to know how the chain of blocks are developed. Each block is linked or connected to the previous block by a password, which is stored in the block. That is, block B will have the password of the previous block, that is block A, stored in it. This will link block B to block A. Block C will reference the address of block B using a unique password. This sequential series of references from one block to another develops into a chain of blocks or a chain of bunch of data. This is what is commonly referred to as a blockchain. This linkage mechanism actually ensures the security. Nobody can tamper with the data in the block. If anybody changes even one bit of the data in any of the blocks, then the password of that block changes and the connection with the next block is broken, as that next block has the old password stored in it for verification and validation. This implies that if any data, even a single bit of data in the entire blockchain is changed, then the entire blockchain becomes invalidated. This is what we refer to as the blockchain being data immutable. You may be interested to know that the first block in the blockchain is called the Genesis block. So we have learned that a blockchain is nothing but a chain of blocks which store data. Another important feature about the blockchain is that it is completely decentralized. That is, no one person keeps a record. All people participating in the network keep a record. Now for their effort, they are rewarded and paid a fee. So anybody can participate in creating blocks and maintaining and verifying transactions. Just about anyone. So it is decentralized, giving everybody equal authority and rights. No one computer or organization can own the chain.
since the ledger, which is just a chain of blocks or blockchain, as blocks hold nothing but data, is distributed and maintained by numerous computers or nodes. It is called a publicly distributed ledger. This is the basis of blockchain. Blockchain is a collection of records connected with each other. Please complete this module by viewing the other sessions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है क्रिप्टो करेंसी मिक्सर और साथ ही जानेंगे इसके उपयोग से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को किस तरह से हैंडल करना इजी हो जाता है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप सिक्के के कौन से पक्ष को अपने लिए चुन रहे हैं। ऐसा ही कुछ है क्रिप्टो करेंसी मिक्सर, जिसका इस्तेमाल अक्सर बड़े या फिर छोटे क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करने वाले बिजनेस पर्सन किया करते हैं। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस को पोथी यानी रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर पब्लिकली अवेलेबल है, जिससे बहुतों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, लेकिन जो सभी के नजरों में आए बिना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, उन्हें तरीका कतई भाता नहीं है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से प्राइवेट रखने का बेहद सिंपल तरीका है क्रिप्टो करेंसी मिक्सर। इसे टम्बलर के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसा टूल है जो इंटेंडेड रेसिपिएंट्स को कोई भी क्रिप्टो करेंसी देने से पहले प्राइवेट पूल्स में क्रिप्टो के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। यानी कि इसके पीछे का आइडिया यह है कि दाएं हाथ से काम करो और बाएं हाथ को पता भी न चले, जैसे क्रिप्टो करेंसी मिक्सर करता है। सबसे पहले यह एक नहीं बल्कि एक ही समय में कई लोगों से क्रिप्टो करेंसी लेता है, जिसे ब्लैक बॉक्स से शफल करने के बाद मिक्सर ही एक समय में कई लोगों को क्रिप्टो करेंसी देता है। यानी कि लेनदार भी मिक्सर और देनदार भी मिक्सर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि क्या है वो क्रिप्टो करेंसी मिक्सर के 3 फायदे, जिनकी मदद से आपको क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहला, क्रिप्टो करेंसी मिक्सर ट्रांजैक्शंस को एनोनिमस बनाते हुए उससे जुड़ी सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, जो कि ओपन ट्रांजैक्शंस के दौरान मुमकिन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी वॉलेट्स में मौजूद कॉइन्स के नंबर से लेकर यह सब ट्रेस कर सकता है कि कॉइन्स आखिर में आए कहां से है। और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को मिक्स किया जा सकता है। आज के दौर में बढ़ रही हैकिंग की घटनाओं के बीच आप मिक्सर के दूसरे फायदों को अब एंजॉय कर सकते हैं, यानी हैकर्स द्वारा आपके एसेट्स के मूवमेंट को फॉलो करना मिक्सर की वजह से नामुमकिन हो जाता है। वही तीसरा फायदा, कई देशों की करप्ट गवर्नमेंट की नजरों से बचाने में मिक्सर का बेहद मददगार होना है। आपके पास मौजूद कॉइन्स की वॉल्यूम के साथ कोई चाहकर भी आपकी पहचान नहीं कर पाएगा। हाल में एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन नेटवर्क पर हुई $625 मिलियन से ज्यादा की चोरी के बारे में कौन नहीं जानता, जिसके लिए यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लेजरस पर इल्जाम लगाया था। दरअसल उन्होंने इसे ट्रांसफर करने के लिए पॉपुलर इथेरियम मिक्सर टोर्नाडो कैश का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर उंगलियां उठने के बाद टोर्नाडो कैश ने यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC द्वारा सैंक्शन किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स को ब्लॉक करने के लिए कंप्लायंस फर्म चैनालिसिस द्वारा डेवलप एक टूल को ऐड कर लिया था। अब आगे बताते चले कि इसमें 2 तरह के मिक्सर्स हुआ करते हैं। पहला सेंट्रलाइज, जैसे blender.io, तो दूसरा है डिसेंट्रलाइज, जिसमें टोर्नाडो कैश, वैसे भी
और जॉइंट मार्केट जैसे मिक्सर्स होते हैं। अब डालते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स पर एक नजर। सेंट्रलाइज मिक्सर्स वो कंपनीज है जो आपके बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगी और फीस के लिए अलग अलग बिटकॉइन वापस भेजेगी। भले ही वो बिटकॉइन टम्बलिंग के लिए एक इजी सॉल्यूशन प्रदान करती है, लेकिन प्राइवेसी से जुड़ी मुश्किलें इसमें भी है। मिक्सर द्वारा की गई लेन देन की जानकारी पब्लिक नहीं होगी, लेकिन इससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड कंपनी के पास रहता है, जिसे कंपनी आने वाले भविष्य में कभी भी रिवील भी कर सकती है। वही डिसेंट्रलाइज्ड मिक्सर्स पीयर टू पीयर मिक्सिंग सर्विसेज है जो ज्यादा एडवांस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ये मिक्सर सेंट्रलाइज्ड मिक्सिंग की कमियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी कई लोग एक साथ आते हैं और एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपने कॉइन्स को जमा करते हैं और फिर कॉइन्स रैंडमली पूल के मेंबर्स को वापस किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्रिप्टो मिक्सर्स का विकल्प क्या है। अब ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के फ्लो को छिपाने के लिए क्रिप्टो मिक्सर की एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि कई बार ट्रेडर्स सस्ते में खरीदे गए या चोरी की गई आइडेंटिटीज के साथ बनाए गए अकाउंट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे एक्सचेंजेस के जरिए फंड्स को इस्तेमाल करते हैं। इस चालाक तरीके से बनाए गए मेथड को चेन हॉपिंग कहा जाता है। इसे अक्सर लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा एक्सचेंजेस को फोर्स कर बंद करवाना बेहद मुश्किल काम होता है। इसकी वजह यह भी है कि ये फेक अकाउंट्स नो योर कस्टमर यानी KYC प्रोसीजर्स को पास करने के बाद शुरू किए गए होते हैं। प्राइवेसी एडवोकेट्स का कहना है कि प्राइवेसी कॉइन्स जैसे तरीके सरकार को आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली रास्ते हैं। इस तरफ इशारा करते हुए कि इसका इस्तेमाल, जैसा कि लोग अंदाजा लगाया करते हैं कि वैसे सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ट्रेडर्स द्वारा भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी क्रिप्टो मिक्सर की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्रिप्टो की दुनिया की इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड्स लेकर मैं संदीप कसलगर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. With the power of now, NFTs and gaming, we present to you Sand. Okay, yes, sorry, today's coin is Sand. Coming from the land of virtual reality, it is one of the oldest companies in the blockchain's virtual world under the name of Pixowl that allows you to buy, sell and trade digital assets. Can you imagine that? It introduces blockchain to gaming and creates a metaverse where gamers and creators both are involved together to build and earn within the platform. It has attracted support from Atari, Helix and CryptoKitties. The highlight is it has gone up 12,975% in 2 years. The gaming industry is huge and metaverse, which may be the future, which equals to having a platform that revolves around creators and gamers that runs on decentralizations, NFTs and gaming with play to earn. It is in a very sweet spot. But the real question is, with all the partnerships, huge number of supporters and developers, Sand is in the megaverse of metaverses. Will it survive the long-term storm, retaining its gamers and creators on the platform, because Sand is not the only one? Will it slip off the gamer's hand or be the Sandman? Only time will tell. And until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins with Kunal. Smart contracts will let you exchange securely and transparently without a go-between. Smart contract is a software code that does something if a specific condition that is predefined is met. If this,
then that is the principle on which smart contracts operate. Most common smart contracts are written on the Ethereum network. For example, you could write a smart contract that if you buy 10 cricket bats from me, then 10 bitcoins will be added to your account. Two things that make smart contracts attractive for use are that they cannot change and they are immutable. Lots of times smart contracts outlive their purpose. Then a new smart contract can be created where it is mentioned that the previous one is no longer valid. Blockchain technology can be implemented based on different permission types. You could choose the blockchain type that best suits your business. You can go for permissioned or permissionless or even federated blockchains. Applying blockchain technology will ensure that your system becomes immutable. This will add another layer of security and make the overall system even more decentralized. Blockchains are effectively tamper-resistant unless a majority of the nodes agree on any specific change. Stay tuned for the next session to continue your learning. Many of us know that blockchain technology is a topic that is really hot at the moment. It is a topic that is surely very disruptive. Yes, everyone is talking about it. But in reality, how many really understand it? Yes, people in general know very little about this whole concept. Of course, this whole concept is relatively very new, and thus there is a lot of confusion and myths about the understanding of the whole subject. Many people really struggle to understand the concept of blockchain. Well, it's a quite techie topic after all. That's why visualization is involved to break down the abstract explanation. We will explain the complexity of blockchain technology in a very simple and viewer-friendly way. Our explainer course segment will not only help the layman to understand the concepts behind the product and technology, but will also attempt to simplify complicated industry-related jargons and make them easier to comprehend by streamlining the complex part of blockchain technology to an easily understandable format. At the end of this segment, you will certainly know a lot more about fundamentals of blockchain technology, how this new age technology works, why businesses should use blockchain technology, its decentralized function, and lots more. So let us begin. What is a blockchain? Is Bitcoin the same as blockchain? Or is it just another kind of a cryptocurrency? Blockchain is far more than cryptocurrency. And even though the terms are often used interchangeably, they aren't the same thing. A blockchain is best known as a general ledger, where cryptocurrency transactions are recorded. A blockchain is a software, a data structure that makes it possible to create a digital ledger or a spreadsheet in layman terms of transactions and share it among a distributed network of computers. A blockchain is a way of digitally documenting data on a distributed ledger. To explain this in simple English,
we rewind a little and break the term blockchain. We first understand what a block is. A block is nothing but a collection of data that can be anything. In Bitcoin currency terms, it is a collection of transaction records bundled together. That is transaction records like Vinita pays Sunita 100 rupees. Amrita pays Suprabhat 120 rupees. Aradhna pays Sheetal rupees 80. All these transaction records are bundled together and stored in a block. This payment information is called a ledger transaction that you store in an accounting ledger entry or spreadsheet. So basically, the transactions are getting recorded in a ledger. Now, like any book, a block too can store only so much. So new blocks have to be introduced or added to store more information and record more transactions. For your information, a Bitcoin block can store up to 1500 transactions in a single block. To add new blocks, you need to mine them. We will get to mining in a bit and how that works, but for now, you need to know that new blocks need to be mined and added to the network to continue recording new transactions. So now that we know what the block is in a blockchain, we need to know how the chain of blocks are developed. Each block is linked or connected to the previous block by a password, which is stored in the block. That is, block B will have the password of the previous block, that is block A, stored in it. This will link block B to block A. Block C will reference the address of block B using a unique password. This sequential series of references from one block to another develops into a chain of blocks or a chain of bunch of data. This is what is commonly referred to as a blockchain. This linkage mechanism actually ensures the security. Nobody can tamper with the data in the block. If anybody changes even one bit of the data in any of the blocks, then the password of that block changes and the connection with the next block is broken, as that next block has the old password stored in it for verification and validation. This implies that if any data, even a single bit of data in the entire blockchain is changed, then the entire blockchain becomes invalidated. This is what we refer to as the blockchain being data immutable. You may be interested to know that the first block in the blockchain is called the Genesis block. So we have learned that a blockchain is nothing but a chain of blocks which store data. Another important feature about the blockchain is that it is completely decentralized. That is, no one person keeps a record. All people participating in the network keep a record. Now for their effort, they are rewarded and paid a fee. So anybody can participate in creating blocks and maintaining and verifying transactions. Just about anyone. So it is decentralized, giving everybody equal authority and rights. No one computer or organization can own the chain. Since the ledger, which is just a chain of blocks or blockchain, as blocks hold nothing but data, is distributed and maintained by numerous computers or nodes. It is called a publicly distributed ledger. This is the basis of blockchain. Blockchain is a collection of records connected with each other. Please complete this module by viewing the other sessions. Hello everyone, today we are going to discuss cryptocurrency coins and digital tokens. Cryptocurrency has been around since 2008 but has only recently boomed. This new world of digital money is of intrigue to many people. Cryptocurrencies have been revolutionizing international payment systems and the global banking industry. However, most participants are scared to enter the rabbit hole of endless complexities. If you wish to be active in the crypto market or probably are starting to think of trading in this segment, then you should know the basics of cryptocurrencies. You need to learn before earn.
The more you learn about cryptocurrencies and its elements, the more informed decisions you can make. At the end of this session, you will have better understanding about the concepts and the foundation of cryptocurrency. So what are cryptocurrencies? Cryptocurrencies are digital or virtual currency that run on a software technology called blockchain. They do not require a central authority like a central bank or government and are immune to counterfeit, as all transactions are recorded on the blockchain ledger that many people have a copy of. Bitcoin reigns supreme and dominates the crypto market. Although it is only one of the many cryptocurrencies in the market, it currently accounts for a little over 40% of the market capitalization. But as late as 2 years ago, it accounted for over 50%. Now, together with Ethereum, the second biggest coin in terms of market capitalization, they account for over 60% of the market cap. So, if you know about these two coins alone, you have covered more than half of the market. Now let's start from the beginning. Money, gold, property are important assets only because they have value and you can trade them. First, it was gold that was valued. Then we moved to paper money, which is backed by the government's promise to stand as an assurer. It works because people trust the government. The government says that the Indian rupee has value, so it does become a fiat currency or a legal tender. The government or the central bank issues this currency, and it is therefore centered around that institution, so it is centralized. Additionally, it is unlimited. That is, the government can print as much as it wants to. Then, in 2009, Satoshi Nakamoto printed a document online titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. This white paper or concept note proposed a decentralized currency called Bitcoin. As we had discussed during our previous sessions, Bitcoin is a transparent, decentralized ledger. Anybody can look at the ledger and see all the transactions that are there on the blockchain. But the names of the transacting parties are not available. Only their public key is viewable. That makes this ledger pseudonymous. Further, there is no third-party interference, as it is not issued or controlled by any central bank or government. Cryptocurrencies are not issued by any one central bank, but are mined on a blockchain network. So, cryptocurrencies are global or borderless in nature. They can be used and held as digital asset across the globe. The only way Bitcoin can be generated is through mining. When a miner solves a mathematical problem, he gets rewarded with new Bitcoins. Blockchain is the underlying technology on which cryptocurrencies are built. Blockchain facilitates the creation and transfer of cryptocurrencies. It is not synonymous with cryptocurrencies. So, Bitcoin was released as the first cryptocurrency, and then came the other coins, altcoins or alternative coins. That is, all the coins other than Bitcoin. The word altcoin is a combination of alternative and coin to form altcoin. It actually refers to a group of cryptocurrencies, ultimately all the cryptocurrencies other than Bitcoin. In other words, an altcoin is an alternative digital currency to Bitcoin. There are over 16,000 cryptocurrencies as of January 2022. Some of the biggest names and most popular altcoins are Ethereum, Ripple, Solana, Cardano, Polkadot, Stellar, Dogecoin, Chainlink, and Binance Coin. Let us discuss the differences between cryptocurrency coins and digital tokens. Cryptocurrency coins are based on their own native blockchain and derive their value based on the inherent demand and supply from market participants. The value of crypto coins is primarily dependent on the structure of the blockchain technology, including the consensus algorithm protocol and mechanism for mining cryptocurrency coins. The blockchain protocol is based on the software architecture
and this largely determines the crypto coin prices. Coins are standardized in terms of their characteristics that are based on their host native blockchain technology. On the other hand, digital tokens are representation of an asset or a service. Tokens can be contrasted to coins in that they are created on an already established blockchain, such as Ethereum, to represent ownership of physical or digital assets, such as fractional ownership of a company, infrastructure, real estate, utility, or even a photograph or an image. The ownership of tokens is recorded in the blockchain, and such tokens can be traded on cryptocurrency exchanges. Tokens can be customized based on smart contracts and can be further developed for application across a variety of business requirements based on dApps, DeFi, DAO, and potentially using Web3 and Metaverse. The key benefits of tokenization of assets include creating liquidity for illiquid physical assets, tracking the ownership of assets using reliable blockchain technology that is data immutable, and allowing for smaller units of the assets for participation by a larger investor base. Stablecoins. Stablecoins are cryptocurrencies that are pegged to the price of another asset in order to minimize volatility while maintaining the benefits of a cryptocurrency. Stablecoins are digital currencies that are backed by assets such as fiat currency, other cryptocurrencies, or gold. Certain stablecoins also use a computer algorithm to keep their value comparatively stable. They refer to a class of cryptocurrencies whose purpose is to maintain a certain value, and they are typically pegged to the US dollar. These digital currencies have much lower volatility than other types of cryptocurrencies. Trading in stablecoins may not be like trading in other crypto coins. They are created to stay put in terms of value, which means that while they will not fall in value, they will not rise either. The most well-known stablecoin is Tether, whose price is tied to the US dollar. With Tether, users can transact or hold their assets in a cryptocurrency that has its value tied to the stable asset, that is, the US dollar. This stablecoin is used to park funds temporarily instead of converting the cryptocurrency investments back into fiat currency. By now, we have already understood that cryptocurrencies have different purposes. Utility tokens are based on expectations of obtaining some service or promotional offer. They offer a right to a service or product. A prime example of a utility token is a gift card or a public transportation ticket. Another example is a Uber token that is issued through an initial coin offering or ICO. Consider a hypothetical scenario. For example, a user buys Uber tokens using Bitcoins or Ether and subsequently uses them for ride sharing. He or she can even sell them at a later date based on the prevailing market price on crypto exchanges. Utility tokens are constructed using the smart contracts to represent the value assigned to them based on specific conditions. Some of the most popular utility tokens include Ether, which pays for computational power on the Ethereum blockchain; Ripple, that facilitates the transfer of any digital asset on the Ripple blockchain; EOS, similar to Ether, EOS is used to perform tasks on a decentralized network. Please complete this module by viewing the other sessions. Now let's find out what makes cryptocurrencies attractive. Cryptocurrencies have very low transaction cost. While transferring funds from your bank, you always pay the bank some transaction fee.
Then again, there is the trust element. We trust banks to conduct our business in full confidence. Yet, there are numerous instances of banks going kaput and long lines of aggrieved customers standing on the gates desperate to withdraw their own money. We also trust them with our sensitive data, although we know they use it internally for cross-selling. Cryptocurrencies are accessible 24/7 on all 365 calendar days. Banks have bank holidays that they follow, and you have to play by their rules and wait for them to open to carry out your transaction. In crypto, there is no limit to withdrawals, and also it is open to all. Another important issue to factor in is the speed of cross-border transactions. Banks take days, when in the crypto universe, it is in an instant. When you send money to someone, it goes directly to them, eliminating a middleman like a bank or a credit card company. Moreover, this transaction is broadcast to the entire network, keeping the names of the party anonymous and recorded in the distributed public ledger permanently. Now let's find out, how does a crypto transaction work? The core concept of cryptocurrencies is same as traditional finance. To give you a context, every bank keeps a ledger of the transactions made by their customers. In crypto, it is just one universal ledger or spreadsheet recording all transactions. Since everybody who is part of the network has a copy of this ledger or spreadsheet, it is decentralized and not held by one bank or entity. To give an example of how this works, when you buy something for say 1 Bitcoin, the shopkeeper will check if you have 1 Bitcoin on multiple ledgers, on multiple computers, and not just one bank. Only when a majority of computers or nodes in the blockchain network gives the go-ahead, your transaction will get recorded and updated on every ledger. So, tampering with a record or a block of data is not possible, as you have to do it on all the nodes on the network. Blockchain just organizes the ledger in a specific way using cryptography-based consensus algorithms. This is why people are excited about this new technology. People have FUD, which is fear, uncertainty, and doubt. And this is because of the volatility associated with cryptocurrency. Because they are a new asset class, they are volatile. So the returns are good when the coin is mooning, or they could plunge as much as 80% in a day. They are digital currency, and so nobody knows its true worth. Cryptocurrencies are not yet widely accepted as payment in most places. People are raising environmental concerns that they use a lot of electricity. The whole reason that this system is so secure is that it needs miners to complete mathematical problems, and transactions have been verified by many computers before being accepted. All this computing power and requirement eats up a lot of electricity. But at the same time, when you add up all the electricity and paper the banking system needs, it really is much more. Another misconception related to cryptocurrency is that it is a hub for criminal transactions. But according to market reports, only 0.34% of the transactions are criminal, while 5% traditional finance transactions are criminal. So, figures speak for themselves. Stay tuned for the next session to continue your learning. Now, to end the session, let's have a look and run through some of the most notable milestones of the journey of cryptocurrencies and how they evolved over the years. In 2008, Satoshi Nakamoto,
the mysterious designer of Bitcoin, published a white paper titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, based on the concept developed by Chinese author and computer engineer Wei Dai. In 1998, the paper outlined the fundamentals of blockchain and Bitcoin. In 2009, first Bitcoin transaction took place on the 12th of January when Nakamoto sent 10 Bitcoins to computer programmer Hal Finney. In 2010, Bitcoin is hacked for the first time on 15th of August, exposing vulnerabilities in the system. The same year, Bitcoin is attached to a monetary value for the first time when a user trades 10,000 coins for 2 pizzas. In 2011, rival cryptocurrencies Litecoin, Namecoin, and Swiftcoin emerge. In 2012, cryptocurrency exchange Coinbase launches services after being founded by former Airbnb engineer Brian Armstrong and former Goldman Sachs trader Fred Ehrsam. In 2013, various countries attempt to work out ways to deal with cryptocurrencies. Germany did not accept cryptos as official currency, but gave it a status of unit of account. Thailand banned Bitcoin, while China stopped financial institutions from using Bitcoins. Meanwhile, the first Bitcoin ATM was launched in Canada. In 2014, Japan-based cryptocurrency trading exchange Mt. Gox filed for bankruptcy. In the US, Microsoft permitted customers to buy games with digital currency. In 2015, Ethereum, the second largest currency by market capitalization in the crypto industry, emerged. European Bitcoin exchange Bitstamp gets hacked but resumed trading a few days later. By the end of 2016, 900 Bitcoin ATMs emerge. Uber started accepting payments in Bitcoin in Argentina. Swiss National Railway also starts accepting the currency. Smart contracts, a collection of code and data stored on the Ethereum blockchain, was developed. In 2017, Japan legalized Bitcoin, while Norway's Skandiabanken integrated Bitcoin accounts and recognized Bitcoin as an investment asset. In 2018, European government worked on cryptocurrency regulation. In 2021, El Salvador became the first country to accept Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Well, that was all about cryptocurrencies in details. We from Crypto University are extremely excited to present to you this curriculum. For more, keep watching all our content. Thank you very much. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. Metaverse will usher in a new era of digital connectivity, virtual reality experiences and e-commerce. Tech companies are betting big on it. So the Metaverse opens up transformative opportunities. But there are challenges to overcome before Metaverse can achieve a widespread, basically global adoption.
So to discuss these challenges and other aspects of Metaverse, we have invited Chief Metaverse Officer, Mr. Naveen Manasvi, who is the founder and CEO of WowXP, India's first Metaverse company. He is an author and a data scientist too. So welcome to 3.0 TV, sir. Thank you a lot, Vishaka. Thank you for having me on this platform. It's a pleasure to have you, sir. So Metaverse is the next generation of web, and big companies like Meta, Apple, they all are kind of in a race to conquer Metaverse. But Elon Musk, the CEO of Tesla and SpaceX, has stated that Metaverse is more of a marketing gimmick than a practical notion. And in the long term, a sophisticated Neuralink could put you fully into virtual reality. What are your views on the same? Okay, great question. I think Elon Musk has on view. He acquired a company called Neuralink. So that company is focusing on the brain-computer interface. So his idea is quite advanced. He say that people will implant one surgical kind of chip in the brain to have the better experience and all. So that I think he is far ahead. He is far ahead. He's thinking about 2040, I guess. And that's why he's trying to overlook the metaverse evolution right now. He's thinking that rather than wearing the devices all around your eyes, people will try to have a chip in the brain, and that brain will give you the feeling of some experiences. So I think he's quite futuristic, but he is underestimating the power of metaverse that is coming up to the help of Meta, Microsoft, many other companies on this planet. So all you want to say is that he's undermining the metaverse, basically. Yeah, I think he undermining because I think he's thinking about next phase, that is the brain-computer interface. So I think eventually metaverse will try to go into the mode of brain-computer interface. You can have something chip in your brain, and that will make you realize that you are in a showroom or mall, also event and all. So he is thinking one step ahead, I guess. But I think people will not try to adopt the chip in the brain because that has a lot of implications eventually. And I think it will take another decade to really accept any kind of chip in the brain. So I think he's thinking about devices wearing all these things can be not so fancy for people. That's why he said that rather than having the device around your eyes, let's have a chip in the brain. So I think it's all a game of perspective. I will not counter him in a very wrong way. I'll say that he is a much futuristic. Maybe that part will come after the metaverse evolution. So I wish him the best, but I think metaverse will work out. People want a better experience than the typical Web 2 experience. People will try to have a better 3D experience of the malls, events, all those classrooms, interactions, playing together in a game and all. They would like to have all those experiences, That is going to happen anyway. And maybe eventually, rather than having devices, you can have the brain chip in that game. It'll happen maybe after the metaverse evolutions, and that is what I think Mark Zuckerberg is pointing at. Exactly. So Mark Zuckerberg, he's trying his best to make his platform the best. And if we talk about Meta, so Vitalik Buterin says that Mark Zuckerberg's metaverse project will fail. So what are your views on Mark Zuckerberg's project and the criticism it is facing these days, of course, in terms of the selfie he shared recently? Okay, yeah. The Ethereum founder, I think he has on view. He believes in blockchain and decentralization a lot. And what Meta is doing, what Microsoft is doing is they are trying to create centralized metaverse where Meta will control the assets and a lot of environment and all. So I think Ethereum founder is pointing at the direction of the decentralization. So metaverse as an idea, as a 3D immersive mode, that he is not against, I guess. The Ethereum founder is not against the idea of the 3D immersive mode. What he against is the idea of centralization that Meta is promoting right now. So I think he is not countering exactly in the way we think right now. Meta and Microsoft, they are trying to create their own metaverse, and they want to control system in a big way, right? And on the other hand, like Decentraland and Sandbox, they are trying to create the decentralized system. So that can be supported by the Ethereum founder, obviously, because that is more about decentralized style and all. But in that way, saying that if you compare Meta
on Microsoft with and compare with this with the Sandbox and Decentraland, he is supporting the Sandbox and Decentraland because they are focusing on the decentralized way of handling stuff. I can on the goods, and we can really exchange the goods and all these things virtually in decentralized way, and the Meta is trying to create their own central game, own central control. They will only allow you to buy, sell. So they want to become central force in the game. At that aspect, he is challenging the Meta, and he's not wrong. He's saying that keyword Meta is trying to project VR origin workrooms where he can control the system. He's trying to challenge all the centralized system of the Meta. Is challenging that. He's saying that I think decentralization is the way forward, and but in terms of the 3D immersive way, I don't think he denies the fact. He is accepting that. Only from the angle of decentralization, he is challenging the Meta. Right. So as you spoke about decentralization and the other metaverse platforms like Sandbox, so how do you think blockchain, cryptocurrencies and NFTs will kind of shape the metaverse in future? Okay, great question. See, eventually we will stay in metaverse. We can have a 3D villas, houses. We can go to the offices. We can go to clubs, gyms, and all. Eventually, the way we live in city right now, we can live in a metaverse city also for some hours every day. So we can have all those experiences. So eventually, we want to buy tables, chairs, our own sofa, our own thing, and all. So we'll try to have all these things. That will be done through the decentralized way. I can make some furniture, I can sell to you. Okay, so the idea of this is once we start spending time in the metaverse, we start owning some stuff, we start buying, selling the stuff and all. That time blockchain, smart contract can play a very big role, and eventually after that the cryptocurrency can play the role where you can attach the cryptocurrency in this smart contract. So I think it will go phase by. I feel personally, no matter what, first metaverse will really happen. People will accept in a good way, and then the smart contract blockchain will take place to really manage, buy and sell transparently, all this all set and all. And then after that, they will option of the fiat currency and the cryptocurrency. So people will try to move in both way, fiat as well as the cryptocurrencies, and both will flourish eventually. True. So you explained it very well, and as you mentioned that people will kind of accept it or adopt it in a very good way. So with India adopting a hard stance on blockchain and cryptocurrencies, do you think the world's second biggest democracy is conducive place for growth of metaverse in contrast to countries such as Dubai, Germany or US? Yeah, good question. See, there are two things. Cryptocurrency, like all this Bitcoin, Ethercoin and other coins, that is one part. The government has not decided on all those coins, and they are not so much aggressive on that. That is true. Dubai and other countries are aggressive on that. That is fact. Okay. With regard to blockchain, our government is not so against about that, or neither against nor favoring that part. So blockchain will flourish anywhere in India. Smart contract will flourish in India anyway. So metaverse also is not, India is not against the metaverse at all. India is not against the 3D immersive experience and all. Only part that is clear that India is not accepting the crypto coins. Okay. India is not aggressive about crypto coins. Dubai is taking it seriously. But with regard to blockchain and the metaverse, like 3D experiences, I think government is supporting in a way, not too much, but supporting in a way. They are supporting the company. Company can do the business, run the business and all. But yeah, in terms of the funding and all, Dubai is funding everything. Dubai government is funding everything in a one go. India is not funding, but India is supporting them, except cryptocurrency. True. So since you mentioned about the Dubai government and the funding process, so Dubai is kind of in a race to become the center of or the hub of metaverse, with a country having its own metaverse strategy going on. So where do you see Dubai in the next 5 years in terms of metaverse, of course? Yeah, great. So Dubai vision is awesome, really impressive. Now the government is really started working in this direction.
Now, next couple of years, we have to see how government is really taking the help of tech companies. They have vision in their mind, they have business plan in their mind at first year. Now the idea of only implementations. So how much they support tech company to come and start business in Dubai, how much they fund those tech company, how much they support in terms of tax and everything else. So based on lot of initiatives in terms of implementations, Dubai will flourish. Okay, so Dubai will flourish a lot when the tech company can come to Dubai and start implementing the metaverse strategy and metaverse work and all. So I think there are many things which are to be answered by government of Dubai. Dubai business plan is there, Dubai vision is there, but I think in terms of tech implementations, Dubai government is still not that much ahead in terms of getting the tech company in Dubai and implementing it. I hope that government will really try to give a lot of incentive to tech company like us and help us to start big in Dubai and Abu Dhabi, and India should try to learn from Dubai in this way. In next 5 years, Dubai can reach as the metaverse hub of the world if they really get those tech company in the system. So if not first company in the world, maybe in top 10 they must be there. So Dubai UAE country can be in top 10 country in the world in terms of metaverse hub. I can see right now top 10, top 5, top 3 based on their implementations, but they must be in the top 10 in any way. So, since you mentioned about your company also, so you claim that WowXP is India's first metaverse. Can you share details on user base, projects, and maybe other commercial data on your project, including the investments and tie-ups? Okay, great. So WowXP has built India's first metaverse product. So we are not typical service company the way many Indian company do in the market. We built India's first metaverse meeting platform, where people can meet together, work together in office environment. They can use the whiteboard. They can use the slideshow. They can have a 3D content showing in the boardroom also. They can have boardroom meeting as well. So we have built India's first meeting platform in VR in university mode. We have built India's first VR city, metaverse city, where you can have complete towers, showrooms, events, and all. Not cartoonish way of Decentraland and the Sandbox. Is it actual realistic experience of the city, but you have to wear the VR device. So this we have built India's first VR city and the VR meeting platforms. In terms of users, India doesn't have much of VR users in India. We don't have much users unlike US and all. India doesn't have the 1 lakh or 10 lakh users of the VR devices. So that's why we don't have that kind of system, but we are the company that launched this kind of cities and the platform. We have onboarded a lot of big companies, largest company of India in the systems. We are having the presence in the market in the big companies in terms of all metaverse product and all. We are not in the web version of the game, which Meta Sandbox and Decentraland are doing right now. They have some customer base. They have some kind of people who are coming on a laptop, on a browser and all. We are into the typical VR setup. We are the first because we have built the first city, first product in terms of meeting and all. So I think not user base is the number 2 in terms of tie-up. We have done tie-up with a lot of big companies. We have got some investment from a lot of HNIs, a lot of good investors, I can say. We are about to raise some good fund in just next 2 months. We are almost signing now. So yeah, that's the status of the company right now. So I saw one LinkedIn post of yours. Are you planning to write a book on metaverse? Oh my God, it's a secret. I think I don't want to reveal the secret. Yes, it's a secret. Okay. Since I am in love with metaverse and I think people are curious about metaverse, I thought, why not express myself in the book, So I was thinking about which kind of thing can excite people. So I thought maybe how the world would be in coming time, like society would be in metaverse, how industry would be in metaverse era and all, how the metaverse applications can be used in the market and all. So I was thinking about taking the opinions from the public, which kind of topic they want to read about metaverse, and based on that feedback, I would
start writing the book. You got that. I think you got the idea. So hopefully, I will launch the book within 6 months or 9 months and put in the public domain. So best wishes to you. Thank you. So there are several you. challenges which comes along. According to Intel, developing metaverse at scale and making it accessible to billions of people in real time will necessitate a 1,000-fold boost in computational efficiency over what we have now. So when and how do you think will we achieve this scale, and what are going to be the challenges? I think there are a lot of things I can say. So Intel is focusing on the chip. And now, since the 3D content is all about high quality stuff, you need to have a lot of polygons. Polygon rendering has to happen and all. So it needs very hi-fi, GPUs and CPUs and chips and all these things. So Intel is right in a way that we need to produce a lot of hi-fi devices and all. And NVIDIA is challenging that. NVIDIA is trying to lead this market. NVIDIA is very aggressive. Its CEO is very aggressive about chip production and all. I think they are trying to change game at 2 levels. One is the chip design and all. They want to create very hi-fi chips. Okay, Qualcomm is doing the same stuff, and also they're trying to work on the computation part. The way we render something to the device, they want to optimize that. Example, with the same RAM, they can render more stuff. So NVIDIA is really leading this market at both level, hardware plus software, hardware plus the AI part. So eventually I think there could be a big market for everyone, including Intel, Qualcomm, NVIDIA, and all are aggressive about this one. All are contributing in their own way. In next 5 years, I think we can really create huge devices the way we have created the mobile phones in last 10 years. We'll create a lot of devices very fast. Everyone is contributing now. So I'm hoping that we can have at least 1 billion target maybe in next 5 years or 6 years. Next 1 billion devices, VR devices, with help of all this Intel, Qualcomm, NVIDIA. So since you mentioned that in the next 5 years we are going to make great devices, so there are some critical issues involved too, whether it is cyber security, identity theft, or if we talk about data security, then compliance and vigilance, and of course network vulnerability. So how do you tackle these issues? Okay, great. Yeah, this issue of cyber security and all those security, they are like old problems, which was there in the Web 2 as well. So we have been solving through many ways, like 2-layer, 3-layer, multi-layer kind of things and all. There are many ways to handle that. So the old problems still reside in the Web 3 as well. So we are solving the problem as usual. We are going to the next level of our high level kind of security and all. So we are almost there. Whatever we have achieved in Web 2 in cybersecurity, we are implementing the same stuff also in Web 3 also. Now we will have more data. We have more types of data as well. So in Web 3, in the metaverse, we will have more data and more types of data, but the DNA of cybersecurity is same. So we are solving in the same manner. I can say that we are trying to increase our power of cybersecurity kind of thing. We are trying to understand more variety of data which are coming in this metaverse also. So we are trying to use our old technology, old way of cybersecurity. I can say that it should be double layer, triple layer. It should have a lot of control on the uses and all. So we are trying to use the same logic now on more data and more types of data in metaverse. So we are also doing the same stuff. We are leveraging the cloud like AWS, Google Cloud as well. We are trying to leverage their security layer as well. We are trying to put our data in a way that is more, risk averse and all. So I think this is an old problem. We are just trying to solve in the same manner, not any much different in this Web3 game. So you're on the way of doing so. All right, so thank you so much, sir, for being on 3.0 TV and sharing your views and knowledge with our viewers. It was really great having you on the show. Thank you a lot. I mean, it was a very nice discussion. You put very, very nice questions in front of me.
It's one of the most exciting interviews I have seen. I have faced more than 12, 13 interviews on this metaverse, but your interview has very interesting questions. Thank you so much. Keep working in a good way and keep democratizing metaverse. Sure, sir. Thank you so much, and it really means a lot. Thank you. Thank you a lot. So this was Mr. Naveen Manasvi, founder and CEO of WowXP, India's first metaverse company. He gave us an insight to metaverse and its various aspects. We will be back soon with more such interviews. Till then, keep watching 3.0 TV and do not forget to subscribe, like and share to our channel. And for instant updates, do press the bell icon. This is Vishakha signing off. दोस्तों आज हम जानेंगे क्रिप्टो और एनएफटीज में किस प्रकार से वॉच ट्रेडिंग होती है। तो ब्लू हॉर्स टू लव्स एनाकॉट स्टिल, माइकल डॉगलस की 1987 फिल्म वॉल स्ट्रीट का ये फ्रेज ओवर टाइम बिकेम सिनोनिमस विद इनसाइडर ट्रेडिंग। आप कहेंगे इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग तो स्टॉक मार्केट में होती है और ये क्रिप्टो चैनल है, देन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट? वेल, आज हम क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के चचेरे भाई वॉच ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, ये हाईली रेगुलेटेड है विद वेल डिफाइंड रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। वही क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस अभी इमर्जिंग मार्केट है, डिसेंट्रलाइज है, इस वजह से अथॉरिटीज आर फिगरिंग आउट द रेगुलेशंस एज दे गो अलोंग। ऐसे में वॉच ट्रेडिंग जैसी अनइथिकल प्रैक्टिसेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि क्रिप्टो स्पेस में आने वाले न्यू ट्रेडर्स और प्लेयर्स इसके शिकंजे से बच सके। चलिए समझाते हैं आखिर वॉच ट्रेडिंग क्या है। वॉच ट्रेडिंग एक प्रकार की मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे सरल शब्दों में गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म हसीना मान जाएगी के डायलॉग से समझाया जा सकता है। फिल्म में परेश रावल कहते हैं, जो चाचाई वही भतीजाई, जो भतीजाई वही चाचाई, और चाचा कोई नहीं है साहब जी। नहीं समझे? Well, let me know, make it easier. वॉच ट्रेडिंग में जो बायर है वही सेलर है और जो सेलर है वही बायर है और बायर कोई है ही नहीं। मतलब वॉच ट्रेडिंग की अनइथिकल प्रैक्टिस में चाहे ट्रेड क्रिप्टो का हो, स्टॉक का हो या एनएफटीज का, ट्रेडर या इन्वेस्टर सेम एसेट को खुद ही बेचकर खुद ही खरीद ले या फिर सेलर की बायर के साथ मिली भगत हो, जिसे एसेट की प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी को आर्टिफिशियली बढ़ाकर बिना किसी डिमांड के उस एसेट की हवा बनाई जाए, इसी अनइथिकल प्रैक्टिस को ही कहते हैं वॉच ट्रेडिंग। तो आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वॉच ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जनरली वॉच ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर फॉल्स सेल्स और परचेस ऑर्डर्स बनाकर नकली मार्केट इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि मैनिपुलेटर फेक सेल ऑर्डर्स बनाकर और इसे खुद खरीदकर किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक के आसपास फॉल्स हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में वॉच ट्रेडिंग में दो पार्टीज के बीच टकराव हो सकता है, जहां सेलर एक नई लिस्टिंग पोस्ट करता है और एक प्री डिटरमाइंड परचेसर एक नया ऑर्डर जनरेट करता है। जब फेक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो सेलर सीक्रेटली परचेस ऑर्डर का सभी या अधिकतर अमाउंट वापस कर देता है। मार्केट ऑब्जर्वर्स और ट्रेडिंग पॉपुलेशन के लिए ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए अभी भी सेल्स और परचेस ऑर्डर्स हो रहे हैं जो झूठे तरीकों से इसकी मांग बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक हाथ दे एक हाथ ले की अनइथिकल वॉच ट्रेडिंग टेक्निक में वेयर इज द मुनाफा? फॉल्स हाइप क्रिएट करके फायदा कहां, किसको और कैसे होता है? तो ओपन मार्केट में सेल्फ ओन असेट खरीदने से वॉच ट्रेडर्स को तुरंत मुनाफे में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हालांकि इस टेक्निक से वे खुद को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेल इन्वेस्टर मार्केट वैल्यू के हिसाब से $10 के असेट के खिलाफ फेक $50 परचेस ऑर्डर पोस्ट करता है जो उसके पास है। इस मामले में फेक ऑर्डर पोस्टर को अपने झूठे ऑर्डर के लिए अपनी जेब से ही भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह का ट्रांजैक्शन करके वॉच ट्रेडर पर्टिकुलर एसेट क्लास के आसपास आर्टिफिशियल हाइप बना सकता है जिसे फेक ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया था।
एक्सपेंसिव परचेस के कारण दूसरे मार्केट ट्रेडर्स के बीच स्पेकुलेशन के आधार पर एसेट क्लास की वैल्यू को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाता है। वॉच ट्रेडर इस आर्टिफिशियल हाइप का लाभ उठाएगा और उसी एसेट के अपने बचे हुए हिस्से को मैसिव रिटर्न के लिए बेच देगा। दूसरी ओर टेम्पररी प्राइस हाइक के दौरान उस हाइप एसेट क्लास को खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को अंततः नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्यादातर मामलों में वॉच ट्रेडिंग और अन्य मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स स्पेकुलेशन और एग्रेंडाइजिंग के आधार पर एसेट क्लास के मार्केट वैल्यू को हाइप करने का प्रयास करती है। इसके अलावा वॉच ट्रेडिंग आर्टिफिशियल मार्केट एक्टिविटी को प्रेरित करके और ऑर्गेनिक डेटा को एम्बेजल करके टेक्निक मार्केट एनालिस्ट को भी थ्रो ऑफ कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में वॉच ट्रेडिंग लीगल है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है विद क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके तहत वॉच ट्रेडिंग इलीगल है और पकड़े जाने पर वॉच ट्रेडर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। वही क्रिप्टो करेंसीज की नींव ही डिसेंट्रलाइजेशन पर टिकी हुई है। यही देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट इट। पिछले एक दशक में इमर्ज हुई इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हर कोई कंट्री अपने हिसाब से धीरे धीरे रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। So as of now, क्रिप्टो करेंसी डोमेन में वॉच ट्रेडिंग एक अनइथिकल, अनफेयर, मैनिपुलेटिव मार्केट टेक्निक है, बट अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन के अभाव के कारण ये टेक्निकली इलीगल नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो के बाद अगर हम नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज की बात करें तो ये सेक्टर वॉच ट्रेडिंग का हब बन गया है। मोस्टली एनएफटीज फाइन आर्ट्स का कैरियर होने के लिए फेमस है और आर्ट पर कोई लिमिट तो होती नहीं। कोई भी आर्ट पीस कितनी भी कीमत का बेचा या खरीदा जा सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर वॉच ट्रेडर्स एनएफटीज पर अपना निशाना साधे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो पंक 9998 एनएफटी को 124,457.07 ETH यानी $532 मिलियन की प्राइस पर एलिजिडली बेची गई थी। आप सोचेंगे कि एक पिक्सेलेटेड डिजिटल पिक्चर के लिए कोई ओवर $500,000 कैसे स्पेंड कर सकता है? तो दोस्तों, हुआ यूं कि क्रिप्टो पंक 9998 एनएफटी सेल के बाद सेलर ने $532 मिलियन वैल्यू के 124,457 ईथर बायर को वापस दे दिए। सो एनएफटी में बायर और सेलर की इसी सांठगांठ को ही तो वॉच ट्रेडिंग कहते हैं। चैनलिस्ट्स के डेटा के अनुसार 2021 और 2022 के बीच एनएफटी मार्केट एक्टिविटी $350 मिलियन से बढ़कर $40 बिलियन हो गई, जो इस सेक्टर में मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स में डेंजरस इंक्रीज को इंडिकेट करती है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एनएफटी में वॉच ट्रेडिंग कैसे होती है। कई एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी पहचान के बिना अपने वॉलेट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़कर ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक यूजर एक प्लेटफॉर्म पर कई वॉलेट बना और लिंक कर सकता है। इट मींस एक यूजर एनएफटी ट्रेड के दोनों साइड्स को कंट्रोल कर सकता है। एनएफटी को एक वॉलेट से बेचकर और दूसरे से खरीद सकता है। जब ऐसे कई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि एसेट ज्यादा डिमांड में है। कुछ वॉच ट्रेडर्स तो अपने सेल्फ कंट्रोल वॉलेट्स के जरिए सैकड़ों ट्रांजैक्शंस करने की हद तक चले गए हैं। अब अगर लीगैलिटी की बात करें तो क्रिप्टो की तरह एनएफटी भी इमर्जिंग एसेट क्लास है और एनएफटी से जुड़ी वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस अभी तक लीगल इन्फोर्समेंट का विषय नहीं बना हुआ है। हालांकि यह बदल सकता है क्योंकि रेगुलेटर्स का ध्यान अब एनएफटी सेक्टर पर फोकस हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में मौजूदा एंटी फ्रॉड अथॉरिटीज एनएफटी मार्केटप्लेस की अनइथिकल वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस को स्टॉक मार्केट की तरह इलीगल घोषित कर दे। जब तक रेगुलेटर्स क्रिप्टो और एनएफटीज में वॉच ट्रेडिंग को इलीगल घोषित नहीं कर देते, तब तक आपको और हमें वॉच ट्रेडर्स के जाल से बच कर रहना बेहद जरूरी है। किसी भी हाइप पर ब्लाइंडली बिलीव करके ट्रेड करने से पहले यह जरूर देखें कि कहीं बायर और सेलर की सांठगांठ तो नहीं। क्या इस पर्टिकुलर एसेट का राइज जेन्युइन है या इसे आर्टिफिशियली हाइप अप किया गया है? सो लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमारो, जहां क्रिप्टो और एनएफटी स्पेस में वॉच ट्रेडिंग जैसी अनइथिकल और अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस बिल्कुल नाबूद हो जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसारगर फिर आपसे मिलूंगा।
एनएफटी की दुनिया में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। एनएफटी सेल्स के अकॉर्डिंग पॉपुलर ब्लॉकचेन्स की रैंकिंग में बड़ा फेरबदल हुआ है। अब तक नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज इथेरियम का ताज छिनता दिख रहा है। अब तक कभी नंबर 2 तो कभी नंबर 3 या 4 के बीच झूल रही सोलाना ने एकाएक सिक्सर लगा दिया है। जी हाँ, फिलहाल तो सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, लेकिन सोलाना ने नंबर 1 के ताज का स्वाद चख लिया है। कहीं ये ना हो कि सोलाना को जीत का ऐसा चस्का लगे कि फिर कभी इथेरियम नंबर 1 के टाइटल की तरफ दोबारा देख भी ना सके। ये तो हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से इथेरियम पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार गिर रही है, तो वहीं सोलाना पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये तो किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि दोनों के बीच गैप खत्म हो जाएगा और सोलाना इथेरियम को मात दे देगी। चलिए, महज 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन मई के महीने में सोलाना एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में इथेरियम से आगे निकल गई। सोलाना पर एनएफटी सेकेंडरी मार्केट सेल्स थी $24.3 मिलियन, तो वहीं इथेरियम ने क्रॉस ऑल मार्केट प्लेसेस जो वो ट्रैक करती है उस पर $24 मिलियन सेल्स दर्ज की। माना जीत का मार्जिन कम है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि महज एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस जीत से सोलाना ने साबित कर दिया कि वो ऑफिशियल इथेरियम किलर साबित हो सकती है। क्रिप्टो स्लैम के मुताबिक उन 24 घंटों के दौरान सोलाना की सेल्स पहले के मुकाबले 436% हायर थी। वैसे सोलाना को एक खुशी हासिल हुई ट्रिपिंग एप ट्राइब के एनएफटी लॉन्च की बदौलत। मैजिक ईडन पर लॉन्च हुई ये एनएफटी इथेरियम पर मौजूद पॉपुलर बोर्ड एप की तरह प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट है। सोलाना पर दर्ज की गई $24.3 मिलियन की टोटल ट्रेडिंग सेल में से अकेले ट्रिपिंग एप ट्राइब ने $14.5 मिलियन की सेल जुटाई। ऐसे में सोलाना और इथेरियम दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई भी एनएफटी प्रोजेक्ट ट्रिपिंग एप ट्राइब की सेल के आसपास भी नहीं था। रनर अप थी इथेरियम पर मौजूद बोर्ड एप यॉट क्लब एनएफटी, और वो भी महज $3.5 मिलियन सेल ही जुटा पाई। यानी विनर और रनर अप एनएफटी के बीच ही $11.5 मिलियन का गैप था। वैसे ट्रिपिंग एप ट्राइब पहली एनएफटी नहीं है जिससे सोलाना को इथेरियम पर बढ़त दिलाई है। ट्रिपिंग एप ट्राइब के सक्सेस से महज एक महीने पहले यानी अप्रैल में ओके बेयर्स ने भी सोलाना को नंबर 1 का खिताब दिलाया था। यानी पिछले 6 महीनों में सोलाना 2 बार इथेरियम से आगे निकलकर नंबर 1 की पोजीशन पर रही है। ओके बेयर्स मैजिक ईडन पर लॉन्च हुआ एक प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें 10,000 यूनिक अवतार्स हैं, जो 1.5 सोल के मिंट प्राइस के साथ लॉन्च हुई थी। तब ओके बेयर्स ने सेकेंडरी ट्रेडिंग में $18.5 मिलियन जुटाए, और ये आंकड़ा सिर्फ ओपन सी से कंपैरिजन में नहीं बल्कि ओवरऑल तमाम प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले हाईएस्ट था। वैसे पिछले कुछ महीनों में समीकरण काफी बदल गए हैं। सोलाना के एनएफटी प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि सोलाना पर मौजूद एनएफटी मार्केटप्लेस भी इथेरियम की टॉप एनएफटी मार्केटप्लेस को मात दे रही है। जी हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी को सोलाना बेस्ड एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक ईडन ने वीकली यूजर्स और ट्रांजैक्शंस दोनों के मामले में हरा दिया है। डैपरेडर के वीकली डेटा के मुताबिक मई के एक हफ्ते में मैजिक ईडन पर रफली 275,000 डेली ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें परचेजेस, बिड्स और लिस्टिंग सब शामिल थी। तो वहीं ओपनसी पर सिर्फ 50,000 ट्रांजैक्शंस दर्ज हुई। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट सम्राट किशोर से, जो इथेरियम अलायंस के रीजनल हेड हैं और बेसलाइन प्रोटोकॉल के को चेयरमैन। If you were to ask me why layer 2s are important today, the answer is they help us package transactions and then roll up to Ethereum. So there's a concept called roll-ups, super relevant to be hosted on or to be run on Solana than on Ethereum. So for example, if applications need really high speeds, if I have an NFT and I'm issuing that NFT as an invite, then I can't have a person walking into an event and waiting for 15 seconds or 30 minutes for the transaction to get validated and spending gas fee on Ethereum just to validate their entry, right? So for those reasons, I think Solana sold beautifully because their transaction speeds are higher and their gas fee is very, very low. Platforms, for example, Solana has done a good job on organizing hackathons and giving out grants for people to migrate over to the Solana platform. So I think look at it more like a Pareto analysis. You will see there will be a lot of people who will move around
right? But eventually the projects who survive this whole crash, they're the ones who are going to choose the right chains for themselves. तो जाहिर है इथेरियम की हार और सोलाना की जीत के पीछे एक बड़ी वजह सोलाना पर बेहद कम ट्रांजैक्शन फीस और स्पीड है, जिसके चलते NFTs को लिस्ट, अनलिस्ट और उनके लिए बिड करना बहुत अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि OpenSea पर एक इथेरियम बेस्ड NFT के लिए $30 चुकाने होते हैं, तो वहीं सोलाना पर ट्रांजैक्शन फीस 1 सेंट से भी कम है। तो वहीं 30 डेज की यूसेज स्टैट भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। OpenSea पर टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेडर्स 1% डाउन थी, जबकि मैजिक ईडन ने 316% इंक्रीज देखा। पिछले साल लॉन्च हुई मैजिक ईडन मार्केटप्लेस अब तक $736 मिलियन की टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज करके सोलाना पर सबसे बड़ी NFT मार्केटप्लेस बन चुकी है। इस ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए OpenSea ने रिसेंटली सोलाना NFTs को सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन अभी उसे सोलाना पर मार्केट शेयर बनाने में वक्त लगेगा। वहीं मैजिक ईडन की बल्क सेल्स वॉल्यूम सोलाना पर है, लेकिन वो सोलाना नेटिव की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रही है, जहां उसके बायर्स डीगॉड्स और ऑरोरी जैसे NFT प्रोजेक्ट्स के नेटिव टोकन्स में ट्रांजैक्ट कर सके। महज 2 दिन इथेरियम से ज्यादा डेली ट्रेडिंग सेल्स दर्ज करके सोलाना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि जीत की लड़ाई सोलाना के लिए काफी लंबी है और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि सोलाना और इथेरियम के बीच गैप नहीं, बड़ी खाई है। ऊपर से बार-बार सोलाना पर हो रही आउटेज की दिक्कत भी सोलाना को अपने लक्ष्य से दूर कर रही है। आई होप ये स्टोरी आपको काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग क्रिप्टो टीवी। Why businesses should use the blockchain technology? Several corporate and financial institutions across various industry sectors are currently applying blockchain technology across different functional processes. The major benefit of deploying blockchain technology include but are not limited to increasing efficiency, decreasing cost, fraud reduction, increased security, record keeping, improved transparency, disintermediation by eliminating third party, higher privacy, deployment of smart contracts. After the global financial credit crisis of the year 2008, borrowing and lending suffered largely due to the increase in credit risk perception at the institutional level as well as for retail. Transaction costs for the transfer of funds are typically high in the traditional interbank market for cross-border transactions. It was at this juncture that a fintech innovation in blockchain technology captured the world's attention. The advent of blockchain technology and its use for developing crypto assets, more commonly referred to as cryptocurrencies, provided a mechanism for peer-to-peer transactions that completely bypasses the traditional banking channels. This has transformed not only the way international financial transactions are conducted, but also enabled businesses to apply the innovative blockchain technology for various applications. These include and are not limited to education, healthcare, manufacturing, supply chain management, logistics, marketing, real estate, financial services such as insurance, and many other applications. Sectors apart from technology with promising job prospects for blockchain specialists are banking. The banking industry has seen a quick adoption of the blockchain technology across the world. This is because banks have been early adopters through pilot projects to determine the use of cryptocurrency payments for ease of cross-border transactions among several banks. One such project is the Ripple XRP, which is a real-time gross settlement system, currency exchange, and remittance network to transfer funds. Over 100 banks have signed up to use Ripple in the 2018, but mostly the use is restricted to the messaging protocol.
Nevertheless, it is a start and there is immense potential for use of blockchain technology in the banking industry. Finance. The finance industry has several applications of blockchain technology for P2P lending and borrowing and use of the underlying technology for recording financial transactions. Smart contracts, DApps and DeFi are set to change the way in which business is conducted by the finance companies. Accounting. Blockchain technology itself is a ledger that is an accounting concept. If accounts are recorded on a blockchain, then audit becomes easier and even eliminates the major requirements to audit the accounts in detail because the blockchain itself is immutable. This also eliminates recording the data in multiple databases. Insurance. Smart contracts are being used to automate the settlement of insurance claims. For example, the weather insurance for crops is being automated to pay out the sum assured in the event of the temperature breaching a specific threshold. Information technology. The use of blockchain technology by the IT industry is for the purpose of research and development as well as implementation across multiple functions. Healthcare. Blockchain technology has been used by several organizations to automate the recording and tracking and retrieval of patient records. Education. Certificates stored on the blockchain have sanctity in terms of genuineness by way of easy tracking for authenticity. Retail, supply chain management, logistics. Provenance is the largest application of blockchain technology, whereby goods can be tracked for their origin. Legal. Blockchain technology can be used to archive the entire legal cases history for the last several decades or centuries to track specific case history. Real estate. Land records can be automated using blockchain technology. Government and central bank. The public sector and the government in general have commenced using blockchain technology on pilot basis for various requirements. This also includes CBDC. Cryptocurrency is one of the use cases of blockchain, the most popular use case actually. Stay tuned for the next session to continue your learning. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जून की दुनिया सिर्फ और सिर्फ रियल वर्ल्ड में ही मौजूद नहीं है, बल्कि इंटरनेट के ट्रेंड में आने के साथ ये साइबर क्राइम के अपने रूप में सभी को बेहद प्रभावित कर रही है। लेकिन इन सब से एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे बढ़ते हुए क्राइम ने मेटावर्स की दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में किस तरह की है ये इसके रूप और कौन से है जुर्म और इन पर लागू होने वाले लॉज पर चलिए डालते हैं एक नजर। ऐसे में मेटावर्स में हुए क्राइम और उनसे जुड़े लॉ पर बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं मेटावर्स की एक्चुअल क्राइम पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों, लोगों के बीच मेटावर्स को लेकर बढ़ते क्रेज की वजह से क्रिमिनोलॉजी को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से क्रिमिनोलॉजी के नजरिए से मेटावर्स को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिसमें इंटरनेट पर मौजूद क्राइम से लेकर डेविएंट बिहेवियर के इफेक्ट और रियल लाइफ में पड़ते इसके असर है। अब बात करते हैं किस तरह से मेटावर्स में अपराध हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मेटावर्स में लाइफ ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, वैसे वैसे क्राइम का लेवल भी तेजी से बढ़ता जाएगा। इस तरह से हमें साइबर ट्रेसपासिंग, डिसेप्शन, वायलेंस, ऑब्ससेनिटी और हैरेसमेंट के साथ यूजर ऑन यूजर क्राइम्स के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन क्राइम्स में नया क्या है, बल्कि ये तो पहले से ही इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मेटावर्स की दुनिया में कंटिन्यूड नहीं होगी, और यही सभी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि मेटावर्स की दुनिया असल दुनिया का एहसास दिलाती है, जहां हम अपनी मौजूदगी को अलग अलग तरह से देख पाते हैं।
ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि पहले से ही मेटावर्स में सेक्सुअल असॉल्ट्स की खबरें आ चुकी है और तभी से ही इसे लेकर डिबेट्स शुरू हो चुकी है। जैसे क्या किसी के अवतार के साथ हुई छेड़छाड़ को एक्चुअल मॉलेस्टेशन माना जा सकता है? क्या ये एक तरह का ओवर रिएक्शन है और फिर हमें असल में मेटावर्स को अपने जिंदगी के एक्सटेंशन के रूप में अपनाना चाहिए और साथ ही मेटावर्स में की गई चीजों को क्राइम माना जाना चाहिए अगर वे रियल वर्ल्ड में क्राइम है? सदियों पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मेटावर्स के साथ भी ऐसा ही है। जहां कई मेटावर्स से जुड़ी पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो कई इससे जुड़ी नेगेटिव साइड पर ज्यादा जोर देना पसंद करते हैं। इस तरह से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो रेगुलेशंस का ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो चीज है जो सभी को लॉस के टॉपिक पर लेकर आ रही है जिन्हें मेटावर्स में डिफाइन किया जाना है। मेटावर्स में हुई क्राइम्स पर नजर डालें तो अब तक कई महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन की खबरें आ चुकी हैं जिसमें 21 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं भी शामिल है। तो एग्जांपल्स के तौर पे बात करें तो पिछले साल दिसंबर में मेटावर्स पर रिसर्च कंडक्ट करने वाली साइकोथेरापिस्ट नीना जैन पटेल को मेटा के वर्चुअल रियलिटी स्पेस हॉरिजॉन्स वर्ल्ड में गैंग रेप का झंझोर देने वाले अनुभव से गुजरना पड़ा था। नीना ने अपने इस भयानक अनुभव के बारे में बताते हुए लिखा कि शामिल होने के सिर्फ 60 सेकंड के भीतर मुझे 3 से 4 आदमियों द्वारा वर्बली और सेक्सुअली हैरास किया गया था और मेरे अवतार के साथ वर्चुअली गैंग रेप भी किया गया और फोटोज भी ली गई। भले ही अब तक सिर्फ रेप को ध्यान में रखते हुए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ यूएई के उमर सुल्तान अल उलामा मिनिस्टर की ये मांग है कि वर्चुअल स्पेस में हुए मर्डर को रियल वर्ल्ड में हुए क्राइम की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सोचिए, अगर रियल क्राइम की तरह ही वर्चुअल क्राइम को भी देखा और दंडित किया जाने लगे तो इसका नतीजा क्या होगा? मतलब क्या असल में क्रिमिनल को रियल वर्ल्ड में पनिश किया जाएगा या फिर वर्चुअल वर्ल्ड में ही इसके लिए कोई नया ऑप्शन बनाया जाएगा, जो कि सभी के लिए अपने आप में बेहद टेढ़ा और सोचने वाला सवाल है। अब देखते हैं साइबर क्राइम के लिए मेटावर्स किस तरह से एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। मेटावर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल की जा रही हर एक टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ यूनिकनेस तो रिस्क भी लाती है। इन कंपोनेंट्स को अलग कंपनीज द्वारा ओन और मैनेज किया जाता है, जिनकी हिस्ट्री, फ्रीक्वेंट वल्नरेबिलिटीज और डिजाइन एक्सपोजर्स की जा रही है। तो ये डेफिनेटली इंटीग्रेटेड मेटा वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। हम अवतार्स के थ्रू इंटरैक्शन के नेचर के कारण मेटावर्स के एक डार्क वेब वर्जन के इवोल्यूशन की भी उम्मीद करते हैं। जी हाँ, डार्क वेब एक एनोनिमस वर्ल्ड है जहां लोग अनमैप वर्चुअल आइडेंटिटीज के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ कोई भी किसी की भी रियल आइडेंटिटी को जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी एक दूसरे से कमर्शियली और पर्सनली एंगेज होने के लिए तैयार होते हैं। मेटावर्स डीएनए डार्क वेब के लिए बहुत सूटेबल है और इसके लिए हम इसे एक रियल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, मेटावर्स का डार्क वेब वर्जन भी मेटावर्स के रियल वर्ल्ड वर्जन की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो अब एक नजर डालते हैं क्रिमिनोलॉजी रिसर्च की ओर। मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में कोई भी क्रिएटिव हो सकता है और मोर पैसिवली अपने स्पेयर टाइम और ट्रैवल को एंजॉय कर सकता है या सिर्फ आर्टिस्टिक या इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सब के बीच क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि कोई भी इंडिविजुअल डेविएंट बिहेवियर कर सकता है और इस तरह के दूसरे इंडिविजुअल अवतार्स या यूजर्स या कुल मिलाकर पूरी वर्चुअल कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वो सोशली डैमेजिंग बिहेवियर है जिसे क्रिमिनल के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। सोशल वर्चुअल दुनिया क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च के लिए अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज को सामने ला रही है। इतना ही नहीं, सेकंड लाइफ यानी मेटावर्स एक तरह का सोशल लैबोरेटरी है जो ह्यूमन राइट के ग्राउंड्स पर रियल वर्ल्ड में मुमकिन नहीं होगा। अब देखते हैं मेटावर्स में क्राइम मेजर करने के लिए किस तरह की समस्याएं आ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मेटावर्स की दुनिया में नंबर ऑफ क्राइम्स को मेजर करना बेहद ही मुश्किल है। रियल वर्ल्ड में क्राइम स्टैटिस्टिक्स हमें क्राइम्स के एक्सटेंट और डेवलपमेंट का एक रफ आइडिया देते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए एक अनअवॉइडेबल ग्राउंड बनाते हैं और ये वो चीज है जो वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। अब जानते हैं सोशल इंजीनियरिंग आधारित हमले और क्राइम्स के बारे में। तो मेटावर्स क्रिमिनल्स और हैकर्स के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, खासकर तब जब ये सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं। यानी कोई भी विश्वास जमा कर अपने एक्शन से लोगों को आसानी से ट्रिक कर सकता है।
एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को ही ले लीजिए, जहां किसी को भी किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखने का मौका मिलता है। ऐसे में यह बहुत मुश्किल है कि कोई उसे नजरअंदाज कर सके, वो भी तब जब वो फिजिकली सामने मौजूद हो। ऐसे में मेटावर्स इसके मुकाबले मोर रियल टाइम एंड मच फास्टर है। अब जानते हैं मेटावर्स के प्राइवेसी के बारे में। तो एक सिंपल ब्राउजर कुकी हमारे बारे में इतना कुछ बताती है कि हम इसके बारे में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। वैसे भी टेक्नोलॉजी कभी कभी डरावनी लगने लगती है। एड्स जिनके बारे में हमने सिर्फ कभी बात किया होता है, वो अचानक हमारे सामने होते हैं। यानी साफ है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पर असर डाला है और प्राइवेसी धीरे धीरे खत्म होने लगी है, तो इमेजिन कीजिए कि क्या होगा जब लाइफ पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। तो मेटावर्स की दुनिया में एक या दो बड़ी टेक कंपनीज के हाथों में नेसेसरीली मेटावर्स की कमान है और यही चीजें उन्हें आपके डेटा का मालिक बनाने जा रही है। लेकिन क्या रियल है और क्या मेटावर्स इनके बीच का डिफरेंस उलझा हुआ हो सकता है? लेकिन जब बात प्राइवेसी की आती है तब यह बिल्कुल सही नहीं है। इन सब से बचने के लिए हमारी होप सिर्फ लीगल रिकोर्स ही है। तो ऐसे में से जुड़े लॉज के बारे में जानने के लिए करें क्राइम इन द मेटावर्स के अगले पार्ट का इंतजार। तब तक के लिए बने रहिए और लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। दिवाली पर हर कोई रंगोली बनाकर अपने घर की साज सजावट में चार चांद लगाता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर पर धन संपत्ति की वर्षा की कामना करता है। लेकिन ये 21वीं सदी है जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। इस वेब 3.0 की दुनिया में आर्टिस्ट डिजिटल रंगोली बना रहे हैं, जिस पर हो रही है धन की ऐसी बेहिसाब बरसात कि क्या कहने। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? वेल, मैं बात कर रही हूँ NFTs की, जिसे डिजिटल रंगोली या पेंटिंग कहूं तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस पर कैसे लक्ष्मी जी मेहरबान हो रही है, जरा आप भी देखिए। प्रेजेंटिंग टू यू द टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs सो फार। नंबर 1 पर है NFT मर्ज। सबसे महंगी NFT का ताज फ्लॉन्ट कर रही इस NFT के सेल्स फिगर सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस NFT पर इतनी दौलत लुटाई गई है जिसमें बंगला, गाड़ी, हीरो का हार, ना जाने क्या क्या आ जाता। लेकिन खरीदने वाले ने चुनी बस एक डिजिटल पिक्चर। खैर, आर्ट के कदरदान अजब होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। वैसे ये NFT एक सिंगल पीस नहीं बल्कि फ्रैगमेंटेड आर्ट है। इसके टोटल 321,686 पीसेस थे, जिन्हें ओन किया 28,983 बायर्स ने। इसे क्रिएट किया है एक रेनाउंड आर्टिस्ट ने जिसका सुडोनिम पार्क है। यह आर्ट निफ्टी गेटवे पर 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2021 के बीच बेचा गया। और अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसने $91.8 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल की। वूहू, isn't that crazy? मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs की लिस्ट में दूसरा नाम है बीपल का। इस नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं ही, वो भी क्यों ना। NFT मर्ज के लॉन्च से पहले बीपल के आर्ट एवरीडेज 5000 ने 9 से 10 महीनों तक हाईएस्ट NFT सेल्स का टाइटल संभाल रखा था। बीपल का यह आर्ट उनके 5000 आर्ट पीसेस का कंपाइलेशन है, जो उन्होंने 2007 से लेकर 2020 के बीच लगातार 5000 दिनों में बनाया, यानी हर एक दिन एक आर्ट कंप्लीट किया। उनका ये आर्ट ऑक्शन हुआ था क्रिस्टीज पर 11 मार्च 2021 को फॉर $69 मिलियन। ऑफ कोर्स उस वक्त ये NFT की दुनिया का हाईएस्ट सेल्स अमाउंट था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और रातों रात बीपल सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बन गए। इसके बाद भी बीपल के कई आर्ट्स ने काफी हाई सेल्स बटोरी हैं। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 के पायदान पर है फेब 2022 में लॉन्च हुई NFT क्लॉक, जिसने $52.7 मिलियन सेल्स के साथ हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाला है इस NFT का टॉपिक। दरअसल विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज इराक अफगानिस्तान वॉर्स की सीक्रेट फाइल पब्लिश करने के जुर्म में कई सालों से जेल में सजा काट रहे हैं। ऐसे में उनके लीगल केस के लिए पैसे जुटाने के लिए ये NFT तैयार की गई थी
और ये NFT महज एक काउंटर है जो जेल में बीत रहे उनके दिनों को डिस्प्ले करता है। नंबर 4 पर एक बार फिर से है NFT स्टार बीपल, जिनके पहले फिजिकल आर्ट ह्यूमन 1 ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये आर्ट पीस अपने आप में काफी नायाब है, जिसमें एल्यूमिनियम और महागनी वुड से बने एक ह्यूमन साइज एस्ट्रोनॉट को एक ग्लास बॉक्स में रखा गया और उसे मूवमेंट भी दी गई। इसके चारों तरफ वॉल्स पर LED स्क्रीन्स लगाई गई, जिसमें लगातार वीडियोस प्ले होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीपल ने इस आर्ट पीस के बायर से इन LED स्क्रीन्स पर प्ले हो रहे वीडियोस को लाइफ लॉन्ग चेंज करते रहने का कमिटमेंट भी किया है। बीपल के इस अनोखे आर्ट ने $28.9 मिलियन की कलेक्शन की थी। मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs की फहरिस्त में अगला नाम है क्रिप्टोपंक्स का। वैसे तो क्रिप्टोपंक्स को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं क्रिप्टोपंक्स 10,000 टोकन्स का असॉर्टमेंट है, जिन्हें पंक्स कहा जाता है। ये कलेक्टिबल कैरेक्टर्स हैं, सिमिलर टू एक्सचेंज कार्ड्स। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 13 फरवरी 2022 को क्रिप्टोपंक्स #5822 8000 ETH यानी कि $23.7 मिलियन की भारी रकम पर बिका। ये अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला क्रिप्टोपंक है। इसके बाद तो क्रिप्टोपंक्स ने जैसे कामयाबी की लाइन ही लगा दी। इस लिस्ट में लगातार 5th, 6th और 7th पोजीशन पर क्रिप्टोपंक्स का ही कब्जा है। छठे पायदान पर है क्रिप्टोपंक #7523, जिसे $11.7 मिलियन के लिए ड्राफ्ट किंग्स ने खरीदा। जून 2021 को कोविड एलियन नाम के इस पंक को लंदन के ऑक्शन हाउस सदबी पर ऑक्शन किया गया, जो कई डिस्टिंक्टिव फीचर्स के साथ एक नायाब पंक है। 7वें पायदान पर भी क्रिप्टो पंक का ही कब्जा है और ये पंक भी एलियन पंक्स की सीरीज में से ही एक है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पंक ने 2017 में $76 के साथ शुरुआत की। धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ी, फिर ये काफी समय तक $2 मिलियन पर कायम रहा। फिर एकाएक 11 मार्च 2021 को $7.58 मिलियन के हेवी प्राइस पर बिका। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने 2011 में बिटकॉइन खरीदा हो या फिर 1970s में एप्पल में इन्वेस्ट किया हो और धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टमेंट कुबेर का खजाना बन गई। खैर, 8वीं पोजीशन पर है राइट क्लिक सेव एज गाय। हैरान हो गए ना कि भला ये कैसा नाम है? वेल, इस नाम को समझने के लिए आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी। बेसिकली NFT क्रिटिक्स के बीच राइट क्लिक सेव एज एक जोक बन गया था कि जिस चीज को सिर्फ राइट क्लिक करके सेव किया जा सकता है और अपना बनाया जा सकता है, उसके लिए भला कोई लाखों क्यों खर्चेगा? लेकिन इस बात को गलत साबित करते हुए रैपर स्नूप डॉग ने एक कदम आगे बढ़कर मिलियंस खर्च के इस पॉपुलर NFT को $7.09 मिलियन में खरीदा। भाई वाह, क्या बात है। 9th पोजीशन पर है रिंगर्स, जो कि रैंडमली जनरेटेड डिजिटल आर्टवर्क की कलेक्शन है, क्रिएटेड बाय दिमित्री चर्नियाक। इस कलेक्शन का सबसे महंगा पीस है रिंगर्स #109, जो करीब $7 मिलियन में बिका। वैसे रिंगर्स कलेक्शन अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि इस आर्ट ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट एल्गोरिथम बनाते हैं, ना कि आर्ट, और एल्गोरिथम आर्ट बनाती है। बीपल कितना बड़ा रिनाउंड और सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs की लिस्ट में बीपल के 3 आर्ट पीस शामिल हैं। ओशन फ्रंट पीस एक बेहद खूबसूरत आर्ट पीस है जो $6 मिलियन में बिका और इस अमाउंट का अच्छा खासा हिस्सा बीपल ने चैरिटी में दे दिया है। वैसे चैरिटी करना बनता भी है। जब आप पर पैसों की ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो क्यों ना कुछ जरूरतमंदों पर आप भी मेहरबान हो जाएं। होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मैं संदीप कसलकर। ब्लॉकचेन और पर्यावरण एपिसोड के पार्ट 1 में हमने बात की उन कुछ पर्यावरणीय गेम चेंजेस के बारे में जो ब्लॉकचेन की दुनिया में मौजूद है। ऐसे में अब इसे आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे पार्ट में हम आज कुछ चुनिंदा इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पर्यावरण में हो रहे बदलाव को टैकल कर रहे हैं। तो आइए डालते हैं इन पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं पावर लेजर के बारे में।
ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पावर लेजर ब्लॉकचेन में मौजूद पावर का एक बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जनरेशन को अनलॉक करने की अपनी क्षमता की वजह से बेहद रोमांचक भी है। यह सिस्टम एक ऐसे मार्केट प्लेस के रूप में फंक्शन करता है, यानी जिनके छतों पर सोलर पैनल्स है उन्हें प्रोज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स प्लस प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इस तरह से वो अपने पड़ोसियों को एक्सेस एनर्जी भी बेच सकते हैं, जबकि इससे उलट ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम्स सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन पर निर्भर होने के साथ फिक्स प्राइसेस के साथ आते हैं, जिनकी देखरेख लार्ज यूटिलिटी कंपनीज द्वारा की जाती है। इसमें रियल टाइम में प्राइसेस को सेट करना और ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस को लागू करना भी शामिल है। इस तरह से यह सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं और स्टेट्स को अनसस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सीडाओ के बारे में। स्पेन बेस्ड फ्लेक्सीडाओ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक सक्सेसफुल लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म है। एनर्जी सोर्स ट्रेसिंग का करंट सिस्टम सर्टिफिकेट्स पर डिपेंड करता है, जो R/R ग्रिड की फिजिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे में फ्लेक्सीडाओ इन्हीं प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए सर्टिफिकेशन ट्रांसपेरेंट है, डिटेल और रियल टाइम में काम भी कर रहे हैं। इस इनोवेशन को अच्छी तरह से रिसीव किया गया है और फ्लेक्सीडाओ ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट और वोडाफोन जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब जानते हैं मॉस अर्थ के बारे में। ब्राजीलियन मॉस अर्थ ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन सर्टिफिकेट्स की ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की गारंटी देकर कार्बन ऑफसेटिंग प्रोसेस को सिंपल बनाया है। मॉस ने स्मॉल फॉरेस्ट एरियाज में गवर्नेंस और इकोनॉमिक राइट्स को NFTs में टोकनाइज किया है। इसलिए इंडिविजुअल्स और कंपनीज मॉस के जरिए अमेज़न NFT खरीद सकते हैं और जंगल के एक टुकड़े को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मॉस ने कार्बन क्रेडिट्स को MCO2 टोकन में शामिल किया है, जो कॉइनबेस, जेमिनी और यूनिस्वैप जैसे कुछ सबसे बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। अब बात करते हैं सन एक्सचेंज के बारे में। साउथ अफ्रीका बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप सन एक्सचेंज इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी शख्स को ऑनलाइन सोलर पैनल्स खरीदने और उन्हें अफ्रीका में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिजनेसेस और दूसरे कंपनीज को रेंट पर लेने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, सन एक्सचेंज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को करने के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। इस तरह से ये इन्वेस्टर्स और बेनिफिशियर्स के बीच किसी भी पोटेंशियल इंटरमीडिएट्स को एलिमिनेट कर देता है। इस ऐप के एडवांटेज और सोलर पैनल परचेस में आसानी से दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों ने अपनी एनर्जी कॉस्ट में लगभग 30% की कमी लाई है। DLT टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सप्लाई चेन के लिए ब्लॉकचेन सबसे महत्वपूर्ण इस सवाल में से एक है। ऐसे में DLT टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए आइडियल है और सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंट बनाकर इनएफिशिएंसी और वेस्ट को रोकने में मदद करती है। DLT टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स को बेहतर तरीके से सूचित करने की अनुमति देती है कि प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया और शिप किया गया है। इससे किसी को भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइसेस करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंट बनाने पर केंद्रित है। यह एक पब्लिक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जिससे डेवलपर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टिसिपेंट्स को कई मार्केट्स में अपनी रजिस्ट्री, लेजर और एक्सचेंज कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए मटेरियल बिजनेस बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। रिसाइकलिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक क्षेत्र जहां ब्लॉकचेन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है, वो रिसाइकलिंग है। ब्लॉकचेन पर रिसाइकलिंग प्रोग्राम को लागू करके ऑर्गेनाइजेशंस क्रिप्टोग्राफिक टोकन के रूप में लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये प्लास्टिक के कैंस, बॉटल्स, कंटेनर्स आदि जैसे रिसाइक्लेबल्स चीजों के डिपॉजिट करने के बदले में हो सकता है। ये कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट जैसे एसेंशियल डेटा को ट्रैक करने में मदद करता है और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले किसी इंडिविजुअल या कंपनी के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने में भी मदद करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनीज एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने की दिशा में काम कर रही है जो समुद्र के प्लास्टिक को मोनेटाइज करने में मदद कर सकता है। यह कंपनी तीसरी दुनिया के देशों में सक्सेसफुली कलेक्शन सेंटर्स को सेट करके अपनी सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के जरिए प्लास्टिक को करेंसी में बदल देती है। इस तरह से लोगों को कैश बेनिफिट्स, फोन चार्जिंग करने और बहुत से अलग अलग इंसेंटिव्स के बदले इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को डिपॉजिट करने की अनुमति देता है। ऑर्गेनाइजेशंस अब एक
ब्लॉकचेन पावर्ड एप्लीकेशन पर काम कर रहा है जो यूजर्स को क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स के लिए प्लास्टिक एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। तो ये रही आपके और हमारे बेहतर भविष्य के लिए ब्लॉकचेन की मदद से की जाने वाली तैयारी। ऐसे ही ब्लॉकचेन और इन्वायरमेंट की तरह दूसरे क्रिप्टो स्पेस के जुड़ी अन्य खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए। With celebrities like Salman Khan recently launching India's own social token Gari, mainstream media is taking stock of the new era of tokenized communities. But what is the entire buzz around social tokens? And what makes these tokens valuable? Let's find out. So what are social tokens? Social tokens are a type of cryptocurrency that a brand, community or influencer can use to monetize themselves beyond the typical means. Many influencers, celebrities and businesses these days use social media or other media streams to monetize their skills or services. Typically, in such scenarios, the medium or platform that they use, for instance, Facebook or Instagram, shares the revenue and exerts artistic control on their content. Social tokens are of two types: personal or creator tokens and community tokens. These tokens are decentralized and secured by blockchain. They are constructed on the same model as common cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum. Personal or creator tokens are created by individuals to exchange form of labor. These individuals are usually public personalities like entrepreneurs or artists. Community tokens are created as a means to gain access to a community. These are similar to membership cards but based on the blockchain. But how are they different from NFTs? NFTs are a part of the broad category of social tokens. The basic difference between social tokens and NFTs is the fungibility factor. NFT, as the name suggests, is non-fungible and each of its unit is unique. Social tokens, on the other hand, are fungible. Each unit of a social token has the same value as another, just like a currency or cryptocurrency such as Bitcoin or Ether. So each Bitcoin will be the same in value as the other, and so it is easily interchangeable. In case of NFTs, however, one painting, for example, will have the same value as another and is not easily tradable. This makes them unique. Put simply, social tokens provide the same benefits, privileges, rights to the piece of artwork or music to all investors invested in them. NFT owners, on the other hand, have unique rights to a particular piece of a creator's work. So how do social tokens work? A talented singer, comedian or social media influencer can easily form a community of loyal followers. Here lies the opportunity for such content creators to launch their own social token where relevant content can be shared with their followers. Besides, celebrities can use social tokens as a gatekeeping mechanism by offering premium access to content only for their largest token holders. Let's understand with an example. If you have faith that a particular artist's work will garner more following in the coming years, you can buy the token issued by them early on. Each new token that the artist issues will typically be at a higher value than the previous one. The value of your token rises as the community grows and more tokens are issued. So what are the benefits of social tokens? Social tokens have better incentives than just conventional reward point schemes that airlines, hotels, and credit cards companies offer. Since social tokens are built over blockchain, it is impossible for fraudulent transactions when it comes to token ownership. This will help brands create an ecosystem for their businesses where only genuine fans or consumers are expected to participate in transactional experiences.
Fans can redeem tokens by treating them as an investment, and creators can eventually take distributions to augment their income. With a lot of buzz around the next level of the internet, Web 3.0 is all about connecting creators and consumers directly. Social tokens will become a significant feature on this next wave. Social tokens will allow content creators to engage with their fans more closely than ever before. They will also give creators more control over the revenue from their work. Social tokens as digital assets are already starting to play a crucial role in the creator ecosystem with the widespread adoption among crypto artists and celebrities. We are currently witnessing an explosion of different kinds of experiments. As the technology undergoes continuous evolution, social tokens will be accepted by larger communities such as large publishers or online communities built around products or brands. But there are a few risks involved also. Token value depends on a creator's ongoing content production. Failing to deliver would be professional suicide. Anecdotal accounts show that influencers can suffer psychological harm from the stress of constantly providing content. Will creators burn out? Will fear of fan disapproval restrain artists from experimenting with new creative directions? Financially, the major risk is regulation. Several legal grey areas exist for something as novel as social tokens, ranging from concerns about false advertisements to broad liability issues. But these risks can be managed. After centuries of starving artists, rewarding creators directly for their work is a crucial step towards supporting creativity. There is much opportunity in this space as it continues to be shaped by creators and innovators. Hope you found this story interesting. This is Ruchi Sharma signing off. How does a blockchain work? New transactions are broadcast to all nodes. Each node collects new transactions into a block. Each node works on finding a solution to a difficult-to-solve cryptographic puzzle. When a node finds a solution to this cryptographic puzzle, then it broadcasts the new block to all nodes on the blockchain network. The other nodes verify the solution provided and accept the block to validate it. Nodes express their acceptance of the block by working on creating the next block in the chain using the hash of the accepted block as the previous hash. Blockchain needs a few elements to function. It requires a peer-to-peer network, which is nothing but a network of computers connected to each other. Each of these computers is called a node. Each computer or node has the same rights and responsibilities. Any computer can become a node, emphasizing the decentralization. This connection also allows for sharing of information
remotely. Cryptography secures the blockchain, thereby allowing a participant to verify transactions and messages. A consensus algorithm? Yes, a very big term sounding very technical. But this is nothing but all nodes or computers agreeing to rule on adding a block to the blockchain. Some of the most common consensus algorithm rules are proof of work and proof of stake, which we shall discuss in greater detail subsequently. All nodes follow a set of rules to reach a consensus. All nodes that add new blocks and maintain the records are given rewards for their contribution to the blockchain. This reward is in the form of a cryptocurrency. So let's dive deep into nodes and their functionality. Nodes are computers connected to the peer-to-peer network. They are the points where data is stored and processed and also perform various other functions such as verification, validation, addition of transactions to blocks, and addition of blocks to the blockchain. Now, the next thing we want to talk about is proof of work and its very best alternative, proof of stake, and whole idea of blockchain consensus mechanism. Proof of work involves a huge consumption of energy by highly specialized processors called ASIC chips that do the number crunching for solving the cryptographic puzzle by crypto miners who operate the nodes. This leaves a large carbon footprint due to the power consumption. On the other hand, proof of stake is gradually gaining acceptance. This mechanism allocates block to miners based on the proportion of the number of cryptocurrencies held instead of raw computation power like proof of work. This is expected to ease the demand for electricity. There are various other types of consensus mechanism such as proof of activity, delegated proof of stake, proof of capacity, proof of elapsed time, proof of identity, and proof of authority as illustrated in the table. Now to turn for a quick brief on the various layers of blockchain. Blockchain are built on layers. Layer 1 is the foundation on which the project is developed. This is the mainnet, the grounding. It has all the essential characteristics of a blockchain network. It is distributed, immutable, decentralized, public, and scalable. The Bitcoin blockchain follows the proof of work consensus algorithm. This is a system in which miners operate and decrypt mathematical problems to mine a block as well as validate and verify transactions. Another concept that has emerged is the proof of stake, which is less resource or energy intensive. Here nodes or computers validate transactions based on their stake in the network. To build on the blockchain network came the layer 2, which sits on top of layer 1 network. This ensures that the blockchain overcomes scaling issues and increases speed of transactions, thus reducing cost. Although the speed of transactions on Ethereum is faster than that of Bitcoin blockchain, it is far slower than numerous others. Both these blockchain networks are working on the layer 2 developments. Lightning Network for Bitcoin and Layer 2 network for Ethereum. On the Ethereum network, dApps will get a major boost on Layer 2 network. Let us discuss a couple of real-life examples of blockchain's concept of decentralization and distribution. Let us take an example of a group of 10 women who meet for a kitty party each month. Assume that they pool together 1,000 rupees. A lucky draw is conducted in which one member wins the total sum of 1,000 rupees each month. The caveat being the winner of each month's kitty party is ineligible to become the winner in the subsequent month's kitty party. But all members are still required to attend the forthcoming month's kitty parties and contribute to the corpus. In such a social group, trust among members is of paramount importance. There is no central authority to enforce the rules of kitty parties. It is simply based on trust reposed by all the women in the social group. Let us take another example of a teacher grading the exam of students, because all students' grades are awarded by a single teacher. This is similar to a centralized authority who issues grades.
Now let us assume that all students obtain the right to view the grades of the other students. Then this would involve a consensus among all students on the grades awarded to the specific student. But what is the incentive for other students to award grades? The other students would be paid a transaction fees for awarding the grade. Next, let's introduce the fact the blockchain is immutable. To do so, let's dive into the pieces that make up a blockchain. The validated block that is included in the blockchain cannot be removed easily due to the password that interconnects all the blocks, as we had discussed earlier, thereby ensuring data integrity. This password is also referred to as a hash. The connection between the blocks is often called a linked list of hash table. The encryption of the entire data is generated using cryptographic algorithms. Each validated block that is added to the blockchain hashes its transaction data along with the hash created in the previous block, thereby generating a new hash altogether. This process is repeated for subsequent blocks that are created to form the blockchain. Now the key question arises as to how all these nodes unanimously agree on the validation and verification of the encrypted database. That is, how is a consensus reached among so many computers? This is possible through a decentralized mechanism whereby only when a majority of nodes have consensus on the validity of specific transaction data that is received, then only would the validated block be included to form a part of the blockchain. Stay tuned for the next session to continue your learning. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some racks to build it with stacks, because I know the stats and a hodler say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history, and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal. We will keep you connected to the evolving world of NFT. For accurate and latest updates of cryptocurrency markets and global regulations. Metaverse and Web3. 3.0 TV covers the latest crypto crimes. Keeps you updated about the global crypto events and exhibitions. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। इस खास शो में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, फैंस के बीच मैंने प्यार किया का फ्रेंड कैप हो या कुछ कुछ होता है के डायलॉग से लेकर चुलबुल पांडे के स्टाइल में कॉलर के पीछे चश्मा रखने तक का ट्रेंड, इन सभी को सेट करने वाला बॉलीवुड जब किसी और ट्रेंड को फॉलो करने लगे तो क्या कहेंगे? इस बार ट्रेंड सेटर ही किसी और ट्रेंड का फैन हो चला है
जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तेजी से बदल रहे मेटावर्स और एनएफटी की दुनिया को फॉलो ही नहीं, एडॉप्ट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। सबसे पहले इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने एनएफटी की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद यश, प्रभास, अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक सभी मेगा स्टार्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा मां होती है। यह सुपरहिट डायलॉग सभी के जुबान पर लाने वाले रॉकी भाई यानी साउथ सुपरस्टार यश स्टारर केजीएफ का दर्शकों के सिर से खुमार अब तक उतरा नहीं है। वही एक्टर की केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज होने के बाद सभी का एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। इन सबके बीच प्रशांत नील द्वारा रिटर्न और डायरेक्ट की गई इस फिल्म के मेकर्स ने उनके मेटावर्स की दुनिया केजीएफ वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ फैंस अपने पसंदीदा रॉकी भाई की दुनिया में जाकर हर एक चीज को बेहद करीब से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो क्या बात है दोस्तों, फ्रेंचाइजी ने फैंस से मिले प्यार के बदले केजीएफ वर्स नाम के एक डिजिटल अवतार बेस्ड यूनिवर्स को बनाया है। मेकर्स का कहना है कि यह उनके सभी फैंस को डेडिकेटेड है, जहां वो सभी फैंस ग्रुप्स को वर्चुअल इन्वायरमेंट और गेम की एक सीरीज बनाने के सक्षम बना रहे हैं। साथ ही साथ केजीएफ के डाई हार्ड फैंस एल डोराडो उसका टोकन हासिल करने के साथ एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा तक बन सकते हैं। यहां उन्हें फिल्म से अवतार्स, प्रॉप्स, लैंड पासेस और दूसरे मोमेंटो का एक्सेस हासिल होगा। इन सब के अलावा मेंबर्स को दूसरे एनएफटीज, सरप्राइज एयर ड्रॉप्स के साथ फिल्म के इन पर्सन इवेंट्स तक को अटेंड करने का मौका मिलेगा। बाहुबली जैसे दमदारी नहीं बल्कि यादगार फिल्म देने वाले फिल्म मेकर एसएस राजमौली का क्या कहना। हाल ही में रिलीज हुई जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर मैग्नम ओपस पीरियड ड्रामा आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में मल्टीप्लेक्स चैन पीवीआर सिनेमा ने फिल्म को लेकर दर्शकों के क्रेज को देखते हुए रिलीज के साथ ही एक्सक्लूसिव एनएफटी कलेक्शन पीवीआरआरआर को डीवीवी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ये सुपर डुपर हिट डायलॉग बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार का नाम इस लिस्ट में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको बता दें कि सुपरस्टार अक्षय कुमार और यंग एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ की भी आने वाली पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल लैंड खरीदकर ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इमर्सिव एक्सपीरियंसेस देने वाली पहली कुछ फिल्मों में से एक है। प्रोडक्शन हाउस ने स्पेस का नाम पूजा वर्स रखा है। बात करें फिल्म की तो यह अगले साल यानी 2023 के क्रिसमस पर 5 भाषाओं में यानी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने की उम्मीद है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा एनएफटी से लेकर मेटावर्स तक को अपनाने की इस रेस में ऐसा लग रहा है जैसे प्रभास सभी को पीछे छोड़ने वाला है। अरे भाई, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक के बाद एक हाई बजट वाली उनकी फिल्म ये खुद बयां कर रही है। 11 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधे श्याम के मेकर्स ने ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए मेटावर्स में फैंस को फिल्म के कुछ खूबसूरत लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। इतना ही नहीं, फैंस राधे श्याम की दुनिया में खुद के अवतार भी क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें है दम वो फक्त बाजीराव सिंघम। ये डायलॉग किसी और का नहीं तो बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाने वाले इंडस्ट्री के सिंघम यानी अजय देवगन आखिर क्यों रहे इस मामले में पीछे। तो बताते चले कि अजय और साउथ सेंसेशन राशि खन्ना की हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाले ब्रिटिश सीरीज ल्यूथर के एडेप्टेशन शो रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस के लिए मेकर्स ने मेटावर्स की दुनिया में कदम रखते हुए ऑडियंस को वेलकम किया। अपने इस डिजिटल स्पेस को क्रिएट करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने हंगामा डिजिटल की वेब3 वेंचर हेफ्टी एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अभी तो ये टीजर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज फिल्म के टीजर और ट्रेलर मेटावर्स में लॉन्च किए जा रहे हैं, जबकि एनएफटी के जरिए सुपरस्टार्स के डाई हार्ड फैंस उनकी बीटीएस वीडियो, पिक्स और पोस्टर्स को हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब फिल्में मेटावर्स पर रिलीज की जाने लगेगी। तो अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनमेंट से जुड़ी मेटावर्स और एनएफटी की खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए।
in the 2022 budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced crypto taxes and announced a 30% plus applicable surcharge and a 4% cess on the profits made by trading cryptocurrencies on or after April 1st, 2022. So if you are wondering how India's crypto tax works and how the income tax department views investments or trading in Bitcoin and other cryptocurrencies, we have covered everything you need to know about crypto taxation in India in our special show Tax Wars, which will be your tax guide for 2022 and beyond. So let me introduce you to our special guest, Mr. Indy Sarkar, founder of TaxCrypt Technologies. Indy sir, welcome on 3.0 TV. Thank you very much, Manoj, and namaskar to your audience. Thank you so much, sir. In this first show about taxation, what we have done is, the initiative which 3.0 TV has taken is to simplify the crypto taxes for our viewers. So what are your opening remarks, if you can just begin with, sir? First of all, from the time we've had the crypto tax announcement, which was an explicit policy decision, जो आपने देखा February 2022 में आते हुए, I think all crypto investors need to be fully aware of the fact that crypto taxation is real, and therefore, to the extent to which they need to be tax compliant in their crypto trading activities, is an important part of their obligation if they're a resident of India and operating out of India. So right, sir. The opening remark is that tax compliance is a reality that everybody should worry about it if you're trading crypto assets. All right, since we are talking about taxation on the Web3 universe, so my first question to you is, are crypto to crypto transactions taxable in India, or it is just on the withdrawals of crypto to INR which is taxable, sir? If you can just simplify this. Absolutely. ये एक मैं बोलूँगा कि गलतफहमी है amongst a lot of investors that जब तक मैं crypto account से fiat currency, in other words, Indian rupees में मैं नहीं निकालता हूँ from my wallet, my taxes incidence is not arising. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. Okay. Any crypto transaction is a taxable event. Okay. And if I can just spend 30 seconds, yeah, अगर आप Bitcoin से Ethereum में transfer करते हैं, in other words, that is a transaction which involves a sale of a Bitcoin and purchase of an Ethereum. वो जो Bitcoin का जो आपने sale करा है, उस पे आपका tax incidence बनता है if there is a profit, and there is a whole formula around cost basis and FIFO that would apply to calculating your tax incidence at that point. All right, since we are talking about cryptocurrencies and its universe, so do cryptocurrency traders, investors need to pay the new 30% taxes for all their tax liabilities, even prior to April 2022? This is a great question, and I think in many instances, a lot of people, काफी crypto investors ने 30% rule के हिसाब से 31st March 2022 के tax filings करे हैं. I believe in many instances they have overpaid their tax liability. All right. Because the ruling came in from 1st of April, and prior to that, one could have applied normal financial assets rules in terms of short-term, long-term capital gains, and therefore had the benefit of offsetting losses to some extent also. Oh, is that so? I mean, we are talking about trading activities such as airdrops. Maybe some of the other airdrops were due in March, which were done in April. So how does this thing, can be managed? Airdrops ka jo taxation scenario hai, that has pretty much not changed from pre-1st April 2022 and post-1st April. All right, okay. Airdrop, if I have to put it in very simple terms, आपके दर्शकों के लिए, airdrop is, दर्शकों को ये देखना चाहिए कि airdrop एक gift के बराबर है. Okay. So जैसे आपको gift tax लगती है, and there is a certain tax rule where you are exempt, I believe it's up to 50,000 rupees, and if you have any gifting that is beyond 50,000, the entire amount that you've captured as gift is taxed at your marginal tax rate. So उसमें pre and post 1st April 22 में कोई फर्क नहीं है. All right. So since we are trying to understand how this tax structure works for our viewers, so my next question to you is, sir,
if a person converts one crypto to another without moving them into their account, so are they liable to pay taxes? पहली बात तो when you are converting, it is always happening wallet to wallet. Exactly. So there is action or rather activity that is taking place within your crypto wallet domain. And therefore that is seen as selling one particular crypto asset and buying another crypto asset. So by definition, it is your trading activity and therefore liable for a tax claim as per the rules as they are lined up. Now, the only area जहां पे आपका कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं बनता है, मान लीजिए आपके पास दो वॉलेट्स हैं, आपने आधा बिटकॉइन एक वॉलेट से निकाल के दूसरे वॉलेट में आपने ट्रांसफर कर दिया merely as a बिटकॉइन, उस पे आपका कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं बनता है because you've maintained your position rather than exited one cryptocurrency and purchased another one. Sir, but my follow-up question on that is, say for example, if someone has purchased Bitcoin at roughly around 19,000 and currently the price is 19,500 and he has sold. So sir, वो पता कैसे चलेगा कि उसने 19,000 में लिया हुआ है? वो that's a great question, क्योंकि जहां से भी आपने लिया होगा, आपका एक cost incidence, cost basis calculation होता है as part of your wallet. Right. So all your wallets has that, because at the end of the day, this is all on a blockchain, and therefore anything that's going in and out of the wallet, whether conversion from fiat to a cryptocurrency, which is your purchase in, उसका एक cost basis establish हो जाता है. तो सर ये जो आपने बताया कि cost based establish हो जाता है, we're just trying to understand, how this thing works. So while filing tax returns, so are you going to give the entire blockchain series to the tax guys, or how does this thing work, sir? So actually what you have to do is, at the end of the day, the complication कहाँ पे आ रही है for crypto investors? ये समझना बहुत जरूरी है. The complication is that when you are purchasing, or rather when you are booking a trade, it's a transaction, and therefore there is a cost basis of acquisition. Perfect, fantastic. दूसरा चीज जब आप बेच रहे हैं, FIFO rules will apply. That is what calculates the weighted average cost of what you're selling. All right, sir. In order to calculate your gains. Perfect. Perfect. So moving on, if a person has multiple wallets, say for example, he is having two or maybe more than that, and a lot of transactions within them, how will these transactions will be calculated? It's my next question to you, sir. This is also really important to know that under India tax regulation, FIFO rule applies on a wallet basis. US may, and some of these international tax platforms, they apply FIFO rule on an aggregated basis. In other words, अगर मान लीजिए आपके पास 3 wallets है, and there is transactions happening across these 3 wallets, FIFO cost basis estimate or computation, they would do on an aggregate basis. India does not allow that, so therefore be very careful. आपको wallet basis FIFO calculate करके उस पे tax incidence calculate करना पड़ेगा. All right, ये तो बहुत ही अच्छी information सर आपने दी है, but अगर इससे अगर हटके अगर हम कुछ देखें, तो if a person has an asset stored outside the regulated exchanges and through DeFi wallets, so would they be taxable? At the end of the day, the tax obligation is on the individual who is an Indian resident. So हालांकि आप जो कह रहे हैं DeFi tracking is a problem currently, और अगर DeFi to CeFi अगर कोई movement हो रहा है तो you leave a paper trail, उसमें you can be subject to scrutiny. Any sensible crypto investor जो कि tax compliant रहना चाहता है, जिसको harassment की wants to avoid any kind of tax scrutiny or harassment, Exactly. They should self-regulate and disclose by linking their DeFi wallets. Certainly on a platform like ours, which is TaxScript, you can link all your transactions and be an honest crypto investor and be compliant of the rules. That compliance obligation falls on the crypto investor. So honest crypto investor is the need of an hour. That's what Indy sir is saying. So are transfers made between an individual's own wallets taxable? So say for example, if I have made a transfer to some or the other family member of mine, so are these
transfers or wallet taxable? If I'm transferring to a wallet that is in my name, let's say I'm the individual crypto investor, मेरे पास 2 wallets हैं, and without converting the cryptocurrency from one type of currency or coin to another, I've merely transferred it for record keeping purposes from one wallet to another, there is no tax incidence on that front. If I transfer it to my brother, then it's a taxable incident in the other person's hand, unless I say that I gave it for free and therefore it's a gift. Say for example, if we have purchased Bitcoin in $18,000, and Bitcoin was a few weeks back, or maybe few days back, it was around $22,000, and we made a transfer to my brother's account. Correct. So he will be liable to pay that tax, or? In fact, the obligation is on you because you have transferred value worth 22,000 on a purchase of 18,000. Because it has left your wallet. These are all these little nuances where jahan pe abhi bhi taxman is yet to provide full clarity. The prudency is whoever's booking that transaction needs to make sure that unke books are clean and therefore apply the laws of prudence. First of all, he will be surprised that he is receiving a gift from someone, and the second surprise will be he has to pay 30% taxes on that. Moving on. And my point is इसमें कोई tax बचता नहीं है. Exactly. Because वो आपके brother के हाथ में or relative के हाथ में would be taxed as a gift, and you're now liable for a higher price point, because then the cost basis is zero if they haven't actually monetarily or any other way paid for it. So this is actually a question which is very important. So do miners need to pay taxes on gains they have made on trading of digital assets? Point number one, because traditionally in our India we have seen that a lot of it happens in stock markets that there are parents who give their children a lot of shares, and we are talking about Web3 and the universe. So is this the same rule applicable for miners as well, sir? The tax rules that applies to any kind of income generated at a miner level is no different from mainstream taxation and crypto taxation. Fantastic. जो rules वहाँ पे है, which is up to 1,500 rupees, a miner can generate income in the strictest sense of the word. Anything more than that gets attached to the parent with the higher income. Okay. And under their PAN, it's accounted for, and therefore marginal tax rates apply on those. All right. Since we are talking about taxations and the way forward for our Indian viewers, so are crypto traders, investors liable to pay for advanced taxes also, sir? Absolutely. ये आपने बहुत important point raise करा है. 1st of September, by the 15th of September, crypto investors should have paid their advanced taxes. I'm not sure what the compliance level has been. We believe there's about 25 million crypto investors in this country. And because it's income outside of a normal, what I call salaried process, jahan pe there's a predictability and there's TDS largely at the marginal tax rate, isme advanced tax rulings do apply. I'm not comfortable to answer the question as to what is the compliance coverage on this. How many people have complied with advanced taxes? All right, your last closing comments on this, sir, since it's our first show, and there are a lot of other shows which we are going to bring for our viewers to understand this tax and the taxations in the Web3 universe. So what is your closing remarks on this, sir? Closing remark is to say that to your audiences that देखिए, taxes are here to stay. Do manage your tax planning. Do remember the fact that ये 30% tax on gains आपको देने पड़ रहे हैं. If you're booking losses, second half of the year, but you've got a lot of gains in the first half, your obligations to pay your taxes remain intact. So there are no offset of losses. So do rely on tax planning. Otherwise, when you have to pay your taxes, there's pressure on you to generate liquidity. Platforms such as us not only allow for tax compliance and give you a proper computation, we're also helping you with your tax planning exercise to make sure you're able to meet your tax obligations. So again, rely on specialists. I believe technology plays a huge role on that front. And
focus on, I tell investors that focus on what you do well, which is investing. Leave your tax compliance to other specialists who can take away that headache. So that's the word coming in from Indy Sarkar, that always plan your taxes and always consult your financial advisor before making any investment bets. Thank you so much, sir, for joining on this first show, our Diwali special show on taxation. Thank you so much, sir. Thank you so much, Manoj, and wishing all your viewers a very happy Diwali and best wishes for the year ahead. Best wishes to you as well, sir. Happy Diwali. Thank you so much. Thank you. रेगुलर क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन क्या आप प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में जानते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसे कॉइन्स हैं? दरअसल ये वो कॉइन्स हैं जो अपने नेटवर्क में मनी फ्लो को प्राइवेट रखते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या होते हैं ये प्राइवेसी कॉइन्स, कैसे काम करते हैं, क्या वाकई ये अनट्रेसेबल है और क्या है इनके प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन सबसे पहले क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्राइवेसी कॉइन्स क्या है? प्राइवेसी कॉइन्स अपने नाम की तरह होते हैं। ये यूजर की आइडेंटिटी और बाकी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन को ऑब्स्क्यूरेट करते हैं ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। इस तरह से कॉइन्स एक अलग लेवल की प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं जो कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड नहीं करती। प्राइवेसी कॉइन्स प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वॉलेट एड्रेसेस छुपाना और कॉइन मिक्सर का इस्तेमाल करके मल्टीपल ट्रांजैक्शन को मिक्स करना। कैसे काम करते हैं प्राइवेसी कॉइन्स? दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह प्राइवेसी कॉइन्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के रूप में करते हैं। जबकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस आमतौर पर पब्लिक होती हैं, वही प्राइवेसी कॉइन्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जिससे ट्रांजैक्शंस को कनेक्ट करना चैलेंजिंग हो जाता है। प्राइवेट कॉइन्स को रेगुलर क्रिप्टो से अलग करती है उनकी प्राइवेसी, जिसे बनाए रखने के लिए यूजर्स की वॉलेट बैलेंस को इस्तेमाल किया जाता है और एड्रेस को छुपाने के लिए क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि प्राइवेसी कॉइन्स कंप्लीटली प्राइवेसी की गारंटी नहीं देते हैं। ऐसे एसेट्स को संभालते हुए तमाम लोकल रेगुलेशंस और लॉस को ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब नजर डालते हैं प्राइवेसी कॉइन्स में इस्तेमाल की जाने वाली 3 क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स पर। इसमें सबसे पहला नाम स्टेल्थ एड्रेस का आता है, जो हर ट्रांजैक्शन के रेसिपिएंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू एड्रेस जनरेट करता है। दूसरी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का नाम है ZK स्नार्क्स। ZK स्नार्क्स का मतलब जीरो नॉलेज सक्सेंट नॉन इंटरैक्टिव आर्गुमेंट ऑफ नॉलेज होता है, जिससे आपको ये प्रूव करने की इजाजत मिलती है कि एक ट्रांजैक्शन अपनी डिटेल्स जैसे कि सेंडर, रिसीवर, अमाउंट शेयर किए बिना वैलिड है। थर्ड टेक्निक है रिंग सिग्नेचर्स। जब आप किसी प्राइवेट की से ट्रांजैक्शन साइन करते हैं, तब दूसरे आपके सिग्नेचर से आपके एड्रेस को लिंक कर सकते हैं, लेकिन रिंग सिग्नेचर्स के इस्तेमाल से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इस तरह से एक ही ट्रांजैक्शन में अलग अलग सिग्नेचर्स होते हैं, जिसकी वजह से दूसरों के लिए आपके सिग्नेचर को आपके एड्रेस से कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई प्राइवेसी कॉइन्स अनट्रेसेबल हैं? प्राइवेसी कॉइन्स सच में ट्रेसेबल हैं या नहीं, ये हर एक प्राइवेसी कॉइन के डिजाइन और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कॉइन्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा ट्रेसेबल होते हैं। इस तरह से सभी प्राइवेसी कॉइन्स उतने प्राइवेट नहीं होते हैं जितना कि वो क्लेम करते हैं। बैडली डिजाइन प्रोटोकॉल्स में खामियां हो सकती हैं जो ट्रांजैक्शंस को ट्रेसेबल बना सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद कुछ मोस्ट वेल रिसीव्ड प्राइवेसी कॉइन्स के बारे में। मोनेरो फाउंडेड इन 2014, मोनेरो इंडस्ट्री में मौजूद सबसे पॉपुलर प्राइवेसी कॉइन में से एक है। मोनेरो क्रिप्टो नोट प्रोटोकॉल पर चलता है, एक सिस्टम जो ब्लॉकचेन के पब्लिक लेजर को सिंपल वर्ड्स में ब्लर कर देता है। दूसरा है डैश। साल 2014 में फाउंडर डैश एक बिटकॉइन फोर्क है।
जो प्रोजेक्ट में मल्टीपल एडिशनल प्राइवेट फीचर्स ऐड करता है। नंबर 3, वर्ज। वर्ज को TOR और इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि सेंडर्स और रेसिपिएंट्स के IP एड्रेसेस पूरी तरह से अनट्रेसेबल हों। नंबर 4, Zcash। Zcash भी बिटकॉइन फोक है, जो ज्यादा एनोनिमिटी को ऐड करता है। ये जीरो नॉलेज प्रूफ्स का इस्तेमाल करता है, जो सेंडर्स को अपनी ट्रांजैक्शंस को छुपाने और रेसिपिएंट्स को उन्हें डिक्रिप्ट करने का ऑप्शन देता है। प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल कौन करता है? क्रिटिक्स का मानना है कि प्राइवेसी कॉइन्स का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। इस बात को साबित करने के लिए सिग्निफिकेंट डेटा भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, मोनेरो का इस्तेमाल 2018 में रैंसम के 44% अटैक्स के लिए किया गया था। एनोनिमिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्राइवेसी कॉइन्स डार्क वेब पर बेहद पॉपुलर ट्रांजैक्शन टूल भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेसी कॉइन्स एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल्स या मैलिशियस एक्टर्स द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। करेंसी एडवोकेट्स अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी चाहते हैं, कम से कम मेन स्ट्रीम क्रिप्टो करेंसी की, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। दूसरे क्रिप्टोस की तरह प्राइवेसी कॉइन्स के अपने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स होते हैं। प्राइवेसी कॉइन्स किसी भी क्रिप्टो होल्डर के लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो क्रिप्टो स्पेस में अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। ऐसे में कई प्राइवेसी कॉइन होल्डर्स का मानना है कि किसी के भी द्वारा किया गया परचेज उनका प्राइवेट मैटर है और इसे इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। However, प्राइवेसी कॉइन्स की एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिक्योरिटी की वजह से उनका इस्तेमाल इलिसिट एक्टिविटीज के लिए भी किया जाता है। प्राइवेसी कॉइन्स डार्क वेब में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के लिए पॉपुलर चॉइस बन गए हैं। क्या प्राइवेसी कॉइन्स लीगल हैं? प्राइवेसी कॉइन से प्रेरित ब्लैक मार्केट्स पर नकेल कसने के लिए दुनिया भर के रेगुलेटर्स द्वारा प्राइवेसी कॉइन्स की इंटेंस स्क्रूटनी की गई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने एक्सचेंजेस पर प्राइवेसी कॉइन्स की ऑफरिंग पर बैन लगाया, तो जापान में उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर्स द्वारा लगाए गए नो योर कस्टमर लॉस को कड़ा करने से प्राइवेसी कॉइन्स के यूजर्स के लिए बने रहना मुश्किल हो सकता है। इनमें FATF ट्रैवल रूल्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा डिटरमिन्ड AMLD5 डायरेक्टिव शामिल है। Challenges faced by privacy coins. Number 1, प्राइवेसी कॉइन्स को लेकर लोगों के बीच डर। जॉर्डन सैंचेज के मुताबिक प्राइवेसी कॉइन्स को अक्सर स्पूकी नर्ड कंप्यूटर कोड मनी के रूप में देखा जाता है और लोगों को पूरा यकीन नहीं है कि उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फास्ट ट्रांजैक्शंस की है जरूरत। सिला ब्रीमर का मानना है कि इंस्टेंट सेटलमेंट के साथ XMR ट्रांजैक्शंस को अनेबल करने के लिए हमें मोनेरो के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन की जरूरत है। रिसेंट डेज में मोनेरो ब्लॉक टाइम 2 मिनट है और 10 नेसेसरी कंफर्मेशन के साथ पेमेंट को फाइनल रूप देने के लिए 20 मिनट की जरूरत होती है। जाहिर है, मोनेरो को अपनी एनोनिमिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए बिना बढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, प्राइवेसी कॉइन्स को लार्ज पब्लिक ब्लॉकचेन्स द्वारा अपनाए जाने की है जरूरत। एलेक्जेंडर एडरर का कहना है कि टोकन या NFT परचेज वॉलेट को विजिबल बनाने के साथ यूजर को आइडेंटिफाई करता है। अगर वर्ज को इथेरियम, फैंटम या BSC जैसे चेन में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये इन नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स और क्रिप्टो एंथुसियास्ट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। एलेक्जेंडर आगे कहते हैं कि ये एक डेडिकेटेड वर्ज ब्रिज के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जो टेक्निकली चैलेंजिंग है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास चीजों को देखने के लिए स्मार्ट माइंड है। पॉइंट नंबर 4, कंप्लायंस डिफिकल्टीज। जॉर्डन सैंचेज का मानना है कि स्मॉल बिजनेस को इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेसी कॉइन्स के साथ ऐसा करना मुश्किल हो जाता है और बहुत अच्छा होगा अगर कोई ऐसा कन्वीनियंट तरीका निकाला जाए जिसके चलते एनोनिमिटी भी बनी रहे और बिजनेसेस IRS की रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई भी कर सके। डेवलपिंग इकोनॉमीज में प्राइवेसी कॉइन्स वाइडली यूज किए जाते हैं, लेकिन USA और यूरोप में इन्हें अवॉइड किया जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस टैक्स अथॉरिटीज से डरती हैं। पॉइंट नंबर 5, नॉन कंप्लायंट सॉल्यूशंस को भी है एक्सेसिबल होने की जरूरत। कॉइनबेस और क्रैकन के मुताबिक हमें उन लोगों के लिए बिस्क जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो क्रिप्टो स्पेस में एनोनिमस रहना चाहते हैं।
प्राइवेसी कॉइन्स की एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने का ये एक शानदार तरीका है। प्राइवेसी कॉइन्स ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में जोड़ी जा रही कई इमर्जिंग एसेट क्लासेस में से एक है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या परचेज के साथ आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए और लोकल लॉज और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो स्पेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हिट द बेल आइकन। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर और फिर एक बार लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है टिप ऑफ द क्रिप्टो बग। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेटावर्स में हर कोई अपना नसीब आजमा रहा है। हर कोई मेटावर्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे और बेहतर बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य से अब बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अब मेटावर्स में एंट्री कर रही है और अपने एम्प्लॉयज को मेटावर्स के बारे में ट्रेन भी कर रही है। ऐसे एक कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में से एक KPMG ने अब अपना पहला मेटावर्स कोलैबोरेशन हब खोलने की अनाउंसमेंट की है। इसकी मदद से वो अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को डिजिटल युग में हो रहे विकास की अपॉर्चुनिटीज को पाने में मदद करेंगे। साथ ही इस कोलैबोरेशन हब यानी सहयोग केंद्र के साथ कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य लोगों को Web3 से भी जोड़ेगा। आपको बता दें कि कंपनी इस Web3 एक्सपीरियंस में सामूहिक रूप से $30 मिलियन का निवेश करने जा रही है, जिसमें मेटावर्स हब एक सिग्नेचर पीस के रूप में ही है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वेब 3.0 ये है क्या? तो सरल भाषा में अगर बात करें तो वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजीज के इवोल्यूशन की 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी है, जहां वेब 2 आपको कई अन्य चीजों के अलावा ऑनलाइन आइटम्स खरीदने और वेब पर अन्य लोगों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है, जिसमें पेपाल, फेसबुक और स्पॉटिफाई भी शामिल है। वही अगर बात करें वेब 3 की, तो वेब 3 जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्मित एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, जिसमें वेब ब्राउजर्स बहुत ज्यादा एडवांस है। मतलब आप इसेंशियली सोफिस्टिकेटेड 3D ग्राफिक्स और वेब एप्लीकेशन बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो फिर से लौटते हैं KPMG की ओर। फॉर्च्यून ने जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार यह हब जो है वो एजुकेशन यानी शिक्षा, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण और इवेंट्स एंड वर्कशॉप्स यानी आयोजनों और कार्यशालाओं पर केंद्रित होगा। हेल्थ केयर, कंज्यूमर, रिटेल, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अन्य संभावित मेटावर्स यूज केसेस की जांच करना ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। वही यूएस के KPMG में डिप्टी चेयर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लॉरा न्यूस्की ने कहा कि मेटावर्स एक मार्केट अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट को फिर से जोड़ने का एक तरीका है और एक नए कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस यानी सहयोगी अनुभव के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का एक मार्ग है। कंपनीज अब क्रिप्टो और वेब 3 स्पेस में और ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रही है। क्रिटिकल इंसाइट्स को प्रोवाइड करने के लिए इसमें नए टूल्स और सॉल्यूशंस भी तैयार किए जाएंगे। समय समय पर इमर्सिव लर्निंग और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। ऐसे भी टैलेंट्स को भर्ती की जाएगी जो अपना नॉलेज कंट्रीब्यूट करे और साथ ही फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के बदलते संगम को नेविगेट करने में मदद करेंगे। सो आई होप भविष्य में वेब 3 की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी को हर कोई जरूर इस्तेमाल करना चाहेगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर आपसे विदाई लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। The innovation hub of the world, Dubai, is making some serious inroads into the metaverse.
The digital world, as we know, it is being reshaped, and it is more important than ever for businesses to reimagine their presence online, for which Dubai has already been trying to attract cryptocurrency companies from around the world, and now Dubai is seeking to break into the world's top 10 metaverse economies. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. According to a report, the value of the global metaverse market is forecast to hit about $5 trillion by 2030, and Dubai wants to lead globally in adopting the technology of the future. Crown Prince of Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed, often says that the Emirate is keen to lead globally in adopting the technology of the future. The Dubai government is working dedicatedly over it, as Dubai is all set to host a metaverse event which will be focused on the metaverse. Several local and international leaders will attend it to discuss the potential of the emerging digital space. The inaugural Dubai Metaverse Assembly will be held on September 28 and 29 at the Museum of the Future and Emirates Towers. The assembly will draw more than 300 experts, policymakers and officials, as well as 40 organizations involved in the metaverse. It will also host more than 100 workshops. Well, Dubai is not just limited to events. The Sandbox is now all set to develop a metaverse city in Dubai. Yes, the city, which is going to be called as the Dubai-verse, will be built through local partnerships, including firms in the film, music, entertainment, acting, finance, real estate, and gaming industries. So the Animoca brand's Dubai-themed metaverse will mirror the Sandbox's Hong Kong megacity, which is a gaming metaverse and virtual cultural hub based on the Asian financial hub of Hong Kong. Though the Sandbox is set to develop Metaverse City in Dubai, but the Space Center of Dubai is planning to simulate life on Mars in the metaverse. Yes, Dubai's Mohammed bin Rashid Space Center is developing a mega project to simulate life on the Red Planet in the metaverse as part of the country's plan to build a colony on Mars by the year 2117. MBRSC has teamed up with BEDU, which is a Dubai-based pioneer in Web3 technologies, in the development of the 2117 metaverse, which will include virtual experiences that capture the sensations of being in space and setting foot on the Red Planet. Well, the Emirates in 2017 announced progressive plans to build a human colony on the Red Planet in 100 years. And since then, the Space Center has sent its HOPE spacecraft to study the planet's atmosphere and is building a $136 million mega science city in Dubai that simulates the conditions on Mars. Interestingly, it also aims to land a rover on the moon later this year. The UAE's space program is not just about missions, but also about creating jobs, as the sector provides more than 3,200 jobs. And as revealed earlier, Dubai's new metaverse strategy will add $4 billion to its economy and create more than 40,000 jobs. So let me tell you that Dubai is already home to over 1,000 companies in the metaverse and blockchain sector, which contributes $500 million to the national economy. So we can clearly see that the future of Dubai's metaverse looks much promising, and the move to Web3 is certainly going to be a remarkable period in the history. But only time will tell whether Dubai will become the metaverse capital of the world or not. Well, that's it in today's special episode. For more such updates, keep watching 3.0 TV. This is me, Vishakha, signing off. If you like this video, do subscribe, like and share to 3.0 TV. And do not forget to press the bell icon for instant updates.
In the previous session, we have discussed in great detail the application of fundamental analysis in the cryptocurrencies markets, including understanding its important price drivers. In this session, we shall have a brief overview of technical analysis, the second pillar for analysis of the cryptocurrency markets. The common rhetoric in the markets is buy the dip and sell the top. Yes, but many participants are scratching their heads. How do you know that the market has hit the bottom or it has peaked? Well, traders analyze market charts to predict these important market scenarios. They read all the red and green lines on a chart. Yes, those very lines that most beginners do not understand. Reading and analyzing the price movements through these charts is not everyone's cup of tea. Especially as a newcomer to trading, reading charts can be really a daunting task. Technical analysis takes a lot of time and patience to master. We at Crypto University are going to introduce you to some basic concepts, charts, patterns that you can study to understand trends yourself. So, what is technical analysis? Be it any equity stocks or cryptocurrency, technical analysis is one of the most popular ways which certainly help in estimating and predicting the price of an asset in the near future. It helps in developing a perspective on market conditions that might impact or affect an asset, making it a crucial tool for traders or investors. Technical analysis also provides information about the price targets that one should adhere to for buying or selling the asset. The market moves with price going up and down and creating patterns which can be plotted on charts and studied. Well, technical analysis of cryptocurrencies involves studying these price patterns using various types of charting techniques such as a line chart, bar chart, candlesticks, etc., and applying technical analysis indicators to predict prices. Such indicators may be a combination of trend lines, support and resistance levels, moving averages, stochastics, directional movement index, momentum indicators, Fibonacci retracement and extensions, etc. Technical analysis indicators use the past prices of a cryptocurrency for forecasting its future price movement. Before we delve further, it is necessary to set the expectations of what technical analysis can or cannot offer when it is applied to crypto assets. Technical analysis is typically used to identify short-term trends, typically 2 weeks to 1 month. It is generally not used to identify long-term investment opportunities. So, what are the basic types of technical analysis price charts? The line chart, bar chart and candlestick charts are the most important chart types that are commonly used. Let us discuss each of these chart types. This price chart illustrates a line on the graph. The line chart interconnects the closing prices in the specific period. It eliminates the intra-period noise from the open, high, low prices and only displays the closing prices. Anybody who wants to understand the price trend with a quick glance can see a line chart that provides a basic level understanding about the price movement over the given time period. In the chart shown, you would be able to see that Bitcoin prices have largely decreased over the last couple of months. This chart has plotted the closing price of Bitcoin on each day since 1st October 2021 to 21st January 2022. The bar chart here illustrates the high, low and close prices. The close prices are depicted as offshoots of the main vertical bar on the right side. Generally, bar charts do not use color differentiation for price increase or decrease. Bar charts may also be represented with the open high, low close prices. The open price is denoted as a horizontal offshoot on left and the closing price on the right of the vertical bar, the low and the high price. Green color represents price increase and red with the price decrease. You and nearly all, however, are most familiar with staring at candlestick charts.
These are by far the most popular charting tools to plot. It is the most important and useful chart type. This chart type is used to gauge the signal that the market is providing. Most are, however, confused on what each line means, and more importantly, what it is attempting to tell you on future prices. Well, Crypto University is going to demystify this for you. Firstly, you must know that each red or green vertical line is called a candle. Does it not resemble one? Yes, therefore, this is a candle. The chart therefore illustrates the open, high, low and close price in the form of candles. Open, the first recorded trading price of the coin within that particular time frame. High, the highest recorded trading price of the coin within that particular time frame. Low, the lowest recorded trading price of the coin within that particular time frame. Close, the last recorded trading price of the coin within that particular time frame. Collectively, this data set is often referred to as the OHLC values. The relationship between the open, high, low and close determines how the candlestick looks. Each candle represents the time period chosen. If you set your chart time for say an hour, then each candle represents 1 hour of trading of that cryptocurrency coin. The candle has a main body and the wicks of the candle are the thin lines jutting out at both the head, that is the top, and the tail, that is the bottom. The color of the candlestick differentiates price increase from decrease. You would be able to see a green candle indicating an increase in the price of the coin and a red candle indicating a decline in the price of the coin. The length of the head and tail illustrates the high and low prices respectively. The longer the body, the larger the magnitude of price movement in that time period. So in our example, the price movement in 1 hour. A long wick on the bottom of the candle suggests that traders are buying the dip. A long wick on top indicates traders are booking profits. When there is no wick to a candle, it indicates that trading in the time period was largely restricted to the open and close of that period. For the green candle, the bottom of the candle is the price at which trading starts for the time period, and the top of the candle is the close price. The wick on top indicates that the price actually hit that level but then closed at a low price. The wick at the bottom indicates that the price fell to that level but then rose to finally close at the top of the candle. For the red candle, the open and close price is at opposite levels to that of the green candle. Please complete this module by viewing the other sessions. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to Crazy Coins by Kunal. Today's coin is Solana. I'm gonna tell you conversations around it that go like Solana, Solana. It's like the real deal, that breakup back. I'm gonna put some racks to build it with stacks because I know the stats and a hodler say I'm a holder Solana till me in my soul. Damn, this is crazy. Highlight is it has gone up over 4,500%. It is the Ethereum killer, founded by the guys who worked on Ethereum. It solves the speed problem and it's like a tornado. If Ethereum is proof of work, this is proof of history and already on the top market capitalization after Bitcoin and Ethereum. It is the favorite app for all DeFi app developers, but now has gained huge attention from NFT developers as well, which now makes it the only L1 technology that allows DeFi and NFT and blockchain integration services, that too at high speeds with minuscule cost, which is huge. However, most of the time Solana is known for having a congested network because everyone has jumped onto it. So the real question is, with saving costs and tornado speed, faster validation, no mining, will Solana be the Ethereum killer? Until then, stay tuned till I bring you more Crazy Coins by Kunal.
Engineering students may consider career opportunities in core blockchain technology technical role. With blockchain technology still in its infancy, there is an increasing demand for certified blockchain technology professionals. The numerous specific roles can be bifurcated broadly based on their key responsibilities. A blockchain developer will be one who is involved in the development, management, and ensuring the security of the entire blockchain technology backbone, framework, and its components. Programming experience and also knowledge of blockchain protocol such as Hyperledger, Fabric is essential for this role. The average salary in the range between $90,000 to $115,000 per annum today. There is also a blockchain project manager who is in charge of solution design, implementation process, and other managerial decision making. The average salary is in the range between $130,000 to $140,000. Another avenue in the blockchain user interface designer or UX designer. This has become an extremely important function for the purpose of improving the aesthetics of the front-end interface that is used commonly by customers. The average salary is in the range between $115,000 to $130,000. Then again, the blockchain quality engineer will be retained by companies to take care of the quality assurance throughout, including software testing, both for load and functionality. He will also have additional responsibility for overseeing the project development in a seamless manner. The average salary ranges between $140,000 to $155,000. The role of the blockchain architect is to infuse the concept of blockchain technology in building and designing new solutions for the company. The average salary is in the range between $150,000 to $175,000. The blockchain research analysis determines the effectiveness of the blockchain, identifies areas for improvement, and develops strategies for implementing changes in it. The average salary is in the range between $85,000 to $115,000. With the growth in demand for blockchain technology professionals, it has become increasingly important to recruit an efficient and effective blockchain technical recruiter who understands the conceptual framework of blockchain technology as well as the skill sets to attract the right talent in the organization. He or she is responsible for hunting blockchain talent. The average salary is in the range between $108,000 to $120,000. You as potential experts in blockchain technology need to have a specific skill requirement for becoming successful. The blockchain developer is one of the most sought-after roles in the blockchain industry. At the moment and over the next 5 years, there is going to be an immense dearth of talented professionals who have completed at least 2 or 3 life cycles of establishing a blockchain technology framework. Like for example, typically a blockchain developer for Ethereum blockchain requires to have adequate knowledge of Solidity programming language. This is inspired from C++, JavaScript, and Python. So what are the specific skill sets required that will make you stand out among the rest of the candidates a beginners need to know? Point number 1. Command line. Unix or Linux command line interface. Beginners should have a thorough knowledge of command line programming, either on Unix or Linux command line interface. The Gwin Linux emulator on Windows operating system is most ideal. For the Mac, built-in command line is great. Point number 2. JavaScript knowledge is extremely helpful. JavaScript is a client-side scripting language. Computation is done on the server. Point number 3. Node.js. Learn and understand the blockchain basics because many blockchain frameworks are built on top of Node.js. This enables developers to write server-side application for JavaScript. Blockchain-specific skill set required are: point number 4. Solidity, which is a programming code used for implementing smart contracts on various blockchain platforms and has specifically become famous due to its use in Ethereum. It has easy syntax. Point number 5. Web 3.js.
Web3 library can be easily installed into JavaScript and allows decentralized application to run and retrieve information from blockchain defined by the user. Local testnet and Ethereum mainnet can be connected through MetaMask and Web 3.js. Web 3.js allows to interact with local or remote Ethereum node using HTTP or IPC connection. It bridges the gap between traditional and decentralized world and connects Ethereum blockchain with client browser through a browser extension such as MetaMask. Most common web browsers do not support Web3, so easy to use MetaMask is good. Point number 6. Truffle Suite. The Truffle Suite ecosystem is primarily for Web 3.0 development, comprising of 3 tools, namely Truffle, Ganache, and Drizzle. Truffle is a development environment, asset pipeline, and testing framework for developing smart contracts. Truffle is the framework that facilitates development, testing, and deployment of full-stack dApps. Comes with framework itself, excellent development environment for writing and deployment of smart contracts within minutes. Testing is easy with choice of Solidity and JavaScript. Command line is easy to use. Development within minutes, working is extremely easy. More recently, during the last couple of decades, the significant increase in computing power has transformed how business is performed. Innovations and developments in the fintech ecosystem have gradually changed hands from large financial institutions to technology-based companies. Automated lending and borrowing mechanisms have increased the ease of access to capital for businesses. Also, online internet-based decision-making systems have automated business activities. What is more important is that technology-based companies are more agile given that they have lower regulatory oversight as compared to traditional financial services companies. This has also increased the enterprise valuation of technology companies. Most of the new set of unicorns are in the technology industry. Even some of the largest stock brokers having automated online trading systems have only been set up in the last decade. These new startups have eclipsed even large financial institutions by offering discount brokerage and automated AI/ML-based services to their clients. This global business transformation using blockchain technology has increased demand for career professionals. Technology-based companies have come to largely dominate the financial services industry with peer-to-peer lending, crowdfunding, automated robo-advisors, big data analysis using AI, ML, and online web portals for ease of access to last-mile customers. Contemporary technology based on Industry 4.0 initiatives have led to the application of blockchain technology, AI, ML, big data, and Internet of Things in manufacturing for development of new production methods and streamlining supply chain management. The blockchain technology has decreased the expense and time taken for identification of defects and their overhaul due to its decentralized and distributed architecture. This new technology, along with future potential for Web 3.0 and Metaverse, is expected to transform the way we do business, manufacture goods, and other services. Stay tuned for the next session to continue your learning. कहते हैं इंसान को जीने के लिए 3 चीजें ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए, रोटी कपड़े की तो कोई खास ऐसी टेंशन नहीं है, इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। लेकिन मकान यानी रियल एस्टेट या रियल लैंड, इसके प्राइसेस में तो जैसे आग लगी हुई है। प्रॉपर्टीज के रेट्स तो इन दिनों हम सबकी पहुंच से परे हैं, और हो भी क्यों ना, रियल एस्टेट प्राइसेस आसमान जो छू रहे हैं। लेकिन इस मामले में रियल लैंड को कड़ी टक्कर दे रहा है मेटावर्स में वर्चुअल लैंड, जो ना सिर्फ रियल लैंड से महंगा है बल्कि रियल लैंड के मुकाबले 532% ज्यादा बिक भी रहा है। जी हाँ, 532%। हैरान हो गए ना?
भला जिस लैंड पर ना तो रहा जा सकता है, ना ही घर या ऑफिस बनाया जा सकता है, ना ही कुछ उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उस पर टहल भी नहीं सकते, भला ऐसे लैंड का कोई क्या करेगा? किस लिहाज से ये इतना डिमांड में है? ये सवाल तब उठा जब वर्चुअल रियल एस्टेट की मार्केट में एक खबर ने खलबली मचा दी। जेपी मॉर्गन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, ने एक वर्चुअल प्रॉपर्टी की 1 साल की लीज साइन की है। और तो और द वेटिकन भी मेटावर्स में अपनी NFT आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च करने जा रहा है। जाहिर है ऐसे में जो लोग वर्चुअल रियल एस्टेट में आज इन्वेस्ट करेंगे उन्हें इसका अच्छा खासा फायदा फ्यूचर में होगा। बहुत से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स इसे रियल एस्टेट सेक्टर में डिजिटाइजेशन के अडॉप्शन की तरफ एक अहम कदम की तरह देख रहे हैं। वर्चुअल साइट टूर्स, ऑनलाइन बुकिंग्स और चैटबॉट्स के बाद वर्चुअल रियल एस्टेट की तरफ बढ़ना नेचुरल प्रोग्रेस है। वर्चुअल वर्ल्ड्स बिल्ड कर रही कंपनीज लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट रही हैं, जिन्हें NFTs के तौर पर खरीदा जा रहा है। कुछ कंपनीज रजिस्ट्री में बायर्स की मदद कर रही हैं ताकि उन्हें एडिट ना किया जा सके और कोई और इन प्लॉट्स को क्लेम ना कर सके। लोगों की वर्चुअल रियल एस्टेट की तरफ रुख करने के कई रीजंस हैं, जैसे कि इन गेम सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर एक्टिविटीज, एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड NFT गेटेड कम्युनिटीज। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है BAYC यानी बोर्ड 8 यॉट क्लब, जिसने अपनी NFT के साथ हमेशा एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग एंड डिजिटल कम्युनिटी इंक्लूड की है। इन सबसे अट्रैक्शन गेन करके BAYC $310 मिलियन का मेटावर्स लैंड बेचने में कामयाब हुआ। अक्रॉस ब्लॉकचेन्स मेटावर्स लैंड में काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोलाना सब्सटैंशियली चीपर एंट्री लेवल कॉस्ट ऑफर करती है फॉर मेटावर्स लैंड एज कंपेयर टू एथर। सोलाना के गैस एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज $0.00025 हैं, जो कि ईथर के $5 से $50 के हाई गैस एक्सपेंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में जाहिर है सोलाना होल्डर्स और डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल मेटावर्स होम्स और ज्यादा फीजिबल हो गए हैं। तो वहीं OVR लैंड के सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और इसकी 3 वजह हैं। एक तो बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल है, दूसरा इनएक्सपेंसिव है और तीसरा इसे डेवलप होने में टाइम लगेगा। वर्चुअल रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म वैल्यू कई एक्सटर्नल कॉजेस से डिटरमिन होगी। ब्लॉकचेन बेस्ड वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की लॉन्ग टर्म यूजफुलनेस कई वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स जैसे कि इंटरऑपरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से डिटरमिन होगी। द मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम की शुरुआत जून में कई प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी बिजनेस जैसे कि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड एपिक गेम्स के साथ हुई थी। इस ग्रुप का काम है ओपन स्टैंडर्ड डेवलप करना रिलेटेड टू मेटावर्स इंक्लूडिंग AR, VR एंड 3D टेक्नोलॉजीज। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स एंटरप्राइज का पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा। जितना ज्यादा लाइफ लाइक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा कंज्यूमर्स NFT बेस्ड ओनरशिप को रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड से रिजेंबल करके परसीव करेंगे। यही वजह है कि VR गेमिंग रेवेन्यू 2017 से 2021 के बीच 28.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर बढ़ा। बैंकिंग जायंट सिटी बैंक ने तो ये एस्टिमेट लगाया है कि 2030 तक मेटावर्स इकोनॉमी की टोटल एड्रेसेबल मार्केट $8 ट्रिलियन से $13 ट्रिलियन के बीच हो सकती है। जिस तेजी के साथ मेटावर्स को अपनाया जा रहा है और एंटरटेनमेंट, प्रमोशन, मार्केटिंग से लेकर बिजनेस और रिटेल के लिए इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखते हुए ये कहना कि मेटावर्स इज द फ्यूचर गलत नहीं होगा। होप यू लाइक दिस स्टोरी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्रिप्टो टीवी एंड हैव अ ग्रेट डे। Very good evening and a warm welcome to all the crypto enthusiasts. I would like to welcome you all to the land of Cryptoverse. I'm Rekha Khan, your host for the webinar, and we have with us Mr. Saurav Raj, who is an expert in NFT space, joining us for the webinar today. Today, we're going to be talking about NFT and its evolution.
Saurav is going to take us through what is NFT, how it works, and what are the evolutions in NFT space. Now that you've joined, you would notice that you all are in mute. If you have any questions throughout the webinar, please write them on the chat section. At the end of the webinar, we would be holding a Q&A session where all the queries of the participants would be answered by Saurav. From the creator of Odin, MCX, IEX, here is yet another credible and exchange-neutral platform a user can rely on while walking towards the path of crypto and blockchain understanding. Starting from education to knowledge to the latest news, all covered under one super app, CryptoWire. From a novice to a professional trader, every market participant can have a slice of information readily available at the touch of their fingers. Let me first take you through the world's first crypto university, Crypto TV and CryptoWire services. We all know that crypto and blockchain ecosystem is emerging at an immense speed. And to keep a track of all the events, prices, and news looks to be difficult. So what if we have an app like our buddy who works with us, thinks like us, and responds to what we expect? Yes, you heard me right, our own global crypto super app, CryptoWire. Let me take you through the app briefly. Here is a global crypto super app, CryptoWire. Let's start with the homepage of the app, which covers all the three pillars: Crypto University, Crypto TV, and CryptoWire services. Under the CryptoWire services, we have rolled out India's first global index of crypto TVs, IC15, yet another feather in CryptoWire's hat. It tracks the performance of top 15 cryptocurrencies globally based on market capitalization. Crypto enthusiasts and crypto traders can take informed decisions based on IC15. Coming to WireWatch, in this section, we can monitor the best exchange to buy and the best exchange to sell a particular cryptocurrency. In center of the screen, you can monitor the arbitrage opportunity available between the two exchanges for the same cryptocurrency. There are more than 350 plus cryptocurrencies listed in our platform with 70 plus crypto exchanges worldwide. Coming to Crypto TV. Crypto TV is an exclusive 24/7 mobile IPTV covering everything on crypto and blockchain ecosystem. It is currently available in 4 different languages: English, Hindi, Gujarati, and Marathi. Coming to Crypto University, being the world's first digital university to offer courses on crypto and blockchain, you can find the best courses available on MIT and University of Michigan at a single click of your app. With this, let me now introduce you all to today's speaker, Mr. Saurav Raj. Saurav is an alumni of IIT Delhi, and he has completed his management development program in fintech from IIM Lucknow. His keen areas of interest are in fintech, blockchain, decentralized finance, and NFTs. He is also the founder of Wise, the NFT infrastructure for building Web3 business solutions. His projects have won several awards for DeFi, Stella, NFT, Ripple, United Nations Track, Metis, Best Overall Project and NFT Projects, Cello, and others from Polygon across various Web3 and blockchain events. Join me in welcoming Mr. Saurav Raj for today's webinar. Hi, Saurav. Hi, Rekha. Hi, everyone. Good to go? Yep. Okay. So good afternoon, everyone. And it gives me a lot of pleasure to come and talk about NFTs and blockchain with you all. And personally, I'd like to thank Rekha and her team and everyone at CryptoWire for making this happen, because technology always can do a lot of things, but to have the technology available to get the value of the technology for everyone, education and knowledge has to be there. And this is where I feel CryptoWire, the entire team is doing a fabulous job of not only just pushing out a crypto product, but helping everyone here and beyond this call as well learn more about crypto and how it can impact our lives, how it can bring benefit to all those of us who are not yet even touched by crypto, right?
Today, my effort will be to share a little bit about my knowledge, my journey into the crypto space, with a little bit of extra focus on NFTs, and maybe perhaps some of you will realize that what you knew about NFTs was there, and today you will learn a little bit more about it, and that would be my objective, that as you leave this session, you will know a little bit more, you can make more educated decisions about what to do with NFTs and what not to do with NFTs. So with that, I would like to ask if I can start my screen share, and we can go with that. Yes, it is. Okay. So let me start. What we will be covering today is a little bit about the history of NFTs and how it has evolved, and that will bring us to where NFTs are today, and the various applications that we could utilize NFTs for, some of which we are also working, and I'll share some examples related to that. And I'll try to give you a little bit about a hands-on exercise towards the end, where if you wish to pursue and do something with NFTs, how easy or how difficult it would be to get it done, right? And this seems easy course. We'll stop and pause for questions. There's already a Q&A planned towards the end, so feel free, feel welcome. Don't get intimidated. If there's anything which is difficult, feel free to drop in a chat message in the chat box, and we'll take it up, right? So with that, let's start. This is the first thing which I wanted to share. It's a very good piece of information which has been put out there, very graphical. And what I'd like to do is switch on to the actual report of this. So interesting thing is here is, we all know cryptos or since quite a bit of time, but NFTs are relatively recent. But if you trace back, it can go all the way to 2015 when all of this started. And that is when the records have been shared that that was the first NFT which was recorded on the Ethereum mainnet, right? And then so far, most of it has been Ethereum, but recently in the last few years, you'll see some of the other blockchains have also come into the mix, and we'll talk a little bit about those. So what I'll do is I'll share this link in the chat. I think, how do I get it? Oh, it's here. So I'll share this link to everyone, right? And you know, I'll keep doing that. Some of these resources I'll keep sharing, so you all can, of course, take a look at them later on as well. So we'll skip this forward, and I want to introduce something else. While that was the first NFT on Ethereum, but was it the first NFT? Typically, no. The first NFT was minted way even a year earlier in 2014 by an individual who goes by the name of Kevin McCoy. It's a digital artist and does a lot of that work. And that was the first NFT which was minted, called as Quantum. And you can see that NFT here. This is the graphic, which is the kind of a hexagon and digital, dynamic images which are coming up, right? And that was it. And it stayed there for quite a bit of time until something happened and it got a lot of attention. Someone posted it on Twitter, and then it was picked up by Sotheby's, and they are the curators and auctioneers of very exclusive art pieces around the world, right? So they went on and they auctioned this first NFT. It was eventually sold for $1.7 million. That's quite a bit of huge for this GIF that you see here, right? And the reason to show this is here is if you do it right, there's a lot of value here. There's a lot of potential and a good money-making opportunity, right? Also, it comes with a certain extra responsibility and challenges itself, right? Because recently, the auctioneer has been sued over the same auction, and there's quite a bit of detailed history around that. And what it means is, it goes to the fact of ownership, right? So long story short, I'll share this link again. Let me do that quick. So this comes as some very, very interesting and good reading, right? And it's always fascinating to go around and see this. So this is where the auction is there. There's two short videos by Kevin actually in there, and related to the auction and what happened towards the end. You could see that this is the article. So let me share this link with you guys as well. And going back to the presentation now, what I would say is what happened really is here is, if you look at internet domains, right? You purchase a domain for a certain period of time, and you have to keep renewing those fees to have that ownership of the domain. Now, way back at that point of time,
the NFT which was first minted, it was not on Ethereum, it was on a different platform. It had the similar requirement where the ownership had to be retained over time. And what has been reported is that was not done, which means it was lying dormant and anyone could have claimed it, right? And this is where the whole point of contention is, that who is the original author, who is the owner at the time of the auction, and so on and so forth. And that is why, there has been discussions and there's some legal, applications and actions which have been taken around it. So that's there. So what it means is NFTs are not just some digital images or GIFs. They are actually assets. Just as assets, you have your car, you have your house. These are to be considered as assets which you can own, which you can trade, which you can sell, and which you can buy, right? And that is something which is very unique, what NFTs bring to the blockchain technology in its entirety, right? So now with NFTs, you can actually, there's something tangible, right? You can touch and feel blockchain via NFTs, right? You cannot see a transaction. I mean, it's there, it happens, it goes, you have a hash to look it up and go towards its history. But this is something which you can actually put on your screen. If you put up a digital, screen on your wall apartment or something, you can actually showcase these NFTs as pieces of art, right? So that is something which is not only sitting on a ledger or on a bunch of notes or computers, but this actually comes to real life, right? And that's the power of NFTs. Moving ahead, and these are some examples I'll cover next as to where NFTs have come from that point of time. So this is where people are now creating NFTs and linking it to real world assets, physical assets, and kind of using it in a way not only to promote, but also to curate and create a fan craze or interest around something which is yet to be built. So you could see this as a very good incentive for people to get early in the project, and in return, of course, they get benefits. So in this case, this is something by Cloud Yachts. You can look up their website as well. So what happened is Gregory Marshall is a very good yacht builder, and what he did was, instead of just building it out and then going and trying to sell it and do these promotion events, what he did was he created an NFT out of it, right? And this is something which is not built, so using digital tools, he's built it. And the second thing which he did was he created a metaverse environment where people could go and actually customize the yacht, right? And these are very high-end luxury items, right? And then using that, those NFTs were sold, right? And in this particular, this was sold for about $12 million. So you can imagine. Now, what do you get out of those $12 million? The question which everyone wants to ask. I mean, I buy an NFT, what do I get out of it, right? So this is where you get VIP access to the yacht itself. There could be exclusive events, shows, parties, and all that stuff, something which you have seen in the movies and on the internet and entertainment channels as well, right? So this is how, instead of now trying to own a complete yacht, you could own a piece of it. You can, get your contributions early, and then you could get invited to those exclusive events, right? So this is where NFTs are now kind of creating that access which many of us could not have even imagined before, right? Moving on, coming to India, right? I believe this caught some of your news as well. So Mahindra did a Thar NFT, and this is also interesting because this showcases a slightly different application of the NFT itself, right? So they created these 4 NFTs. Each started with a listing price of rupees 1 lakh, right? Eventually, all of these 4 sold for a total of 26 lakh rupees. So you can imagine, starting from 4 lakh, these were auctioned out. Individually, you can see the first one, which they have titled as Bond of the Earth. It went for about 5.25 lakhs. The next one was Taking a Flight. You see this thing is kind of jumping between 2 mountains or ridges. They went for 5 lakhs. The biggest one was this one, Standing Tall, which went for 11 lakh rupees after the auction. And then, of course, Explore the Impossible, which is, going through the desert, is about 4.75. So you can imagine, and these are just digital masterpieces, right? And now someone has it. Now, what did Mahindra do with that money, right? That's the big question, right? And what happens to that? So here, the money went to something called Nanikali, where it is typically done for getting education out to the underprivileged girls and children, right? So you see, using NFTs, using a physical product, create that excitement, get people behind it, and then use it for a very noble social cause, right? So you see a very different application compared to some of the for-profit applications that we saw before, right? And
And what I'm trying to do is to give you a perspective of how wide the use of NFTs can be today. It is not just music and art. Today, I mean, we started with that example of the first NFT, which was an art, but today with these two examples, you can see it is completely varied, right? So it is up to your imagination today what and how you can use an NFT, right? And finally, of course, if we are in India, I mean, how could we skip cricket NFT? So this is an example of Radio, which is still in beta, and what they are doing is, excuse me, they're capturing instances, moments out of cricket as a game, right? It's a very passionate game, and people around the world, India and Australia, the World Championship, all of that stuff. So what they do is they collect and bring those moments into the NFT space. They create NFTs out of it, and then those are sold and traded. There's again similarly, if you remember in our childhood days, we used to have those player cards, right? And you would exchange them at schools, and at the end of the week or something, you would realize that okay, someone who has the maximum number of points wins it, right? And then the cycle starts all over again. So you could imagine all of that going onto the blockchain and getting live through NFTs, which was not possible before. And there's a very unique thing why it happens, and the tangibility which I talked about. We'll talk about it and we'll address it in the following slides as well. So you see now that starting from just for the sale of a digital asset and art, we cover an example where someone's creating a promotion for a yacht, which is a very luxury item. Someone using it as for a social event, and someone mainstream combining it with sports and building a fan base out of it, right? So very, very varied use cases and an exceptional market of these, and that speaks of itself. The demand for NFTs is going to go up and up, right? So if you want to think about NFTs, think about something unique where you can apply this, and we'll talk about how easy or how difficult it is in the later part of the presentation as well, right? So quick, I'll try to run through this. It's just trying to close this topic on how it came and how early it was. So the concept came around 2013, a little bit even earlier than what the stuff that we have seen. And it started with actually the idea to represent real world assets, right? And this is something which you have to kind of understand going forward, that what NFTs do at the core of it is to represent something. It could be a real world asset or something which could be plain asset, but an asset of value. And the second thing which it does is using the blockchain technology, it is able to prove ownership of that asset, right? And then of course it can go to many other things, right? Now, you might be asking, so what's the big deal here? What's with the ownership and what's with the asset, right? So, things which are rare in this world, less available, the classic supply demand that we talk about, anything which is less in supply creates more demand, that rises in value, right? Gold, for example, compared to iron ore, right? It is more valuable. Diamonds, even more valuable, right? Mona Lisa is a painting. There's only one of it in the world. Paintings done by Picasso or Van Gogh, right? These are very unique, very few rare items, right? And that is what drives the demand for them. Why is Bitcoin price so high? Because there's only a limited quantity of Bitcoin in the entire world, right? It's not an infinite supply of Bitcoin, right? And that is why it keeps driving up the demand, right? So when you create NFTs and you think of, let me just create something, you have to think about these two things, right? You have to have something very unique, something which is palatable to your audience, and you have to curate that audience, and also keep the supply limited. You want to do 100 NFTs, just do 100 NFTs. Don't do 10,000 of it, right? Because the more you supply, everyone can have it, the value drops down, right? That is where something you have to see, right? You have to think about in those terms, yeah? Moving forward, then, slowly people came more and more, and it was first just a record of ownership and the data. Then it started to see that how can people exchange it, right? People start saying, well, now I have it, can I sell it, and can I get value out of it? So I can sell this NFT and get something else in return. Like, you have a car, it goes old, you sell it out, and then you go and buy a better, bigger car, right? Things happen. This is how our societies are built, right? The difference is now it is happening digital, and using blockchain, you can verify the ownership. So you're actually buying it from the right person, right? All these scams happen, right? Someone stole your stuff and it didn't even belong to them, right? That kind of stuff. So that is where NFTs and blockchain come and help you stop that kind of scam, right? And of course, you might have heard about the rug pull, and if you have time, we'll go over what the rug pull is as well, right?
And then slowly and slowly comes now 2015 and so on, and you see it starts to become a little bit more interesting, right? And more people are getting into it. Now they're thinking, how can this be more creative? Can we build additional volume and additional dynamics on top of it? So this is where the counterparty comes up, and now people have started to come together. Right? This is where the gamers get into the mix, right? Because games, you might have played there's battle games and all of these where you collect items, and those items give you superpowers, and using those superpowers you can do something more. Now when these gamers got into it, said, well, okay, these are kind of assets which people can win and have in a game. Why don't we create those as NFTs, right? So as people move across different levels, that ownership builds over time, and then they can of course now trade and exchange it. In the initial version of the games, you might have played around 20-15 years earlier, you could not trade it. I mean, you could get it, it gets consumed, it gets burned. But now with NFTs, let's say you are doing a multiplayer game with, with a team, you could actually get that, your NFT to your team member, and you could trade it or, sell it off and, get some points in return and, buy something else, right? So this is where it starts to get very, very interesting now, right? And then, of course, the trading card, which we talked about related to the sports as well. So trading cards was the first thing which got here. And if you realize, this was a time when Pokemon was kind of becoming very popular, right? So you see that kind of ideas were going around at the same time, right? And the NFT, the blockchain technology was coming up, and people were kind of seeing in different perspectives. And this is where suddenly you see it gains that critical mass, and boom, we are in the time where suddenly NFTs are so popular, right? And just before that happens, the rarity picture of it comes into the scene, right? Which is where memes and crypto art and digital art now start to become more mainstream. I mean, we saw that in 2014 and 13, people were doing that. Those were the very first initial ones, which were not discovered by then. But 3-4 years later, now this is the point where now this digital art is going mainstream, right? And this is one of those very first ones called as rare peeps, which was like frogs and stuff, and some digital background, and this started to sell around, right? And this is when it starts, and after this came CryptoKitty and all bunch of things where it got popular. And one of those, of course, we have to mention this is CryptoPunks, where again you see the key factor which we talked about. It had to be a limited number of supply, right? So this is where this was the biggest and the first big one which came out, went out into the market, and this is where it all started. And now it starts to go mainstream from 2017 onward. This is the last 2 to 3, 4, 5 years that we have been looking at it, right? And then today we are in the, typically you could say you see NFTs everywhere. And this was one of the questions as well, which people asked, that if we have to get started with NFTs, where do we go and how do we do it, right? So what I'm listing here is some of the very popular marketplaces, which kind of help users like you and me and many others who are new to this to go on, create your digital assets. It could be art, it could be a little bit of music, it could be, I mean, creativity is wild out there, right? So you could go ahead and you could create an account on this, spend a bit of money, get those tokens in, and you can start listing it, and people will buy it. And there are various protocols to do it. You could create it as an auction, you could have a royalty, where royalties are, subsequent sale of the NFT could get you returns over time. Today, when you sell something, you don't get anything in return because you cannot even trace the ownership of NFT, who has it. But now, because this data, this information is being recorded on blockchain, you can actually trace it now. So if the third, fourth, fifth, sixth buyer is buying it, you could say that, well, I need a 10% royalty on every sale, right? So every time there is a sale, you get 10% of it back to you, right? So this is very, very powerful, right? So OpenSea, I mean, no mention of that, is the biggest and the largest of the NFT marketplace out there. Mintable as well, and then there are various other variations, and kind of, like I said, when you curate it to an audience, right? So these are again catering to different audiences. For example, Mintable says you can mint it for free, right? And when you only get to pay the fees when it's, for example, there's a sale happening, right? And then Binance, of course, one of the biggest blockchains out there. They also have a huge, big NFT platform out there. Portion, again, is another one, super rare, very unique, and few items. So if you go to OpenSea, you see something like 50,000 and probably lakhs of NFTs. But if you go to something super rare, you will actually see it has less, but very, very rare items, right? So you see all of them have a different focus, different kind of audience, right? For example, you go to a movie theater, you have a different audience versus you go to see a Nukkad Natak versus you go to see something in a NCPA play, right? So different audiences, different themes, and what you have to do is
is now review what actually attracts you, right? What is your specialty, and how can you sell that specialty? Today it is about you. Today it is about the creators, right, and empowering the creators. And all of this technology is there to empower you as a creator, right? So that's the biggest takeaway, and one of the important things which you should take away from this session, right? So I wanted to see if you have any questions on this point of time. If you see what I could take some of the questions here as well. So let me know. I'll go in the sequence. Someone had asked, are NFTs the future of art and collectibles? So typically, yes. The way the market has come about and the maturity today, you could typically see NFTs will be the future of art and collectibles, and more as people get used to it and more creators come on board. I believe most of it will be driven through the NFTs there, right? For example, if you consider India, we have so many native and traditional forms of art, right? For example, Madhubani paintings, right? Now, those can go on here, right? Your craftsmanship of, weaving carpets, right? So some region in India does that, right? So clay paintings, right? I was contacted by someone who does this 3D model out of animals out of clay, and we were talking that how could we do these NFTs and what to do. I mean, he was doing that as a hobby, went to support his father's business, and now he is like, okay, I have some time, I want to get into it. And could we even use NFTs? I said, absolutely, you could do that. Create a composition of 100 animals, wild animals, but make them a little bit interesting, right? You could have an elephant with a giraffe's neck, right? Or you could have a rhino with a tiger. Now you get creative, right? And post these NFTs, create those mediums even before you have created that. And that was something similar to the yacht example that we saw, that before even building the yacht, he actually got all the idea. And then, of course, then you create that interest, create that demand, and then go ahead and launch the NFT so people will buy it. And then, you could use that to actually build your entire NFT collection on these 3D models of these super rare, creative wild animals and wildlife. And then, you go and sell it out to people who have bought those NFTs, right? So absolutely, that's going to be the future. As much as I see it, India is taking a bit slow, but suddenly in the next 3 to 6 months, you will see there's an explosion out there, right? So the time, if you want to get into it, is now, yeah? So what NFT marketplaces are out there? We talked about that in the previous one. Of course, if you just do a Google search, you will find so many of them. Again, look through the terms and conditions, look through what the listing fees are, look what they charge you. Try to go for something which is free, because today many of those platforms are there. And this is where, as creators, as users, you get the benefit, because they will want you to come on board and they'll say you can list it for free and pay only when you are making a sale, right? So look for those things, right? What are the challenges of NFTs, right? So we'll get into that in the following slides, right? Future of NFTs in the world of Web 3.0. We addressed quite a bit of that in the initial stages. It's endless possibilities, and some of the other possibilities which we will also cover in the following part of the presentation. Yeah. Interesting question here. What things should one check before investing in NFTs? That's a very good question, and this is where I talked about the rug pull. So again, everything starts, and some people will try to take advantage. Some people do it for a good reason, to show that the technology needs to improve a little bit, and that is where you have to sort of start to respect that, you're trying it for something good, for a genuine reason, right? So today, if you want to go and check what should be done for NFTs, first go and buy them from reputable platforms, right? Then, of course, many of these will give you a little bit of fingerprint data to actually show who is the owner, current owner, and where it is, right? Now, there are some other ways where you can actually now find, and people are working on this technology, and I've been across one of them, where a piece of digital art, it could be, let's say, hosted in multiple places, right? So there is a bit of an AI, which is being involved here, which people have started using, where they want to find out if this is a duplicate or there are multiple copies of this same NFT, in other places. For example, you could take a print screen of this thing and say, well, this is my NFT, but maybe it is not, right? And people do these kind of things, right? So you have to be careful. So use the technology, and some of it is actually coming up. So when you go to these marketplaces, the best thing is to go with the reputable ones. If you're considering seriously of investing it, then look at the history of the person and the artist who has done it, right? It's typically as you would go to buy something on Amazon or a Flipkart today, right? I mean, you would want to see the seller is actually a genuine seller, and there has been a bit of enough history, there's a bit of description,
because many of these are digital artists, they actually sometimes also explain their vision of why they're building it, right? So see if it makes sense to you, right? And then start to invest it. And of course, if you see if that particular owner of the creator has done some previous collections and sold them, you can also gauge a bit of you can also gain a bit of idea on how those will appreciate over time, because you're investing it to get returns over time. And now what is happening is interesting thing is this case of fractional NFTs, right? Where you don't have to buy the entire NFT, right? You could just claim a fraction of it, and then however the sales proceed, you could get the benefits out of it over the longer term, right? So it's a bit of due diligence that you have to do, but think of it as an asset. Just don't think of it as something that you just go and buy it. Like you would do investment in the stock market, you would do your due diligence, you take care of the necessary steps, do that, and then only go ahead. And unless you're absolutely sure, don't go and buy something, right? And that's the big rule of anything being sold over the internet. Yeah. So how do you invest in NFTs in India? Like we said, there's one example which I covered here. It is coming up. India specific marketplaces are not there yet. They are in the process of making. In the next 3 to 6 months, you will see a lot of it is coming. There's a lot of these blockchain companies also investing and supporting builders like me and many others to build technologies. So you will see some of these will come. I talked about the Mahindra NFT. There was recently one also I came across from Make My Trip. Now Make My Trip, again, it's a travel destinations like, and similarly I had come across one from Zolo Stays. I think they had done a similar one where their NFTs 3D. It was very dynamic, very nice, cool things related to about different travel destinations around India, right? So they are coming up, and if you see, go to these big names today. Mostly they are the ones getting into eternity because they also kind of bring in a little bit of that trust and brand value behind it, right? So so go ahead and look for those. But it actually means that if you want to do it, think of it if you want to create your own marketplace. Get around your location, see if there are some people who are actually creators, artists, music, creators and stuff like that. Go with them, right? Talk to them and introduce this concept. Stuff which you have learned today and even beyond this, go and learn a little bit more of this stuff and see if you can partner with them, right? You might know a bit of technology, so help build the technology, get those people on board, and there you go. You have an NFT marketplace specific to India, right? And you can go start selling it, right? So get into it. I mean, that's the best thing I would say today, right? Steps for beginners, we will take that in the following slides. Tax treatment, again, well, that's a touchy topic, but yes, the government understands it. I would say don't complain against it because these are very new things, and it's not only India government, but world over people are trying to understand how to control it, because you see, the biggest thing is you have to understand that the regulation is not there to stop you from doing something. It is actually there to go and do without the fear factor of losing it out, right? If there is no tax on something and someone goes and scams you out, you cannot go to the court and say, well, this person sold me something. And well, the guy will say, but you don't have any regulations how to deal with this thing, right? So you're left with nothing, right? For example, when you say, why do you have brakes in the car? Now people will think that, well, brakes are there to stop me from traveling, but actually brakes are the only thing which help you run your car at 150 kilometers an hour, because there are brakes. If I can stop, I will have the brakes to help me stop it. If there were no brakes, you would be very careful of driving it even above 60 kilometers an hour, right? So that's where regulations are. So let the government do. There are various opportunities where you can also contribute to these discussions. Go ahead, understand it, be part of the discussion and help build this ecosystem, right? And then we had a final question on, can we loan an NFT? Of course, those protocols are coming. I talked about fractional NFTs. So that definitely is there. Loaning NFTs is, yes, once you have enough, you could have an NFT marketplace where, someone wants to do a session, or metaverses, right? These technologies are being built where, for example, today, curators and art museums, they want to do a show. So they might be calling in the original Picasso from for example, from the Louvre in Paris, right? So if you have those exclusive NFTs, people will come to you and say, well, can you loan that NFT so we can showcase in our metaverse of this digital museum, right? Where they are, showcasing other NFTs as well. So yes, this will happen, and definitely you will be not only making money out of just, selling it, but actually loaning these items as well, right? So very, very interesting things are going to happen, and the right time to get into it is today. Yeah. So moving on,
we will get into the last part of this discussion as to how and actually how things happen. We have about 15 to 20 minutes left. So again, blockchain, a little bit of the basics. What it is, what it has been about is, one is identity, which is where you have the blockchain wallet address, right? Then comes the contract, and contract is typically the agreement on what and how we interact with each other. For example, there's two people sitting on the other end of the two wallets. How do they interact? Which is where your smart contract and the code and everything comes into the picture, right? It actually is a settlement. For example, I mentioned royalties. So royalties are part of a code which will sit as part of the contract. And that is when every sale happens, that contract will ensure that all the parties who are supposed to get royalty will get royalties. Now, you could be 2 or 3 people working together, and they'll say, every time a sale happens, we want to split the proceeds of the sale, 33, 33, 33, like equal parties, right? That is what the contract will do. And the last part of course, it is the payments, which is the transaction, which is the actual transfer of funds. Now, this was all that was blockchain initially, until NFTs came and they added the asset, right? So if you think back, even your cryptocurrencies, even your coins are assets. And now you have this different kind of digital assets, which give you that link between a real world asset and provide you that tangible touch and feel, see kind of a thing with the blockchain itself, right? So these three plus the asset, and that is what makes this technology very, very beautiful and exciting for everyone today, right? So quick recap on tokens. Like I said, Ethereum did a lot of this initial work, and most of the other blockchains are catching up. The ERC standards is what it is called. Many of you might know about it, but I'll quickly recap here. So ERC20, which is mostly to do with fungible tokens. So fungible tokens is anything which can be divided, which can be traded. They're all the same. Like your 100 rupee notes, it has the same value in my hands, it has the same value in your hands. You can divide it into, exchange it for 10 into 10 of 10 rupee notes. And that is what fungible tokens are, right? I mean, you can just go of it anywhere, right? Now, if you were to say that I have a 100 rupee note with this serial number, that is when you're saying that is a unique note. And if you say, well, it has some very special number, for example, 000123, and you say, well, this is a note which I handle, and today I want to sell it not for 100 rupees, but 10,000 rupees. Now that is an NFT, right? So you see, from something which is a random serial number. So now you go and look inside your wallets and see if you have those special numbers, save it, don't give it to anyone. And 5 years later, or 6 months, later, not even 5 years, even a few months later, you can create an NFT out of those and say, well, this is a unique number sequence, right? And I'm going to sell it as NFTs to the person. You can create an auction out of it, and a 100 rupee note, you might even be able to sell it for 100,000 rupees, right? So that's the beauty of NFTs, right? The uniqueness, and that number, that 100 rupee note with that fancy number will be unique, right? Just as many of you go and buy this, you get this card number like 7777 or 6666, right? People pay extra for those unique numbers. Many of you even get this fancy mobile numbers, right? With unique sequence of digits. People pay for those things, right? So you see, that is what brings the value to this kind of NFT, right? So ERC20 is everything that is kind of transactions as money and cryptocurrencies, and then controlling the NFTs, the non-fungible tokens, which are sort of come from the factor of uniqueness. The base standard is 721, which was the first one to come, right? And it just mentions one unique token per transaction, right? Now, people later on, they improved it to come up with 1155, which is where you can do multiple assets. It's very similar. So you could think of it as a multi-token standard. You can transfer multiple tokens, multiple ERC20 tokens or 721 tokens to a single user at the same time. So it's more of a cost efficiency and an operational efficiency rather than creating a new standard. So the base tokens, if you always have to think of it in terms of ERC20 for kind of crypto transactions, and 721 for NFT transactions, right? NFTs, of course, like we said, it gives a lot of power to the content creators, and they're controlled by smart contracts. Again, they're unique digital assets. I will skip through this. Now coming to the value proposition, right? So we talked about everything is there, but the biggest thing which NFTs add is this presentation layer, right? Which is now which you can actually see things, right? Before also transactions were there, you could verify it, a transaction has happened, those stuff can be there. And the other thing which comes because of making it digital and available
over the blockchain network is these two things. Now, for example, you had a nice painting sitting at your home, right? But you cannot really show it to anyone outside of your home. You have to bring them to a museum or something. But now if you put it on blockchain, on an NFT marketplace, it is actually accessible and available to everyone around the world 24/7. So you can keep creating and selling without stopping, right? And then of course, these are some of the biggest value propositions of why using NFTs compared to anything else. And this is a quick summary of how typical forms of assets compare versus NFTs. So physical, of course, access is limited. It can be created, duplicated, faked. All of those things happen. Digital, again, if you do similar things, but a little bit better. Blockchain, yes, people have done that before, but the biggest challenge with blockchain, the erstwhile technology, was that you could not present it. You cannot present a hash of an image or an artwork or a music to someone saying, well, this is my NFT or this is my asset, right? But when you move to NFTs, you get the benefit of everything else. And that is why NFTs are so much powerful today, right? So again, looking back, so what do you do with these NFT token standards, right? So 2 or 3 things which become very, very useful here is when you think about NFTs. One is, of course, the artwork or the digital asset itself, which is, it could be this, could be a music or could be something else. And the next part of it is the metadata, right? Or, the data attributes, if you get to think of it like that, right? So for example, if you describe between 2 people, you say, well, height is this much, hair color is brown, eyes are blue, eyes are green, all of those kind of stuff, right? So this is actually which describes it, right? And that is where you kind of also try to display the uniqueness of this kind of asset that you have created and you're trying to sell it. Yeah? And then, of course, we talked about the 721 token standard that is there, 1155. These are all available. You can read over the internet as well. So I'll skip through these. And through this part, we will go into the art and other use cases, right? So art, music, that's mostly what has been done. We saw some of the physical assets being sold, like the yacht case. For a social cause, we saw the Mahindra case, cricket's NFTs. Amitabh Bachchan also created some of his NFTs, and which were sold for, I believe, around 7 lakh plus. So these are already there. But what is happening beyond that, right? Which is, how does this get mainstream, right? So conferences, social meetups, webinars, and all of that stuff, it's already happening. If you are active with any of these blockchains or you attend these events, you will see that many of them have now moved to doing these event passes. For example, you go and book a show on, book a movie ticket on Make My Show, or Book My Show, sorry. They'll give you a ticket stub and electronic, but now these are all moving to NFTs. So what happens is, after these NFTs, after you have been to the event, you get a proof of attendance. So those are called as POAPs, right? And now you could use those to build a community around it. Well, hey, I was in that event. How did you like it? Versus when you go to a movie store today, once the movie is over, there's nothing else, it does not bring the community together. There's nothing, you go on your separate ways, right? So now you see with these, you're kind of building a community around it. And that is where it becomes very, very powerful in the social domain, right? And then you could do awards distribution. And we have done a few of these, very interesting, where today you create events, you recognize someone, and we have received certificates for our school, music competition, dance, races, sprint, football, cricket, sports, everything, right? But imagine today, these awards are now being given via NFTs, which means you have that NFT with yourself, and anywhere you want to show it, you can actually show it, right? Versus a paper certificate, it's actually sitting in your drawer somewhere or in a folder, which you cannot actually take everywhere, right? So, yeah, that's a bit of... Sorry about that. It's celebrations. I believe people are already happy about this thing. Okay, quick recap on the awards. So last month we partnered with the organization, and we were the first to do the fashion awards as NFTs in India, right? So this was IFA 2022. We did another event where we were giving out NFTs in the telecom industry, some very senior folks. And the most lately, what we did was we partnered with Your Story Media to do NFTs for the top 25 blockchain companies in India, and there's quite a bit of coverage here as well. So this is the list. If you want to look at it, I can share this with you all. The chat is here. So the idea is to share with you all the fact that NFTs are and can be used in various other applications. Some of that we have seen, but these are like again, going out and exploring these things, right? Of course,
decentralized organizations and social communities. So you give an NFT of token to someone as a proof of membership, right? And then on basis of that, you can build so many things, right? You want to, let's say, do a community voting because you want to decide, well, should we do a meeting on 24th of this month or should we do it on the 15th of next month? So people who have those NFTs can actually vote and decide on a date, right? So you can program those things, right? You can manage your memberships entirely with NFTs, right? And that means that you do not have to build a lot of infrastructure, a lot of applications to do that. The blockchain infrastructure is available for free, right? I mean, the blockchain companies are not charging you for anything. I mean, all you have to do is once you're interacting with you pay for the transaction fees, and that's all, right? So you can do a lot of these things, right? Academics, right? All your project work and everything that you did in school, your class 10 certificate, class 12. If you believe me, you can actually go. CBS has already started. They have a website where they are issuing certificates on blockchain. So this is already happening. We are not behind in India. We're actually doing it already, right? And some of the work that we have done is also not only giving certificates to students, but also giving the hours of teaching to and crediting it to the teachers, right? Because some of our customers in the US, they have mentioned that these teaching hours are useful for them to actually go and apply for some kind of grants and other stuff, right? So someone who's teaching, for example, history for 600 hours, right? They might apply for a certain grant or certain benefits from the state organization. So we are creating dynamic NFTs for those people, right? And if you try to extend it, not only this, but you could actually automate and build entire learning management systems using this as an infrastructure, using NFTs, right? And you could say that you pass out of a certain college, you have a certain certificate out of that, so you are an alumni. You don't have to register in certain databases and maintain Excel sheets, but that NFT of a certificate of a degree from a certain institution automatically makes you an alumni of that, and it's there on blockchain, right? So then you can invite other people, other companies who say that, well, I want to partner with this, or I want to extend a benefit to all the alumni of this institution who passed out in, for example, 1996, right? And that is something which you can very easily do with NFTs today, right? So it is that powerful, right? And you don't have to build a lot of stuff. The data is already available, right? And of course, in business and work, your company identity, many of you would be running this. You're using these identity credentials, badges, physical, digital. You could go all of it and switch to NFTs where, you control who gets it. And you could control any fraud with how many people have access to your, internal data and, company assets and all of this kind of stuff, right? So a lot of things can be done here, right? So quick now, last 5 minutes. I know we're almost at 6 o'clock, but we started 10 minutes late. So I'll quickly, give you an insight of if you wanted to get into this, what are those few things that you could pick up very, very easily, right? So here are some of these names. Solidity, of course, if you're talking about Ethereum sort of networks, then Solidity comes in the picture. But now there are many other blockchains who also have NFT capabilities. So if you're working with something like a Ripple, then JavaScript is good enough, right? I mean, you don't need a lot of Solidity. Now, Solidity, again, it can be tricky, but thanks to the team at Open Zeppelin, they have built this, like kind of click through a few options, and you could launch Solidity smart contract, which we will do in a short while, right? And of course, IPFS. Now, IPFS is called as Interplanetary File System. What it does is it takes the data which you publish on it and kind of distributes it across multiple nodes. So, your data is out there and it's publicly available, which means there's no fraud, right? And you can control a lot of fraud there, and people trust it. If you say, yes, my data is available on IPFS and this is the link, then you will build more trust versus saying, well, I have it in my Google Drive, because you can anytime delete your data on Google Drive. Yeah. So that's the challenge. And of course, you will need a blockchain network. Now, Ethereum, because it's very costly because of transaction fees, you have the option today of working with different blockchains, which give you some of, like we said, they give you mint free or they give you low transaction fees, all of that stuff. So you can talk about the names of like Polygon. Many of you would have heard about it. There is Celo. There's Binance, Cardano, Solana, I mean, all of them, right? So you have multiple choices today of, creating your NFTs and launching in them, right? So let's go and let's do some work. We'll start with Open Zeppelin. And if you go to Open Zeppelin, I mean, this is the link. I mean, if you just Google it, you'll get it. But search for Open Zeppelin Contracts Wizard, right? And this is something which they have done very beautiful.
Here you can come, you can click on ERC 721. You can, you can give it a name. So for example, if you say WISE, and then you could give it a symbol, right? And you see the contract is actually updating. So this is kind of a playground here, right? So base URI, you should leave it as blank. Of course, you want it to be mintable because you want to mint it, right? As a default case, you can leave it auto increment IDs, but if you want to customize your IDs, give it a certain unique number that you want, you can do that. Burnable, which means you should have the option to burn the token, destroy it as well, right? Things can happen. And then there are some other things, right? One basic thing you should do is always click on URI storage, which gives you the option to provide a link to your token or token data, which is coming from the IPFS. So with these minimum configurations, you can launch your token. So once you have done this, and of course you can add your email here, and that should be the way to go about it. And that's simple. And what you do next is just click this open in Remix, right? So this will launch your compiler in Remix, which is based out of Ethereum. It takes care of all that stuff in the background, so you don't have to worry a lot about it, right? And just give it a few seconds, and it will come to life. In the meantime, what we will do is while this stuff is loading, we will go to NFT.storage. So this is kind of what the IPFS team, and there's a very good number of people working behind this project, is the Protocol Labs. What they have done is they have made it easier for us to actually host our NFT. So it's actually called NFT.storage. You go there, you do a login. It's very simple. You can just punch in your email address, and they will send you a magic link to sign up, which will kind of go ahead and do that. And it says check your inbox. You actually click here. You don't even have to go anywhere. So it goes, and this will open your email. Give it a second. Right, boom. Okay, here it goes. Right. So you see, I've logged in a few times. So and this will log you into NFT.storage. Right. And let's see if our Remix. Just refresh it a bit. Okay, so Remix is loading. We've already logged in here. So, okay, so this is going through the login process. So there are 2 or 3 things which you have to handle, but once you get a hang of it, it becomes pretty straightforward from there. Okay, so Solidity. So this is where it will load the contract that we pulled from Open Zeppelin, right? You could, of course, if you know a bit of Solidity, you can write the entire thing, right? So what you do is now this is something which is just loaded. Whatever we had in Open Zeppelin, it kind of brings it here, and then it will help us to compile it and run it. And then you will see we will be on a blockchain very soon, right? It's typically under 5 minutes of work, right? Okay, so here you see, some of the other stuff that I've done is already here, but in a simple form, you could go, what you do is you choose a file, just like, you would upload anything here, right? So I have created something here. Let's see where it is. Okay, so let's see, this is today's event, right? And let's say if we are doing this as a proof of attendance, right? So POAP. Yeah? So let's just do this. It's uploading now. Let it upload, and we'll see what it does. And you can upload PDFs. You can upload a bunch of things, right? And so that's how it works. So this is the first one. So you get a CID, which is a content identifier. What happens is this thing is smart. So if you upload the same file over and over again, it will actually not upload it, but it will actually give you the same link, right? So it does a bit of smart thing and stuff like that, right? So what you do is you go to this thing, and it will give you the link of where the data is. So you see, now you got this strange, weird looking link at the top, but you got this image, and this was the image that we had uploaded. So you see, it's a matter of 5 seconds, right? So that is what happens. I will just open it up on a slightly different link, right? Which will be useful for us to put it in our token, right? It's just the same. It's just how they resolve the URLs at the backend, but it's typically the same thing, right? Going back to our Remix, so now you see our contract is loaded here. So what we do is we just hit the compile button, and now the compiler does rest of the stuff. And what we did in parallel was we hosted our stuff on IPFS as well. So now we have, so now we have this NFT, and this is your kind of your artwork, right? It could be a GIF, it could be a small movie, it could be a piece of music, something which you have created, and
animations, whatever you can think of it, right? It's your creativity end of the day. Yeah. So this is done. So that was all this. Now compilation is done. So now you see our contract is ready here. And then what you do is, if you're using your own MetaMask wallet, which is something that you will need, it's very easy to install it. Just go to metamask.io and you could install you could set this up. So, for example, I have a little bit of test tokens on the testnet of Polygon here, right? So this is there. And to now publish this contract, this is actually the smart contract, which you can now deploy it on blockchain. So what you do is, once you have done it, you go, you go to the next tab. So it's compiled here, and you go and switch this to, now they have updated it. So you do an injected Web3, right? And what it will do is it will pick up your network and your account from MetaMask. So 8001 is the the chain ID typically if you talk about Polygon, and that's typically it. And now when you come, you select your contract, which was this one, Wise, which we just put over there. So you've selected the contract, and what you do is you hit deploy. That easy, right? And now it will ask for you some gas fees and all of that stuff, and we'll just do that as soon as the screen loads up, right? Okay, so this is their site suggested. So sometimes you want to switch it to market for to get the best gas price, and then you just go ahead and confirm it, right? And that typically will take you to the deployment. Right? Okay, boom, there we go. It is already deployed, right? So if you go, and what it does is at the end here, you see it says your contract was deployed. Now what you can do is you can copy this transaction hash. You can go here onto this, which is the scanner, right? All the blockchains will have a scanner, and that gives you the history, right? So you see, we just did this 28 seconds ago, and it came from this address, which was the address we had in there. This is the contract, right? So this is typically our NFT smart contract, which is sitting here, right? And it says we just did a first transaction, a few seconds ago, and that was a contract creation, transaction which we did, right? So that's all. Now you have it. Now you can start to create your NFTs, right? So remember we had this link. This will be useful. So now we go back to Remix, and now you see as we click. So there's a bit of a trick. So once you get deployed, you have to come back to the corner here, bottom left, sorry. And then you can see a bunch of options here, right? Now the orange ones are the ones where you'll have to pay a little bit of money, right? Which is where you have to approve in MetaMask. But the rest of it is actually, kind of read function. So reading is free, right? You don't have to do anything. You can just read it, right? So if I just go and, we put this as Wise, right? So if I just go and click on symbol, it will tell me that the symbol is Wise, right? You see, I'm reading it, right? So it is that simple. Now, contract name again is Wise because I put the same name. Owner, if I go, it is this account, right? So because I created the transaction from this account. So you see, these are some of the read transactions, right? So now what we will do is we'll actually go and mint a token. So for doing that, what you have to do is you have to do a safe mint, right? So, and this is very, very interesting. So you do a safe mint from address. So from has to be the address of your account, right? And you're minting it to a different address. And then you give a token ID here, right? So that is, a few of the things that you do, right? So what we can do is we can go ahead, we can copy our transaction. Actually, you kind of copy your account here, right? So this is this. Okay. And then you can pick up any other account if you have, or if this is a account you're transferring to, you can also do that, right? And this is where you're not typically using any of those these marketplaces, right? I mean, if you have someone's account, they give it to you, you could actually just do that. So I pick up a second account and I put this, right? Okay, sorry, before that, my bad. First, you have to do a safe mint, right? I skipped a step. So actually what you do is you safe mint to your address. You can actually mint it directly to others' address. And then you see there is this URI, which is now, you go back to your IPFS and you capture this URL, right? And you come back to Remix and you say, this is what I do, right? And since we're not
put token number, it will automatically create a token ID, which will be, I think, 1 in this case, right? Or something like that. We will just see, right? And since because this was an orange one, it needs a certain gas fees to be paid. So it will come and show us that you have to pay this much fees. You switch it to like this market. So otherwise your transaction can sometimes fail. And this is something I figured out that now you could try that on your own. So now you will see this transaction will go. Just give it a few seconds. Okay, so this transaction is there. Now, if we go back to our contract, which is this our contract page on the blockchain, what you can see is there will be a second transaction. It takes a bit of time to just reflect it on the indexer. It should be any minute. Well, we'll come back to it. Not to worry. It will be there. It just takes a bit of time to show up. But what we have here is now, if you look at it, move this around. So actually, you can go and look at this data, right? So it took this much. This was the URI. This was the transaction which is minted to it, right? And these are the arguments, right? So you see here, it gives you the token ID. Now we said that the token ID is, let it be automatic, right? Otherwise, you can create your own token IDs or naming scheme. So token ID 0. So now we have a token ID 0. And now we can go back to our read functions and say, we want to check the owner. So we put a token ID, which is 0, and we do a call operation, right? And it says this is the current token ID, right? Now you want to see what is the data linked to that token ID. So again, you put 0 here and we call, and it will give you the link of the IPFS. So now you see, we put that on our distributed storage. We created that link of that digital asset, which is sitting on that IPFS URL, linked it to our blockchain. And now anyone who wants to come and see this can verify that this is the owner of token 0 and this is the digital assets, right? So you have combined 3 things together, and that is the power of NFTs and blockchain coming together here, right? So now, as you are the owner, only you can transfer this token to someone else, right? And that is the next thing, right? So what we will do here is, for the sake of completing this, let us see if that transaction shows up here. Okay, so it came here, it's already visible. So this was a mint operation, right? And the token number 0 is created. If you kind of click on it, it will give you more details. You see token ID 0, which is the contract, who it came from, who it went to, right? That kind of stuff. So now what we do is we want to transfer it to someone, right? So we went ahead, we actually grabbed our account here. We go back to Remix, and then we do now a safe transfer, right? So we actually have it done, and now instead of this, we put a token ID 0. That's our initial token, and it will again ask for our permission. We have to pay a certain gas fees, right? And this is the part where some of these marketplaces will enable you that the fees are paid by the buyer and not actually from the person who's actually the current owner, right? So and this is where these marketplaces are useful because they help you do and come up with these things, right? Okay, so let's do this. Okay, so this transaction will go now, and if we go, let it just give it a second. And what I want to show you here is currently the owner of 0 was starting from let's say ending in 95C. Once this transaction goes through, we're just waiting on that. Okay, so this transaction has gone through. Now, if I go and check the owner of this token ID 0, you see it changed now to 16D ending, right? So you see the token transfer, which means your digital asset has been transferred to the other side, right? So this is where, in a very short span of time, in under 10 minutes, we were able to, go to NFT.storage, create our distributed token URI. We came back to Remix, we created our smart contract, we deployed it on the Polygon blockchain, and then we came back, minted our NFT, and then we were able to transfer it, right? And this is where all things happen. Now, you might be saying that, where did I get the money? Of course, that person has to transfer you the, let's say, whatever cryptocurrency, if you're dealing in that, or even sends you something via UPI, and then actually you can transfer it, right? So the issue is, why do we need marketplaces? Because they bring that trust in trade, right? It's kind of an ownership, right? Where they help you that, you or someone who's selling it to you does not just take the, money and does not give you the NFT at the end, which is kind of the
rug pull scenario, right? So, that's pulling the rug under your feet, right? You got the money, but you didn't give them an NFT and you gave them some random URL which does not have the file anymore, right? So these are the things which have happened. Now we're almost at the end of time, so I'll skip through the last part of it. And this is to talk about what NFTs could mean. And this is towards my closing side, last 2 or 3 minutes. I had a presentation or a quick demo of our own tool for Wise, but I think we'll probably take it over in the next session. So coming back to this thing, if you see now NFTs, you can go across every kind of vertical that you could think of. We talked about identity, we talked about academics, we talked about work, social engagement, events, and all those awards, but digital and physical assets, we had some of those. Even financial and medical, right? You could put your insurance claims here, and you could put your loans and all this stuff. Medical, which is your, medical insurance claims. A lot of stuff can come, right? So you can actually build. The possibilities are typically endless, right? And this is just closing it on this. What we do is we have a complete API toolkit which is ready and available, so you don't have to go through all the hassles of writing smart contracts and building all that stuff. And we have been extensively covered by your story, that stuff. So this is there. Wise.ws is our website. We won't be able to do the demo today because we've run out of time. But this is what it is. You can see and read a lot of this. If there's need, get in touch with the CryptoWire team. Rekha is there, or else reach back to us, and we'll help you get on board with the NFTs, and if you have certain projects in mind, right? So with that, I would like to close this session, and this is the mission of why I'm doing it, and that is why in the beginning of my session, when I said CryptoWire team is doing a fabulous job of empowering everyone to understand first what this technology is, what those capabilities are, and what we could achieve. Today, you don't have to depend on others. You can build your own stuff, you can go and market it, and you can create value. And if you feel like it, you can go and partner with others and help them get on board as well, right? The idea is we make the internet ownable and we make it work for us. So with those closing thoughts, I would like to thank all of you for being such a fabulous audience. It was great to connect with you. And finally, thank you, CryptoWire team and Rekha as well for this session and giving all of us this opportunity to come together and talk about NFTs. If there are any questions, let's take it in the next 5-10 minutes, and we'll call it a day. I don't think there's any more questions that have come up. Is there any more questions that we have? We can take it up. I answered most of them, which we yes, I realize that most of the questions have been answered by you, and we haven't got any more questions as of now. Okay, good. So fine. If there's something which comes to you, then absolutely, and we'll handle it. Sure. So, I would like to thank Saurabh for taking our time and sharing his views on NFT and its evolutions. It was an interesting presentation, Saurabh. I really appreciate the time you've taken to put this together and explain it in such a beautiful way to all of us. I would like to also thank the wonderful audience who have shown interest in learning and making informed decisions before entering the crypto market. I would also request all of you all to kindly download the CryptoWire app if not done already and be a part of the global learning. Thank you so much. We will now be meeting in the next session, which is on the 17th of May. Thank you so much. Thanks, Saurabh. It was really nice interacting with you. Lovely session. Thank you. Have a wonderful weekend, everyone. Bye-bye. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Vishakha Thakur. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में। आखिर क्या होती हैं ब्लॉकचेन गेम्स, इन्हें कैसे खेलते हैं, ब्लॉकचेन गेम्स में क्या रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हैं, व्हाट आर द टॉप ब्लॉकचेन गेम्स एंड मच मोर।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज को पावर करने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस है जिसे नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के कारण लोगों के लिए ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर बात करें कि गेम्स में ब्लॉकचेन कैसे यूज होता है, तो टिपिकल गेमिंग सिस्टम्स में यूजर्स अपने गेम की अर्निंग्स और इन गेम करेंसी को सिर्फ एक ही गेम में यूज कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन गेम्स डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल यूज करते हैं ताकि यूजर्स अपने गेम डेटा को ओन कर सके और दूसरे ब्लॉकचेन गेम्स में उसे यूज भी कर सके। है ना इंटरेस्टिंग? अब एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर यूजर एक ब्लॉकचेन गेम खेल रहे हैं जहां वो एक्सपी और वेपन्स विन करते हैं, तो वो दूसरी गेम्स में भी अपनी इस गेम की विनिंग्स को ले जाकर उसे दूसरे प्लेयर्स को सेल या ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हाउ डू ब्लॉकचेन गेम्स मेक मनी? कुछ ब्लॉकचेन गेम्स यूजर्स को गेम खेलते हुए क्रिप्टो करेंसी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल गेम के थ्रू अलग अलग तरीकों से क्रिप्टो कमा सकते हैं। ब्लॉकचेन गेम्स को NFT गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लॉकचेन गेमिंग NFTs को यूज करके गेम्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि रूल्स, कैरेक्टर्स, वेपन्स और स्किन्स। क्योंकि NFTs यूनिक होती है, इससे गेम एसेट्स में वैल्यू एडिशन होता है। प्ले टू अर्न गेम्स में प्लेयर्स अपनी NFTs को मार्केट, एक्सचेंज या ऑक्शन में सेल करके क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। हर NFT की वैल्यू करंट मार्केट और NFT की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर हु प्लेज ब्लॉकचेन गेम्स। कई तरह के लोग ब्लॉकचेन गेम्स खेलते हैं। 3 मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन गेम्स के पास ओवर 2 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। मोस्ट यूजर्स US या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया और वियतनाम में रहते हैं। अब अगर हम एज वाइज बात करें तो 25 से 34 इयर्स के बीच के मिलेनियल्स अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ क्रिप्टो गेमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 18 से 24 इयर्स के बीच की जेन Z 27% ऑफ क्रिप्टो गेमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 45 से 54 इयर्स और 65 एंड अबव एज ग्रुप के गेमर्स की संख्या भी रिसेंटली मंथली ग्रोथ में देखने को मिली है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब रुख करते हैं ब्लॉकचेन गेम से जुड़े रिस्क की तरफ। यूं तो ब्लॉकचेन गेम्स एक फन वे में साइड इनकम कमाने का मौका है, और साइड इनकम किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इसे खेलने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कुछ गेम्स में एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सी इन्फिनिटी गेम खेलने से पहले यूजर्स के पास एटलीस्ट 3 एक्सीज होने चाहिए, जिसकी एवरेज कॉस्ट अराउंड $300 है। यानी $300 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए बिना आप ये गेम खेल ही नहीं सकते। दूसरा, अपने टोकन्स या क्रिप्टो करेंसी लूज करने का रिस्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेजी के फाउंडर ने स्कैम के चलते $1 मिलियन के NFTs गंवा दिए। वहीं एक्सी इन्फिनिटी द्वारा यूज किए जाने वाला ब्लॉकचेन रोनिन को ओवर $600 मिलियन के लिए हैक किया गया था। थर्ड, क्योंकि ब्लॉकचेन गेमर्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस जैसे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई नहीं करना होता, इसलिए गेम्स में फ्रॉड कॉमनली देखा जा सकता है। फाइनली, मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण भी प्लेयर्स मनी लूज कर सकते हैं। कुछ गेम्स तो यूजर्स को एक साथ सारे टोकन्स विड्रॉ नहीं करने देते, मींस देयर इज अ विड्रॉ लिमिट इन प्लेस। इससे कई बार प्लेयर्स को अपने लॉस को लिमिट करने के लिए टाइमली विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। तो हमने ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में तो जान लिया, अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन गेम्स को खेलना स्टार्ट करते कैसे हैं। तो ब्लॉकचेन गेम्स खेलना स्टार्ट करने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी ओन करनी पड़ेगी और उसे किसी वॉलेट में स्टोर करना पड़ेगा। कई सारी ब्लॉकचेन गेम्स इथेरियम पर बिल्ड की गई है, सो यू वुड नीड टू परचेज ईथर टू प्ले देम।
स्टिल आपको रिसर्च करके खुद पता लगाना पड़ेगा कि कौन से टाइप की क्रिप्टो करेंसी और वॉलेट आपके लिए बेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले आपको कौन सी गेम प्ले करनी है उसे चूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पता लगाना है कि कौन से टाइप की गेम खेलकर आपको मजा आएगा और उसे खेलने के लिए कितना खर्चा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये समझना होगा कि ये गेम कैसे खेली जाती है और इसकी गेम इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। तो हमने ब्लॉकचेन गेम्स के बारे में जब इतना कुछ जान लिया है, अब देख लेते हैं कि कौन सी हैं टॉप ब्लॉकचेन गेम्स। नंबर 1, एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी के प्लेयर्स एक्सीज कलेक्ट करते हैं, जो कि NFTs है जिसे दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट बैटल करने के लिए यूज किया जाता है। जब प्लेयर्स बैटल विन करते हैं वो स्मूथ लव पोशन अर्न करते हैं, जिसे एक्सी इन्फिनिटी शार्ड टोकन्स के लिए सेल किया जाता है। इसके अलावा एक्सीज को ट्रेड, ब्रेड और कलेक्ट भी किया जाता है। तो एज ऑफ अगस्त 2022 AXS की वैल्यू $17.67 है। सेकेंड, डिसेंट्रालैंड। डिसेंट्रालैंड प्लेयर्स को इन गेम लैंड बाय करवा के 3D वर्ल्ड में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना अलाउ करते हैं। प्लेयर्स अपनी लैंड में सेपरेट गेम बिल्ड कर सकते हैं, स्टोर ओपन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। डिसेंट्रालैंड के यूजर्स को इथेरियम ओन करना मस्ट है और वो डिसेंट्रालैंड की नेटिव करेंसी माना को भी परचेज कर सकते हैं। एज ऑफ अगस्त 2022 माना की वैल्यू $0.967 है। थर्ड, एलियन वर्ल्ड्स। एलियन वर्ल्ड्स एक साई-फाई गेम है जहां प्लेयर्स को एलियन NFTs को कैप्चर करना है, जिसका यूज आइटम्स को माइन करने के लिए किया जाता है। प्लेयर्स NFTs को ट्रेड करने के लिए, बैटल्स जीतने के लिए और मिशंस कंप्लीट करने के लिए TLM टोकन्स का यूज कर सकते हैं। गेम प्ले करने से पहले प्लेयर्स को माइनिंग टूल्स, लैंड और TLM की जरूरत होती है। एज ऑफ अगस्त 2022 TLM की वैल्यू $0.02963 है। तो आज के ब्लॉकचेन गेम्स के एपिसोड को यही कंक्लूड करते हैं। दिस इज विशाखा साइनिंग ऑफ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन वर्ल्ड की स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल, और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज हम जानेंगे क्रिप्टो और NFTs में किस प्रकार से वॉच ट्रेडिंग होती है। तो ब्लू हॉर्स टू लव्स एनाकॉट स्टिल, माइकल डॉगलस की 1987 फिल्म वॉल स्ट्रीट का ये फ्रेज ओवर टाइम बिकेम सिनोनिमस विद इनसाइडर ट्रेडिंग। आप कहेंगे इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग तो स्टॉक मार्केट में होती है और ये क्रिप्टो चैनल है, देन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट, राइट? वेल, आज हम क्रिप्टो और NFT स्पेस में इनसाइडर ट्रेडिंग के चचेरे भाई वॉच ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट हैज बीन अराउंड फॉर व्हाइल, ये हाईली रेगुलेटेड है विद वेल डिफाइंड रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। वही क्रिप्टो और NFT स्पेस अभी इमर्जिंग मार्केट है, डिसेंट्रलाइज है, इस वजह से अथॉरिटीज आर फिगरिंग आउट द रेगुलेशंस एज दे गो अलोंग। ऐसे में वॉच ट्रेडिंग जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि क्रिप्टो स्पेस में आने वाले न्यू ट्रेडर्स और प्लेयर्स इसके शिकंजे से बच सके। चलिए समझाते हैं आखिर वॉच ट्रेडिंग क्या है। वॉच ट्रेडिंग एक प्रकार की मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसे सरल शब्दों में गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म हसीना मान जाएगी के डायलॉग से समझाया जा सकता है। फिल्म में परेश रावल कहते हैं, जो चाचाई वही भतीजाई, जो भतीजाई वही चाचाई, और चाचा कोई नहीं है साहब जी। नहीं समझे? वेल लेट मी नो, मेक इट इजियर। वॉच ट्रेडिंग में जो बायर है वही सेलर है और जो सेलर है वही बायर है और बायर कोई है ही नहीं। मतलब वॉच ट्रेडिंग की अनएथिकल प्रैक्टिस में चाहे ट्रेड क्रिप्टो का हो, स्टॉक का हो या NFTs का, ट्रेडर या इन्वेस्टर सेम एसेट को खुद ही बेचकर खुद ही खरीद ले या फिर सेलर की बायर के साथ मिली भगत हो,
जिसे एसेट की प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी को आर्टिफिशियली बढ़ाकर बिना किसी डिमांड के उस एसेट की हवा बनाई जाए। इसी अनएथिकल प्रैक्टिस को ही कहते हैं वॉश ट्रेडिंग। तो आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि वॉश ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जनरली वॉश ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर फॉल्स सेल्स और परचेस ऑर्डर्स बनाकर नकली मार्केट इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि मैनिपुलेटर फेक सेल ऑर्डर्स बनाकर और इसे खुद खरीदकर किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक के आसपास फॉल्स हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है। कुछ मामलों में वॉश ट्रेडिंग में दो पार्टीज के बीच टकराव हो सकता है, जहां सेलर एक नई लिस्टिंग पोस्ट करता है और एक प्री डिटरमाइंड परचेसर एक नया ऑर्डर जनरेट करता है। जब फेक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो सेलर सीक्रेटली परचेस ऑर्डर का सभी या अधिकतर अमाउंट वापस कर देता है। मार्केट ऑब्जर्वर्स और ट्रेडिंग पॉपुलेशन के लिए ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए अभी भी सेल्स और परचेस ऑर्डर्स हो रहे हैं, जो झूठे तरीकों से इसकी मांग बढ़ा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एक हाथ दे एक हाथ ले की अनइथिकल वॉश ट्रेडिंग टेक्निक में वेयर इज द मुनाफा? फॉल्स हाइप क्रिएट करके फायदा कहां, किसको और कैसे होता है? तो ओपन मार्केट में सेल्फ ओन असेट खरीदने से वॉश ट्रेडर्स को तुरंत मुनाफे में कुछ भी हासिल नहीं होता है। हालांकि इस टेक्निक से वे खुद को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वेल इन्वेस्टर मार्केट वैल्यू के हिसाब से $10 के असेट के खिलाफ फेक $50 परचेस ऑर्डर पोस्ट करता है जो उसके पास है। इस मामले में फेक ऑर्डर पोस्टर को अपने झूठे ऑर्डर के लिए अपनी जेब से ही भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह का ट्रांजैक्शन करके वॉश ट्रेडर पर्टिकुलर एसेट क्लास के आसपास आर्टिफिशियल हाइप बना सकता है, जिसे फेक ऑर्डर में प्रस्तुत किया गया था। एक्सपेंसिव परचेस के कारण दूसरे मार्केट ट्रेडर्स के बीच स्पेकुलेशन के आधार पर एसेट क्लास की वैल्यू को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाता है। वॉश ट्रेडर इस आर्टिफिशियल हाइप का लाभ उठाएगा और उसी एसेट के अपने बचे हुए हिस्से को मैसिव रिटर्न के लिए बेच देगा। दूसरी ओर टेम्पररी प्राइस हाइक के दौरान उस हाइप एसेट क्लास को खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को अंततः नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्यादातर मामलों में वॉश ट्रेडिंग और अन्य मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स स्पेकुलेशन और एग्रेंडाइजिंग के आधार पर एसेट क्लास के मार्केट वैल्यू को हाइप करने का प्रयास करती है। इसके अलावा वॉश ट्रेडिंग आर्टिफिशियल मार्केट एक्टिविटी को प्रेरित करके और ऑर्गेनिक डेटा को एम्बेजल करके टेक्निक मार्केट एनालिस्ट को भी थ्रो ऑफ कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी में वॉश ट्रेडिंग लीगल है? जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है विद क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके तहत वॉश ट्रेडिंग इलीगल है और पकड़े जाने पर वॉश ट्रेडर्स के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। वही क्रिप्टो करेंसीज की नींव ही डिसेंट्रलाइजेशन पर टिकी हुई है। यही देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट इट। पिछले एक दशक में इमर्ज हुई इन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हर कोई कंट्री अपने हिसाब से धीरे धीरे रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ क्रिप्टो करेंसी डोमेन में वॉश ट्रेडिंग एक अनइथिकल, अनफेयर, मैनिपुलेटिव मार्केट टेक्निक है, बट अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन के अभाव के कारण ये टेक्निकली इलीगल नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो के बाद अगर हम नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज की बात करें तो ये सेक्टर वॉश ट्रेडिंग का हब बन गया है। मोस्टली एनएफटीज फाइन आर्ट्स का कैरियर होने के लिए फेमस है और आर्ट पर कोई लिमिट तो होती नहीं। कोई भी आर्ट पीस कितनी भी कीमत का बेचा या खरीदा जा सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर वॉश ट्रेडर्स एनएफटीज पर अपना निशाना साधे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो पंक 998 एनएफटी को 124,457.07 ETH यानी $532 मिलियन की प्राइस पर एलिजिडली बेची गई थी। आप सोचेंगे कि एक पिक्सेलेटेड डिजिटल पिक्चर के लिए कोई ओवर $500,000 कैसे स्पेंड कर सकता है? तो दोस्तों, हुआ यूं कि क्रिप्टो पंक 998 एनएफटी सेल के बाद सेलर ने $532 मिलियन वैल्यू के 124,457 ईथर बायर को वापस दे दिए। सो एनएफटी में बायर और सेलर की इसी सांठगांठ को ही तो वॉश ट्रेडिंग कहते हैं। चैनलिस्ट्स के डेटा के अनुसार 2021 और 2022 के बीच एनएफटी मार्केट एक्टिविटी $350 मिलियन से बढ़कर $40 बिलियन हो गई, जो इस सेक्टर में मार्केट को मैनिपुलेट करने वाली टेक्निक्स में डेंजरस इंक्रीज को इंडिकेट करती है। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एनएफटी में वॉश ट्रेडिंग कैसे होती है। कई एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी पहचान के बिना अपने वॉलेट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़कर ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक यूजर एक प्लेटफॉर्म पर कई वॉलेट बना और लिंक कर सकता है। इट मींस एक यूजर एनएफटी ट्रेड के दोनों साइड्स को कंट्रोल कर सकता है। एनएफटी को एक वॉलेट से बेचकर और दूसरे से खरीद सकता है।
जब ऐसे कई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि एसेट ज्यादा डिमांड में है। कुछ वॉच ट्रेडर्स तो अपने सेल्फ कंट्रोल वॉलेट्स के जरिए सैकड़ों ट्रांजैक्शंस करने की हद तक चले गए हैं। अब अगर लीगैलिटी की बात करें तो क्रिप्टो की तरह NFT भी इमर्जिंग एसेट क्लास है और NFT से जुड़ी वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस अभी तक लीगल इन्फोर्समेंट का विषय नहीं बना हुआ है। हालांकि यह बदल सकता है क्योंकि रेगुलेटर्स का ध्यान अब NFT सेक्टर पर फोकस हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में मौजूदा एंटी फ्रॉड अथॉरिटीज NFT मार्केटप्लेस की अनएथिकल वॉच ट्रेडिंग प्रैक्टिस को स्टॉक मार्केट की तरह इलीगल घोषित कर दे। जब तक रेगुलेटर्स क्रिप्टो और NFTs में वॉच ट्रेडिंग को इलीगल घोषित नहीं कर देते तब तक आपको और हमें वॉच ट्रेडर्स के जाल से बच कर रहना बेहद जरूरी है। किसी भी हाइप पर ब्लाइंडली बिलीव करके ट्रेड करने से पहले यह जरूर देखें कि कहीं बायर और सेलर की सांठगांठ तो नहीं। क्या इस पर्टिकुलर एसेट का राइज जेन्युइन है या इसे आर्टिफिशियली हाइप अप किया गया है। सो लेट्स होप फॉर अ बेटर टुमारो जहां क्रिप्टो और NFT स्पेस में वॉच ट्रेडिंग जैसी अनइथिकल और अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस बिल्कुल नाबूद हो जाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो की दुनिया में हो रहे सभी अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। Hello and welcome back to Crazy Coins with Kunal. Today's coin is OMI. This is like OMG and I call it the magic coin because as soon as I read this, I went, wow, whoa, holy moly, are you for real? Because this company is based out of Singapore and serves the NFT industry, also known as digital collectibles. Oh, with only 750 billion coins in circulation, Weave is their main utility where you can buy, sell and mint these collectibles, whereas they also have a secure storage wallet. The highlight is Mana, Gala, Solana, Bhai Kalana because this coin has gone up 15,000% in 2021, 9,000% in last 365 days and the real highlight is it has gone up 207,989% in the last 3 years. Yaar, is this even possible? What is 207,989%? Mazak hai? Nahi bhai, this is Crazy Coins. This company has partnerships with DC Comics, Marvel and Star Trek. So if you're a Batman, Superman, Spider-Man, oh, Captain America, Black Panther or Iron Man fan and you say, hey Jarvis, buy me my NFT. Jarvis is probably going to go and buy it on Weave. Now the real question is, OpenSea is another company that allows you to trade NFTs but it has no token or coin. It also charges heavy fees and has no partnerships with these brands. However, open to trade anything you have. Wakanda forever. So the real question is, OMI for the future or OpenSea will float across the oceans and only time will tell. Until then, stay tuned till we bring you more Crazy Coins with Kunal. In 2009, there was only one cryptocurrency, Bitcoin. And in 2010, world's first crypto exchange was launched. Life was so simple back then. Just one crypto coin and one crypto exchange. Fast forward to 2022. Today, there are almost 600 crypto exchanges and over 18,000 cryptocurrencies in the world. As you know, crypto trading is like surfing in a stormy sea. Any moment, you can get hit with a choppy wave of volatility or feel the aftermath of splash created by whales. As if this wasn't enough, you get stung by the jellyfish of TDS and your profit will be devoured by deadly sharks of 30% crypto tax. So yeah,
crypto traders' life has become a lot more complicated nowadays. There are over a dozen local crypto exchanges in India, and lots of international crypto exchanges are also expanding their reach in the country. So for a novice trader, selection of crypto exchange becomes a daunting task. To help you make the right choice, we have reviewed Indian crypto exchanges based on their trading volumes, transaction charges, security, ease of access, method of fund deposit, number of users, liquidity, number of cryptocurrencies traded, and availability of crypto-related products, among other things. But before going further, it is crucial to understand maker and taker fees. A maker is a party that creates liquidity on the exchange by selling cryptocurrency. The taker is the party that takes it off the liquidity by buying the cryptocurrencies. Both maker and taker pays a certain amount of fees for the transaction. However, makers generally pay less. The trading charges vary across exchanges, ranging from almost 0% to 0.25% in most of the exchanges. So without any delay, here's our guide to help you choose a suitable cryptocurrency exchange depending on your financial goals. Number 1, WazirX. First on the list is WazirX Crypto Exchange. Fees for maker-taker is 0.2%. Cryptocurrencies available are more than 450. Minimum investment required 100 rupees. WazirX is one of the fastest growing cryptocurrency exchanges of India with more than 60 lakh registered users. This platform has a user-friendly interface and is available across web, Android, iOS and Windows apps. WazirX charges 0.2% maker and taker fees. You can trade in over 450 cryptocurrencies on WazirX, and minimum investment required is just Rs 100. As you know, because of the shadow ban on cryptocurrency exchanges, the Indian payment body is not in mood to restore unified payments interface services for crypto companies. You can deposit funds via WazirX peer-to-peer trading, which is completely free. P2P helps the user to convert their fiat currency into crypto instantly. WazirX also has its own digital currency named WRX, which can be purchased by using INR and can be exchanged for other cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum or Dogecoin. As per the company, the exchange clocked a monthly volume of $10 billion. Fully loaded mobile app offering features such as detailed charts, live market status, quick buy-sell options. Now let's have a quick look at the pros and cons of WazirX. Number 2, CoinDCX. Second on the list is CoinDCX. Fees for both maker-taker is 0.2%. Cryptocurrencies available 340 plus. Minimum investment required 100 rupees. CoinDCX is regarded as one of the safest crypto trading platforms of India. The total number of registered users is more than 1.3 crore. This platform provides a wide range of crypto-related products and services such as margin trading, futures and lending options. CoinDCX charges 0.2% maker-taker fees, and you can trade in 340 plus cryptocurrencies on its Cosmic platform. CoinDCX mobile app is available both on Android and iOS. The user can make deposit via NEFT, RTGS and IMPS along with the P2P option. The minimum deposit is only 100 rupees. CoinDCX provides options for marginal and future trading along with instant buy and sell features. To ensure a high level of safety, 95% of funds on CoinDCX are stored in cold wallets. CoinDCX launched a unique feature to show the users about their profit and loss statements. Now let's summarize pros and cons of CoinDCX.
Number 3. CoinSwitch Kuber. The next crypto exchange on the list is CoinSwitch Kuber. Fees for both maker-taker is 0.1%. Cryptocurrencies available 80 plus. Minimum investment requirement 100 rupees. CoinSwitch Kuber is one of the most trusted crypto trading platforms. Launched in 2017, CoinSwitch Kuber has processed more than $5 billion in crypto transaction volumes. Backed by Sequoia Capital, its aim is to make crypto trading easier for common people. It is partnered with some of the leading crypto exchanges, making it one of the best crypto trading aggregators. CoinSwitch Kuber has more than 1.5 crore registered users. It only charges 0.1% maker-taker fees. The users can trade in more than 80 cryptocurrencies with as low as 100 rupees. This platform provides a variety of trading pairs such as INR to crypto exchange, crypto to crypto, and crypto to INR trading. It has also launched the Crypto Rupee Index, the benchmark index for measuring the performance of the Indian rupee-based crypto market. CoinSwitch Kuber supports INR as the fiat currency, and thus withdrawals and deposit are made in INR only. It accepts deposit payment methods such as NEFT, RTGS, IMPS, and P2P. Reliable and clean user interface which can be beneficial for beginners. Provides informative educational resources on blockchain and cryptocurrencies. The minimum investment required is just 100 rupees. Let's have a look at its pros and cons. Number 4. Unocoin. Fees for maker is nil and for taker is 0.3%. Cryptocurrencies available are more than 80. Minimum investment required is 1,000 rupees. Unocoin is the oldest crypto trading platform based in India. Launched way back in 2013, it has processed more than 11.7 million transactions. Since then, the users can trade in 80 different kinds of digital currencies on this platform. Unocoin launched the first of its kind systematic buying plans for Bitcoin and Ethereum for as little as 10 rupees. It charges a fees of 0.5% to buy or sell Bitcoin. Facilitates the lending feature related to over-the-counter trade that enables the trading in bulk. Crypto basket feature allows users to diversify their crypto portfolio based on market capitalization or volume. Unocoin enables users to purchase store coins in a varied selection of over 40 Unocoin wallets. The minimum deposit amount is 1,000 rupees, which can be deposited via IMPS, NEFT, and RTGS payment options. The total number of registered users is more than 20 lakh. Unocoin also enables users to recharge their mobile phones or DTH using Bitcoin. It offers gold member accounts where users can enjoy higher buying and selling limits along with lower transaction fees. Let's have a quick overview of its pros and cons. Number 5. BitBNS. Fees for both maker-taker is 0.25%. Cryptocurrencies available more than 390. Minimum investment required 100 rupees. BitBNS crypto exchange went live on December 14, 2017. With almost 400 cryptocurrencies listed, BitBNS enables its users to trade in the wide variety of cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin, and more. The total number of users registered with this platform is more than 40 lakh. BitBNS charges maker-taker fees of 0.25%. Furthermore, BitBNS delivers trading ease unmatched by any other cryptocurrency exchange thanks to its partnership with the major cryptocurrency exchange OKEX.
The user has the option to choose a standard e-wallet or order a BitBNS hardware wallet to store funds. Advanced and updated trading system for beginners and novice traders. Provides trading options like margin trading, which can be leveraged by experienced traders, and automated trading options. The exchange does not charge any deposit fee, but a withdrawal fees is applicable on all transactions. Facility of instant price alerts for orders like bracket orders, limit orders, and stop limit orders. Offers products such as SIP in Bitcoin, FIP, which is fixed deposit to boost returns on crypto investments, variety of referral programs such as crypto gift vouchers, Sprint vouchers, and other contests. Now let's have a look at the pros and cons of BitBNS crypto exchange. Apart from these 5 exchanges we have mentioned, there are other exchanges like ZepPay, BuyuCoin, Binance India, and others. It is impossible to review dozens of local and international crypto exchanges in one short video. But I am sure after seeing how we reviewed the 5 crypto exchanges, you got the gist of what to look for before choosing the crypto exchange best suited for your financial goals. Before concluding, let me make one thing very clear. This is just an educational video. We are not endorsing any crypto exchanges. Cryptocurrencies are highly volatile, and before investing into crypto markets, consult your financial advisor. This is Ruchi Sharma signing off. We will meet again. Till then, keep watching Crypto TV. Now, to end the session, let's have a look and run through some of the most notable milestones of the journey of cryptocurrencies and how they evolved over the years. In 2008, Satoshi Nakamoto, the mysterious designer of Bitcoin, published a white paper titled Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system based on the concept developed by Chinese author and computer engineer Wei Dai. In 1998, the paper outlined the fundamentals of blockchain and Bitcoin. In 2009, first Bitcoin transaction took place on the 12th of January when Nakamoto sent 10 Bitcoins to computer programmer Hal Finney. In 2010, Bitcoin is hacked for the first time on 15th of August, exposing vulnerabilities in the system. The same year, Bitcoin is attached to a monetary value for the first time when a user trades 10,000 coins for 2 pizzas. In 2011, rival cryptocurrencies Litecoin, Namecoin, and Swiftcoin emerge. In 2012, cryptocurrency exchange Coinbase launches services after being founded by former Airbnb engineer Brian Armstrong and former Goldman Sachs trader Fred Ehrsam. In 2013, various countries attempt to work out ways to deal with cryptocurrencies. Germany did not accept cryptos as official currency, but gave it a status of unit of account. Thailand banned Bitcoin, while China stopped financial institutions from using Bitcoins. Meanwhile, the first Bitcoin ATM was launched in Canada. In 2014, Japan-based cryptocurrency trading exchange Mt. Gox filed for bankruptcy. In the US, Microsoft permitted customers to buy games with digital currency. In 2015, Ethereum, the second largest currency by market capitalization,
in the crypto industry emerged. European Bitcoin exchange Bitstamp gets hacked but resumed trading a few days later. By the end of 2016, 900 Bitcoin ATMs emerge. Uber started accepting payments in Bitcoin in Argentina. Swiss National Railway also starts accepting the currency. Smart contracts, a collection of code and data stored on the Ethereum blockchain, was developed. In 2017, Japan legalized Bitcoin, while Norway's Skandiabanken integrated Bitcoin accounts and recognized Bitcoin as an investment asset. In 2018, European government worked on cryptocurrency regulation. In 2021, El Salvador became the first country to accept Bitcoin as legal tender alongside the US dollar. Well, that was all about cryptocurrencies in details. We from Crypto University are extremely excited to present to you this curriculum. For more, keep watching all our content. Thank you very much.